children and communities to participate in the decision-making processes and enhancing service delivery through better coordination between the Panchayats and service delivery unit of the government. We can use our technical expertise and field knowledge to facilitate and strengthen these potential conversions and knowledge partnerships between the academic institution and democratically elected panchayat for sustainable transformation of rural areas. A collaboration between higher education institutions under the Unnat Bharat Abhiyan, Panchayati Raj, and UNICEF, and other like-minded institutions can help create a multiplier effect through pooling of resources, knowledge, and expertise to amplify our efforts and bring about positive and sustainable changes in the lives of the rural community. The workshop of today is in many ways a humble beginning of a long-drawn journey in which I can assure you that UNICEF will be happy to support as we move forward together, step by step. I am thankful for the Indian Institute of Technology, Jodhpur, for hosting this workshop that brings together over 50 higher education institutions to reflect and identify pathways for synergized action. I look forward to hearing your thoughts and views on how we can move forward together. Thank you. Thank you, Dr. Isabelle, for telling us about the role of UNICEF in implementing the initiatives of Unnat Bharat Abhiyan. It is also a privilege for us to have with us today Shri Sunil Kumarji, IAS, Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Government of India. Mr. Sunil Kumar is a 1987 batch officer of IAS and belongs to Uttar Pradesh. I invite him to speak and address the gathering. यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, डायरेक्टर जोधपुर, IIT जोधपुर, मेरे सहयोगी अधिकारीगण, यूनिसेफ के राजस्थान के हेड, उन्नत भारत अभियान के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कुछ पंचायतें और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और प्रतिनिधिगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। ये जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है यह बहुत सामयिक है और कई मायनों में उन्नत भारत अभियान जब लॉन्च किया गया था, संभवतः आज से 5-6 साल पहले, तब से वी हैव टेकन सम टाइम टू find our feet and work out our strategy because it was something new. It wasn't something which we had been working on for the last 7 decades. लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम इसको एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं, जिसका संकेत आपके जो प्रोफेसर विवेक कुमार उन्होंने दिया कि अब हम इसको काफ़ी, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोग जब करते हैं, हम लोग तो प्रशासन में कई बार होता है कि सोचा और उसके बाद उसको करने निकल गए, उसका क्या होगा नहीं होगा वो बाद में सोचते हैं, लेकिन आप लोग जो एकेडमिक्स में हैं, यू हैव टू रियली थिंक इट थ्रू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके जो आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको करना है एंड वन कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि हम समय लें, लेकिन सोच समझकर, सोच विचार कर उन कार्यों को चुने, उन कार्य क्षेत्रों को चुने वेयर वी वुड लाइक टू मेक अ वेरी पॉजिटिव इंटरवेंशन। तो उस दृष्टिकोण से जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये बहुत ही सामयिक है। दूसरा, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यूनिसेफ राजस्थान
for taking this initiative. It's now almost 4 years since I am there in Ministry of Panchayati Raj, but this is the first instance where which has come to my knowledge. Maybe दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी मेरे पास जानकारी नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो मेरी जानकारी है दुनिया बस उतनी ही है, लेकिन मेरी जानकारी में ये पहला अवसर है जहाँ पर 45-50 इंस्टीट्यूशंस के लोग जुड़े हैं, मंत्रालय के लोग जुड़े हैं, यूनिसेफ के लोग जुड़े हैं, जो पंचायतें हैं उनके लोग भी जुड़े हैं, और मिलकर विचार हो रहा है कि हम इसको जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको हम आगे कैसे ले जाएं। और जैसा डायरेक्टर साहब ने अपने संबोधन में बताया कि अंत में हम आप सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, दैट इज टू मेक ह्यूमन लाइव्स better, make the environment, safeguard the environment, not at the cost of environment. अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तभी ये प्लैनेट रहेगी, तभी ये धरती रहेगी, तभी हम सारे लोग रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। तो उस दृष्टिकोण से चाहे हम टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, चाहे हम सोसाइटी के बारे में काम कर रहे हो, चाहे हम पॉलिटिक्स में काम कर रहे हो, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, एंड गोल सभी का वही होना चाहिए, हाउ टू मेक द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स बेटर। ईज ऑफ लिविंग इज वन फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ tenet to which government is committed, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हम सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि हमें लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा? तो सबसे पहले तो अगर आपको जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, जिस पर डायरेक्टर साहब ने बताया कि और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में कि हाउ वाटर इज सच अ मेजर इशू, और उस पर क्या काम किया जा रहा है, किस तरह की तकनीक विकसित की जा रही है। तो ये अगर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना हम सभी लोग का ध्येय है, चाहे हम अध्ययन कर रहे हों या अध्यापन कर रहे हों, तो फिर हमें अपने आसपास का जो समाज है वहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसके बारे में भी जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जब हम लोकल कम्युनिटी के साथ, और लोकल कम्युनिटी को हम लोगों की संवैधानिक व्यवस्था में आफ्टर 73rd अमेंडमेंट ग्राम पंचायत उसको रिप्रेजेंट करती है इन दी रूरल एरियाज, कि ग्राम पंचायत इज दी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड यूनिट विच रिप्रेजेंट्स दी लोकल कम्युनिटी। उसके अंदर हो सकता है 5 गांव हो, 10 गांव हो, कई मजरे हों, लेकिन वो सारे पंचायत के अधीन आते हैं। तो फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज एन यूनिट जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। एज दी UNICEF head of Rajasthan mentioned in her talk that there are several hurdles. उसमें हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनका शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनका एज प्रोफाइल, जेंडर प्रोफाइल, all of that comes into play when their effectiveness as an elected representative is to be measured. और उस दिशा में हम लोग किस प्रकार का रोल अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपके 45-50 इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें IIT जोधपुर इज द प्रीमियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन विच इज गाइडिंग इट। लेकिन कई आप में ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जहाँ पे ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई हो रही, ठीक है, जो जहाँ पर आप प्योर आर्ट, साइंस, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। तो जो चीज़ IIT जोधपुर कर रहा है
वो चीज आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू पिक अप कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, और उसके साथ हम गांव में जाकर के पंचायतों के साथ हम कैसे इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आईआईटी जोधपुर डेवलप कर रहा है, उसके डिसेमिनेशन में सभी लोगों का रोल है। उसको हम केवल ये नहीं कह सकते हैं ये केवल इंजीनियर जो जाएंगे वही इसे समझाएंगे। उसमें एज अ प्रशासनिक अधिकारी, एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, हम सभी लोग का रोल है कि हम उसमें भी अपना योगदान दें। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम वहाँ पर किस तरह की चीज़ों में पॉजिटिवली इंटरवीन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक कैसे आयोजित होती है, क्या हम उसका अध्ययन करके उसमें हम लोगों के साथ विचार विमर्श करके उनको कुछ गाइड कर सकते हैं कि अगर 100-200 लोग मिल करके एक जगह पर बातचीत कर रहे हैं, एक जगह पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो हाउ दैट मीटिंग कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव, more organized, in a more systematic manner, that also calls for some doing. हम उसे केवल पंचायत सेक्रेटरी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हम वहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं? यहाँ पर यूनिसेफ के माध्यम से बाल सभा का आयोजन किया जाता है कि जहाँ जो बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो अपनी बैठकें आयोजित करके अपने डिमांड्स को किस प्रकार वो पंचायत के सामने प्रोजेक्ट करें, इसमें क्या हम उनको गाइडेंस कर सकते हैं? अगर हमारे बीटेक के या ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे लोग बहुत ही अच्छी तरह से उन बच्चों का नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित हो सकता है, इसमें दे कैन गाइड देम, दे कैन मेंटोर देम। तो ये भी एक विषय हो सकता है कि साहब बाल सभा का आयोजन कैसे हो रहा है, महिला सभा का आयोजन कैसे हो रहा है, जो वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनी हुई हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। इन सारे चीज़ों में जो इंस्टीट्यूशन है और जिस पंचायत को उन्होंने सेलेक्ट किया है, दे कैन ऑल वर्क टुगेदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक परिवेश और सरोकार को हम लोग हमेशा ध्यान में रखें। दूसरा है कि हम उस मेंटालिटी से चले जाएं, तो त्याग दें कि आई एम द सॉल्यूशन गिवर, कि आपकी सारी समस्याओं का हम समाधान देने यहाँ पर आए, क्योंकि वो फिर उतना ही पैट्रनेज वाला जो होता है कि आई एम सुपीरियर आप इंफीरियर, दैट माइंडसेट हैज़ टू गो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, और जहाँ जहाँ पर लोगों ने बहुत ही इंटेंसली इंटरैक्ट किया, they felt, they came back with the feeling that they have learnt more from the local community, from the panchayats, from their interaction with the villagers, than what they could have ever learnt in a classroom. और वो सारी जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं वो उनके साथ जीवन भर रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा। अब यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर से डायरेक्टर साहब भी हैं, आप लोगों ने भी, आईआईटी खड़गपुर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ रूट एंड कनेक्शन विद द लोकल कम्युनिटी। और वो बच्चों को जब वहाँ पर एज स्टूडेंट्स हमारा एक्सपोजर होता है, तो समवेयर इट रिमेन्स एट द बैक ऑफ वंस माइंड कि इफ आई एम डूइंग दिस, हाउ इज इट दैट इट कैन बी ऑफ हेल्प टू द लोकल कम्युनिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम हमेशा ध्यान में रखें। समय सीमित होता है, ऐसा अगर हम कहें कि नहीं आप सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपना क्लासेस छोड़ दीजिए और केवल वहीं पर आप बैठे रहिए, तो इट्स नॉट योर कोर जॉब एंड इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। तो सीमित समय में अपने स्ट्रेंथ्स को हम लोकल कम्युनिटी के नीड्स के साथ कैसे सिंथेसाइज करके आगे बढ़ने की हम रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और उस पर कैसे काम करें। और यहाँ पर मेरा ये मानना है कि ये लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो एसडीजीज में जो 17 गोल हैं, जिस पर
केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम सारे देश जो हैं हु आर कमिटेड टू अटेनमेंट ऑफ दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके पहले आपका 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। अब ये 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रीच करने का टारगेट रखा गया। और इसमें भी जो लेटेस्ट आपकी रिपोर्ट्स हैं उसमें है कि कई सारे कंट्रीज में there are large slippages for variety of reasons, and even COVID has set us back by a significant period. कि 2030 तक अगर इन्हें अचीव करना है तो that will call for a massive ये जो किसी भी सरकार या सरकारी विभागों के बूते के बाहर की चीज। लेकिन अगर इसमें सभी लोग जुट जाते हैं, अगर इसे लोकल कम्युनिटी स्वीकार कर लेती है, अंगीकार कर लेती है, तो देन इट इज पॉसिबल कि अगर 100% नहीं तो हम 75%, 80%, 90% तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम केवल सरकार और सरकारी विभागों के भरोसे बैठे रहेंगे तो हो सकता है हम 40%, 50% तक भी नहीं पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है और इसीलिए गवर्नमेंट हर एक स्तर से इस चीज पर जोर दे रही है कि इट हैज टू बी अ होल ऑफ सोसाइटी एंड होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। और ये उन्नत भारत अभियान भी उसी का एक पार्ट है। तो जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो रिपोर्ट बनी है, क्योंकि 9 थीम्स को जब हमने इसे बांटा, ये 17 ये को, वो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए नहीं बांटा। नहीं तो नीति आयोग तो 17 थीम्स पर अपनी रिपोर्ट देश का प्रकाशित कर ही रहा। हमने उसे इसलिए बांटा कि पंचायतों के, गांव के एक निवासी के रूप में क्या हम उस संकल्प से स्वयं को जोड़ सकते हैं? क्या ये बात उनकी समझ में आ सकती है? केवल अगर हम कहें कि क्लीन एनर्जी इज द रिक्वायरमेंट, दे मे और मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस। लेकिन अगर हम कहते हैं कि क्या आपकी पंचायत स्वच्छ और हरित पंचायत होती है, कि क्लीन एंड ग्रीन पंचायत बनाना चाहेंगे, और उसे अगर हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें आप सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी कैसे आप ये करते हैं, जिसमें ना केवल एनर्जी के सोर्स को ग्रीन एनर्जी की ओर आप जाते हैं, फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम करते हैं, पराली जलाने से लेकर सारी चीज़ों को आप कमी लाते हैं, बल्कि आप आसपास के पर्यावरण में भी कैसे सुधार करते हैं, तो संभवतः वो उसे बेहतर ढंग से समझेंगे। और उसके साथ अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं तो ज़्यादा प्रभावी तरीके से वो इंटरवीन कर सकेंगे। इसी तरह स्वस्थ पंचायत, जब हम स्वस्थ पंचायत की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हेल्थ को इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से देखा, पेशेंट और डॉक्टर, कि आपको अगर बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको दवा देगा, आप ठीक हो जाएंगे। We have not looked at it from the community aspect. और बहुत सारी चीज़ें जो है 80-90% जो हमारी गांव में बीमारियां होती हैं वो साफ पानी, हाइजीन और इनकी आपके जो वेक्टर बोर्न डिजीजेस, इन सारे की वजह से होती है। और इसमें कम्युनिटी एक्शन से इफेक्टिव इंटरवेंशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहे वो भारत सरकार के द्वारा बना है, जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बनाई है एक्सेप्ट करके, उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है, मेरी सबसे पहले आप लोगों से ये अपेक्षा होगी कि उसे अच्छी तरह से आपके फैकल्टी, आपके बच्चे, everyone who is going out, he reads it. It will give him a better understanding. चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट हो, if he reads that, he'll get a good understanding. और इसी तरह जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, जो पंचायत विकास सूचकांक हम लोगों ने इन्हीं 9 LSDGs पर अलग अलग इंडिकेटर्स को लेकर के विकसित की है, वो हम भारत सरकार के लेवल पर, हमारे लिए इट इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज कि वी रैंक कि दिस पंचायत
in this district is number 1 in the country, or this is number 2,58,000 in the country. It doesn't make, मतलब I can say at best 2 लाइन का शीर्षक छपेगा अगले दिन कि साहब इसको सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित किया गया, लेकिन उसके बाद इट हैज नो मीनिंग। लेकिन जो पंचायत है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए इट कैरीज लॉट ऑफ मीनिंग। तो हम जो डेवलपमेंट इंडेक्स बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? क्या भारत सरकार के लिए वो जरूरी है? क्या राज्य सरकार के लिए जरूरी है? हो सकता है हमें एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में उससे एक इंडिकेशन मिलेगा कि वेयर वी आर मूविंग, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वो उस पंचायत के निवासियों के लिए, पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए है कि उन्हें पता चलेगा कि किस क्षेत्र में वो कितना पिछड़े हुए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या करने की जरूरत है जिससे वो अपनी स्थिति को सुधार सकें। ये चीज अगर हम उनको अच्छी तरह से समझा सकेंगे, और जब हम जाते हैं, जब हम क्षेत्र में या गांव, जिस पंचायत में हम जा रहे हैं, उस पंचायत के पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की भी जानकारी जो पोर्टल पर रहेगी, उपलब्ध होगी, उसको भी अगर स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं सारा ये, तो यू विल फाइंड कि योर क्वालिटी ऑफ इंटरैक्शन with the panchayat, your understanding will improve greatly. It will aid. I'm not saying कि it is the end all and be all of all knowledge, क्योंकि personal interaction, लोगों के साथ समय बिताने पर, लोगों के साथ बातचीत करने का उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। But at the same time when you are going, तो you are mentally prepared कि हम वहाँ क्या जा सकते हैं, क्या चीज़ हमें देखना चाहिए। You are not floundering in the dark. और तब जो आपका समय है, सीमित समय है, उसको आप फोकस तरीके से मोर इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है, मेरी समझ, जितनी समझ है, कि इसमें अगर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर आगे आए और आपको जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों का अगर सहयोग मिलता, और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनिसेफ, जैसे यूनिसेफ राजस्थान ने इसमें इनिशिएटिव लेकर के इसे स्पॉन्सर किया। दे वर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू दिस, बट दे फेल्ट कि देयर वाज सम वैल्यू व्हिच वुड कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन इन दीज विलेजेस। तो इस तरह उन्होंने इस पूरे ये को उन्नत भारत अभियान और लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सारे चीज़ों को हम लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लाएं। और शुरू में ही जो बताया गया था कि इसमें जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई एनजीओ है, वो अगर वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसके साथ भी अगर हम इंस्टीट्यूशन के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी अपने कार्य को अलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने लोग इससे जुड़ेंगे उतना हम सभी लोगों का गोल जो है वो आसान होगा। और जिस दिन हमें पंचायत के लोगों का, पंचायत के प्रतिनिधियों का, उनका सहयोग मिलने लगेगा, उन्हें हम में विश्वास हो जाएगा, जो होता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए, उनमें वो विश्वास जागृत होना चाहिए कि हमारे गांव में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस संस्थान के इस व्यक्ति को हम फोन कर सकते हैं, हम रिंग कर सकते हैं, और वो यथासंभव हमें कोई मार्ग सुझाएगा, या तो वो खुद सॉल्यूशन बताएगा या वो हमें गाइड करेगा कि कहाँ से हमें किस प्रकार सहयोग और मिल सकता है। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वो जिस दिन ये 2 वे प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि वो लोग खुद बोलें कि साहब इस संडे को आप अपनी टीम को भेजें, हम लोग सभी लोग तैयार रहेंगे। They should begin to call the students, the faculty of those institutions to their panchayats. उस दिन सही मायने में कहा जाएगा कि yes, this 2-way process has started. तो मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा कि first of all, I would like to compliment the
IIT Jodhpur and his entire team and the entire Unnat Bharat team for organizing this, taking the initiative and organizing this conference. I would like to place on record my deep appreciation for not only UNICEF Rajasthan, but UNICEF India team too, who have been most forthcoming in supporting Ministry of Panchayati Raj in taking this initiative, both relating to localization of sustainable development goals and Panchayat Development Index forward. जो पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, 3 ग्राम पंचायत के लोग, शायद वो आज या कल अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और जैसा शुरू में ही बताया गया था, जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब है वो सबको उनको बाय नेम जान रहे थे और उनका नाम ले रहे थे। तो वहाँ पर एक जो काम हुआ है कि वहाँ पर इस तरह का संबंध स्थापित हो गया है कि इनके कहने पर आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे और आपके कहने पर ये भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी एनकरेजिंग साइन। तो ये चीज़ सभी जगह पर विकसित हो और सभी 45-50 इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं जो आज यहाँ जुड़े हैं या वेबिनार के माध्यम से, वेबकास्ट के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। ये आसान काम नहीं है, ये आसान एरिया नहीं है और हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये कोई इवेंट मैनेजमेंट है कि आप गए वहाँ पर, आपने फ़ोटो खिंचाया कचरा उठाते हुए, झाड़ू लगाते हुए और वो आपकी एनुअल रिपोर्ट में छप गया एंड इट मेक्स फॉर गुड कवरेज कि मैंने जो है वहाँ पर लोकल कम्युनिटी के साथ कर लिया। इट कॉल्स फॉर मोर सीरियस इंगेजमेंट, सिटिंग डाउन एंड स्पेंडिंग टाइम। तो इट शुड नॉट बी अ टच एंड वैनिश टाइप ऑफ ये, ठीक है। यहाँ पर 1990s में वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में T&V कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें था कि जो कृषि के ट्रेंड ग्रेजुएट्स हैं दे विल गो एंड डू द एक्सटेंशन वर्क। उसमें बिल्डिंग बन गई, जीप खरीदा गया, अधिकारी के पद क्रिएट हो गए और जब वो स्कीम खत्म हुई तो एवरीथिंग स्टॉप्ड। तो लोग कहते थे कि ये टच एंड वैनिश स्कीम हो गया। तो उन्नत भारत अभियान का वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप 2 पंचायत कर सकते हैं, 2 ही को लें, 1 कर सकते हैं, 1 ही को लें। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे दूरस्थ पंचायत को लेना। जो आपकी क्षमता के अधीन है, जहाँ पर आप आसानी से अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ कर सकते हैं, टेक इट अप। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा समय देना होगा, वहाँ पर आप लोगों को उन लोगों के साथ बैठ करके सोचना होगा, समझना होगा, उनकी बातों को समझना होगा। और इसी में जो एग्जाम्पल आपने दिया था ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाला, ऑल दैट बिकम्स वेरी रियल। जब आप एक बार उनके साथ बैठ करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको उसी समस्या को एक दूसरे नज़रिए से देखने का भी आपको वो समझ विकसित होगी। एंड इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, चाहे हम कोई भी काम करें, कि we are able to look at issues from different points of view, and then you find कि the solutions will also, which will suggest themselves, will be different. तो हमें उस चीज़ को भी देखना, नहीं तो बाकी theoretically प्रोफेसर साहब बता रहे थे, डायरेक्टर साहब, कि everything is there, but you have to see कि what is sustainable, what is acceptable to the community, what is desirable here. और उसके प्रॉस एंड कॉन्स को जब आप वे कर रहे हैं तब आप ये कर रहे हैं। तो प्रॉस एंड कॉन्स को भी वे करने में हम किसके नज़रिए से देख रहे हैं, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। आई एम वेरी श्योर दैट विल हैव वेरी फ्रूटफुल डिस्कशंस ओवर द नेक्स्ट 1.5 days। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी विकास आनंद जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताएंगे, that is also something which is a very important initiative, और वो कई मायने में हो सकता है पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव हो, क्योंकि वो एक सिस्टमिक गैप को एड्रेस कर रहा है।
आज की तारीख में पंचायत के स्तर पर किसी भी विभाग के पास कहीं पर भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। डेटा हमारा जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर अगर हम पहुंचते भी हैं तो इट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद और उसकी भी क्वालिटी जो है वहां जाते जाते ये हो जाती। तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इज वन जहां पर एज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस लॉट ऑफ रिसर्च इज पॉसिबल, लॉट ऑफ एनालिसिस इज पॉसिबल। और वो जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे तो कई सारी चीजें उससे आप देख पाएंगे जो एज अ ब्यूरोक्रेट आई विल नॉट बी एबल टू सी। और वो जो आपकी उससे विकसित होगी वो अगर आप लोकल कम्युनिटी पंचायत के साथ शेयर करते हैं तो दे में से कि साहब ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि हमें ये भी करना है, चाहे ये हमारी ये स्थिति है या हम इस तरीके से इस समस्या का हल खुद ढूंढ सकते हैं। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस दोनों चीजों पर LSDGs और PDI पर जितने आप सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आपकी फैकल्टी, आपके स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्षमता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। यू आर बेस्ट प्लेस्ड टू लुक एट इट वेरी क्रिटिकली एंड देन कम आउट विथ सजेशंस। और ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कोई ब्रह्मा का दिया हुआ इंडेक्स नहीं है कि उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। उसमें जहां पर आप लोगों के सुझाव आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जो आवश्यकता होगी, आपके माध्यम से जो चीजें आती हैं कि साहब इसमें ये चीज को ऐड कर लिया जाए या ये चीज को आप मैंडेटरी की जगह ऑप्शनल बना लें, तो आई कैन अश्योर यू कि दैट विल बी डन। क्योंकि इसका एंड यूजर पंचायत होना है, इसका एंड यूजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट होना है, ना कि भारत सरकार। तो मुझे विश्वास है कि ये कार्यशाला अत्यंत उपयोगी होगा एंड ऑल ऑफ अस वुड गो बैक विथ न्यू फाउंड एंथुजियाज्म। और आने वाले समय में विल हैव मच मोर टू शो across the country, not only in this part but across the country, and the level of participation will be more extensive. और UGC वगैरह ने जो अभी क्रेडिट्स वगैरह का what one read in the newspapers कि जो गाइडलाइंस उन्होंने अभी कुछ निर्देश दिए हैं, जारी किए हैं, उसमें आई थिंक इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। तो इसको आगे बढ़ाना है, मिलजुल के कार्य करना है। आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। मैं भूल गया था, एक पंचायत यहाँ पर हमारे सरपंच जी बैठे हुए हैं, बीरबल जी। इनफैक्ट इनकी पंचायत के साथ में हम लोगों ने IIT जोधपुर ने अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर सर 4 साल तक लगातार काम किया। स्टूडेंट और फैकल्टी कम्युनिटी ने, मेरे ख्याल से इनके किसी भी घर पे कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ चाय नहीं पियो या खाना नहीं खाया हो। एंड आप जो बोल रहे थे, मेरे ख्याल से वो हम लोगों ने सीखा कि विलेज से हम लोगों को सीखने को जितना मिला वो शायद डे 1 पे हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। तो थैंक यू सर। श्री सुनील कुमार जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने शब्दों से हम सभी को कृतार्थ किया। निस्संदेह हम उनकी बातों से सहमत हैं। आज इस समारोह में अनेकों शैक्षिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन से व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविदी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी के योगदान से ही उन्नत भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। With that, I express deep gratitude to all our speakers, and we would like to will like to present a token of appreciation to all of them. For that, I invite our director, Professor Santanu Chaudhury, to first felicitate Professor Vivek Kumar, coordinator of Unnat Bharat Abhiyan.
I request our director to felicitate Ms. Isabelle from UNICEF Rajasthan. Shri Abhishek Surana ji, CEO Zila Parishad Jodhpur. Shri Harji Lal Atal ji, IAS, Officer on Special Duty and District Collector Jodhpur Gramin. Shri Vikas Anand ji, IAS, Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Rajasthan, Government of India. And Shri Sunil Kumar ji, IAS, Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Government of India. Thank you, sir. And I thank all the audience. With this, we are ending our inaugural session. We'll get back for the technical session number 1 after 15 minutes. You're all invited for tea. Thank you. जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऊपर आ जाएं, एक बार फोटोग्राफ सब लोगों के साथ में ले लें। हाँ, मीनू जी प्लीज। प्रोफेसर प्रसन्नजीत आ जाए। प्रोफेसर चंद्रमौली गौरव जी प्लीज। चला किया था कब का चल रहा है? इसको कनेक्ट करना है। की आईडी चाहिए। विवेक तुम्हारे पास है ना? विवेक का है? विवेक की आईडी है ना?
Good afternoon and warm welcome to the technical session of this afternoon. And I'm Kirti Sankla, Assistant Professor at Center for Emerging Technologies for Sustainable Development at IIT Jodhpur. So it's an honor to be a part of this workshop and introducing our distinguished speaker, Mr. Shri Vikas Anand ji. Mr. Vikas Anand is 2002 batch IAS officer from Andaman and Nicobar cadre. He holds graduation in engineering from Jamia Millia Islamia University, followed by MTech from IIT Delhi and PG in Public Administration from Harvard University. He undertook various initiatives in different government departments when he was serving as district magistrate, as well as secretary, director, and commissioner in different departments, which includes health, land, revenue, infrastructure, industries, urban local bodies, revenue, power, home affairs, disaster management, and public works department. Since 2023, Mr. Anand is on central deputation and currently holds the position of Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Panchayati Raj. In this session, Mr. Anand will be sharing his perspectives on creating a robust data ecosystem for improved decision-making and monitoring at Panchayati level. Let's warmly welcome Mr. Anand as he shares his insights today. Thank you, sir. Thank you. I am very grateful to IIT Jodhpur, especially Dr. Vivek Vijay and Sir Shafakat from UNICEF for inviting me to this workshop. And I joined in February. Until last month, even I was not aware about Unnat Bharat Abhiyan. So we received a study from Ernakulam, from St. Teresa College. And then I came to know about the involvement of Panchayati Raj in Unnat Bharat Abhiyan. And it was the Secretary Panchayati Raj, Mr. Sunil Kumar, who initiated me, like many other things, into UBA. And then how we can partner with the Ministry of Education, with the UBA, and how all the officers, all the ERs, elected representatives, elected members, the Panchayat functionaries, they can be involved with the educational institutions, higher education institutions, which are there everywhere. And yesterday, he was very modest, Dr. Vivek Vijay, that he learned from me, but in fact, I learned from them what they have been doing and how the work they have done and how it can be scaled up. How we can bring in more and more institutions and into panchayats, and also bring those institutions which are more near the countryside, where we have students from the panchayats area where they are serving. Not only from IIT Jodhpur, not only from AIMS, not only from NLU, but from the colleges which are there across the towns, in the countryside, in the border areas, so that they are lot of them, they are coming from those areas and they are better connected also. We also discussed how there are 100 colleges in the Western Rajasthan sector, which the IIT Jodhpur is coordinating. And if we can connect, there will be 10 to 12 students in every college who will be willing to work under this project, under the Unnat Bharat Abhiyan. If we can connect them, we can map the colleges with the panchayats. We will find volunteers who can help the panchayats in preparation of planning the plans, the panchayat development plans, how to localize the SDGs, and how they can adopt various technologies, or if they are already into technologies, how they can improve them. Also, there is a not only gap in the planning process, but also services. In one of the districts in the UTs, Silvassa, it is Dadra Nagar Haveli, medical college students have been mapped with the panchayats. So wherever there is not only during routine, they are visiting there on regular basis and for screening,
they are taking help from the local sub centers, health and wellness centers, and screening the people. And apart from that, if there is any emergency, they are coordinating between the medical college, the hospital, and the villages, the panchayats. So similar pattern we can scale up. Lot of things I have also discussed with Abhishek, who is sitting here. He has done work in the Panchayat Development Index in one of the blocks where he was serving near Jaipur. And I was very happy to find Dr. Vivek also. And we have stayed in the same hostel in IIT Delhi. And now I will not leave him. So whatever you have promised to the secretary, we will make all out efforts to reach out to you and to the Ministry of Education, so that the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan and the Unnat Bharat Abhiyan, they are they are integrated and for beneficial outcomes for the panchayats, for the people. So there are 33 slides, but they are mostly for the benefit of people who will be seeing them, and I will not be very elaborate. And there are two parts. One is the LSDGs, which sir has already informed about, and the way he has already discussed the localized SDGs, there cannot be a better way. And second part will be the okay. So this is the general statistics. How many panchayats are there? And we have more than 2.5 lakh panchayats across the country. I will use this. So there are more than 2.5 lakh panchayats across the countries, and there are block panchayats, nearly 7,000 block panchayats, then district panchayats. So it's a huge network which is yet to be explored for doing a lot of developmental work. And already we have a dedicated force of 32 lakh elected members, and also same number, almost same number or more than that of the officials at the panchayat level. Then the sustainable development goals, as we are signatory to the SDG Agenda 2030, so it will be impossible to achieve those SDGs without getting the panchayats involved. अगर हम पंचायत को अपना पार्टनर नहीं बना के काम करेंगे, it will not be possible. And the SDG India Index is being prepared by Niti Aayog, and it is ranking the states as per their performance in achievement of the SDGs. So I will not go through them. And the only thing is that the ministries which are mapped to the concerned SDGs. So almost all the developmental ministries are there, and they are coordinating the activities for the achievement of goals. And though Panchayati Raj Ministry is not directly involved in any of these goals, but it is indirectly involved with all the goals. And the Panchayati Raj departments at the state level, they have and they will be already doing the work for achievement of the SDGs. And the panchayat leaders, जो भी पंचायत के हमारे सरपंच हैं, प्रमुख हैं, मुखिया, जिस भी नाम से जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व, उनके लीडरशिप के बगैर ये कतई भी संभव नहीं है कि वो हमारे जो सतत विकास के लक्ष्य हैं वो हम उनको प्राप्त कर पाएं. तो इसमें जैसे सर ने भी बताया था कि अगर हम उसको रिलेट करना होगा कि लोग क्लीन एनर्जी का उन्होंने एग्जांपल दिया था, ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है कि women empowerment is such a it has a huge scope, but it is also an ambiguous term. So जो हमारे LSDGs which are there, they have defined how the women empowerment is possible and what will be the measure of the women empowerment. किन आधार पर हम ये मानेंगे कि वहाँ पर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ उन पंचायत में. तो इन 17 गोल्स को 9 थीम्स में मैप किया गया, और 9 थीम्स में जो पंचायत और जो हमारे लोकल लेवल पे जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको उसमें उन्हीं इंडिकेटर्स को हम लोगों ने इसमें रखा है.
और ये जितने भी इसमें LSDGs हैं, ये लोगों के पार्टिसिपेशन से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, जैसे डॉक्टर विवेक ने बोला कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो पीपल पार्टिसिपेशन इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ द UBA। और इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स, देन द स्टेट गवर्नमेंट्स, UTs, NGOs, INGOs, UNICEF is there, other UN agencies are there, and also the UBA उन्नत भारत अभियान से हम लोग, एक हमारा कंसेप्ट है बीकन पंचायत, पंचायत लर्निंग सेंटर्स, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको भी हम लोग लिंक कर सकते हैं। ये हमारी 9 थीम है जो ये प्रेजेंटेशन में रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विवेक से भी कि वो सब में सर्कुलेट कर दें। सो दीज आर द 9 थीम्स। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दे ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दीज 9 थीम्स, बट अंडर उन्नत भारत अभियान इवन ऑल दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिनके लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इसको देखेंगे और कैसे हमने इसको अलग अलग थीम में किया है। तो वुमेन फ्रेंडली विलेज, like what Miss Isabelle was talking about. So 9th theme is the women friendly village, how we can empower the women, and there are indicators for that. There are 51 indicators to check, to quantify and measure how much progress has been made in women empowerment. So these are the mapping which has been done. Every theme has been mapped with the SDGs, 17 SDGs. Out of those, how many are with the localized SDGs? And the nodal ministry which will be looking after these goals. So like in the VPRP, Village Poverty Reduction Plan, which is integrated with the Gram Panchayat Development Plan, the Ministry of Rural Development is looking after. Same with healthy village, child-friendly village, so water sufficient village, clean and green village, and village with sufficient infrastructure. Then the socially just and socially secured villages, and villages with good governance, and women-friendly villages. Then these are the major goals under the localized SDGs. So as the name suggests, poverty-free village is to alleviate the poverty, healthy villages for the healthy people in the village, and especially the children and the women. So all the cases of anemia, the objective is to reduce through the community intervention, through the panchayats, their active involvement in the health process, to reduce the diseases at the local level, and also having a healthy population. Similarly, in the child-friendly village, more focus is on the health of the child as well as their education. One of this is the trafficking case. Some of the states, they have also the issues of trafficking, especially girl child trafficking. So we in the Panchayat Development Index, which will be the second part, there we have taken 19 indicators pertaining to the women and the children safety, and those all are crime related data which will be collected at the Gram Panchayat level from the police stations. Then similarly, water sufficient village, and most of the villages, they are working on water sufficient village also because the 60% grant is tied under the 15 Finance Commission, and lot of progress has been made in the water sector, also through the JJM and the 15 Finance Commission grant. Then clean and green villages, the ODF, open defecation free villages, solid liquid waste management. Similarly, in the self-sufficient infrastructure, the schools, Anganwadis, public health, the primary health centers, CSCs, and separate toilets, all these things have been covered. So in under theme 7, it is for the economic empowerment of the people who are below the poverty line, and also taking care of the elderly, the destitutes, the widows, for everyone. There are a number of indicators in that also. And in the village with good governance, focus is on better service delivery, having service level benchmarks. In fact, we have already coordinated with the states, and we are promoting, and states are also doing a lot of work in the certification of their quality standards, the ISO certification. So every state is now, they are trying for including more and more panchayats which into the certification system in the ISO 9001 2015. So
Then women-friendly village main focus is on health and also preventing and checking crime against women. And in the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, which was revamped in 2022, the major focus is on now localized sustainable development goals in the 9 themes and joint advisories, which have been signed by 26 ministries and departments of Government of India, were also issued, and a lot of workshops were held with the state governments. And also in all 9 themes, we have conducted workshops except Healthy Village, which is yet to be held, and in different states, and which were attended by a large number of elected members, UN agencies, all the state Panchayati Raj and Rural Development departments, the concerned departments to which the theme pertains, and other stakeholders who were working in those fields. And every panchayat has to take one of the sankalps, so that every year they do some concentrated focus work on one of the themes, so that that theme is saturated. All the goals which are there, all the indicators which are there in that theme, they're able to complete. And next year they can take another theme, and the year after that the another theme. So objective is that starting from 2022, within 9 years, all the 9 themes will be saturated and achievement of SDGs will be there. Also, this based on the theme, the Panchayat development plans are being prepared at the Gram Panchayat level, and they have to dedicate more resources for the Sankalp, the theme, the resolution for which they have opted. And till now in the GPDP, we were using the Mission Antyodaya survey data. Now from this year onwards, the panchayats can use the data which will be coming from Panchayat Development Index. There, it is a very rich and huge data which can be used by, as Secretary already discussed, by the educational institutions, but more importantly by the panchayats. Then how we can leverage the Unnat Bharat Abhiyan network in LSDGs. So as of yesterday, there 3,500 participating institutions are there in UBA, and it has a potential to reach maybe 10 times more than this. And there are 45 regional coordinating institutes and the 14 subject expert groups. And there are large number of innovative young minds at the premier institutions and also in the institutions which are there in the small towns. So they can coordinate with PRIs under the guidance of their teachers, their professors, and they can work with the panchayats for attainment of the localized SDGs. And the survey which has been done by the students in around 17,000 villages, that can also be used. And more than that, the data which will be coming from the PDI will be very helpful in assisting the panchayats in better quality of their plans. And initially, these villages which have already been adopted by the participating institutions, they can be saturated and a benchmark can be created. In fact, like in 100 colleges which we take, जो हमारे 100 colleges होंगे, उसमें अगर हम एक competition भी करा सकते हैं at the district level कि किसने अच्छा GPDP बनाया, एंड वो GPDP जिसने अच्छा बनाया उस ग्राम पंचायत को अवार्ड किया जा सकता है, और उसमें जो इंस्टीट्यूशंस है उनको अवार्ड किया जा सकता है, जो जिन स्टूडेंट्स ने काम किया उनको अवार्ड किया जा सकता है. दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली जस्ट बाय एजेंसीज लाइक यूनिसेफ और डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज एंड द कंसर्न कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट. And also there are large number of panchayats which are in peri-urban areas which have huge potential for revenue, but which is not explored, which is not being utilized. So the UBA can help, the students can help in exploring those areas and having their, they can use their own research also from the colleges, that how and what more sources of revenue can be there for panchayats. And the situation analysis, how the panchayats are doing as per the PDI data, and then the intervention. So again,
The UBA network can also help in capacity building and training of the Panchayati Raj institutions in the areas of LSDGs, Panchayat Development Plan, Panchayat Development Index, and also initiatives like making carbon neutral villages, spatial planning, which is a new subject which we are working with. Around 35 panchayats are there in different states. And how to integrate, we have funds under RGSA for training and capacity building that can be used also for the UBA in coordination with the Panchayati Raj department. And the colleges and the students, they can provide handholding supports to PRIs. We have already issued an advisory and SOP for handholding support by the academic institutions. Then there can be student interns from the colleges at the district panchayat level. They can be paid some honorarium, and at the block panchayat level. Engineering colleges, medical colleges, the law colleges, they can help in through technical interventions. हमारा एक मीडिएशन का भी नया मॉड्यूल अभी आने वाला है, जहाँ पे छोटे जो पैटी लड़ाइयाँ हैं पंचायत लेवल पे, उसको वहीं पे रिजॉल्व करने के लिए, तो उसमें लॉ इंस्टीट्यूट से भी कोऑर्डिनेट करके उनका कैपेसिटी बिल्डिंग में उनकी मदद मिलेगी. एंड जो एर्नाकुलम वाली स्टडी है उसका भी कंसेप्ट नोट हम लोगों ने सर्कुलेट किया है इन लास्ट मंथ ओनली. सो उसको भी अगर पंचायती राज डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों को हमने सर्कुलेट किया है कि उस पर आगे उसको बढ़ाया जाए. तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये जो हमारे 9 थीम्स अभी डिस्कशन हुआ, उस पर कैसे पंचायत परफॉर्म कर रही हैं एंड कंपेरेटिव स्कोर होगा, और वो उसका एक स्कोर देंगे कि डेवलपमेंटल जो लेवल है वो क्या है पंचायत का, और वो ये देख सकते हैं कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द अदर पंचायत्स एंड पंचायत्स इन अदर ब्लॉक्स एट द स्टेट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड इवन अभी नेशनल लेवल पे हमने नहीं रखा है, बट इन फ्यूचर दे कैन ऑल्सो सी हाउ दे आर परफॉर्मिंग एट दी पंचायत विद द पंचायत्स एट द नेशनल लेवल. And lot of data will be generated, which will be a useful data, not for us, but for the states, for the Panchayati Raj department, and significantly for the panchayats. There will be it will be annual exercise, and some of the data we are obtaining from the other departments and ministries, which are maintaining their own portals. So it will be a panchayat report card, and it will be also used for national panchayat awards. And states can also use this data for their own state level awards. So planning will be based on the evidence which will be obtained through this exercise of preparation of Panchayat Development Index. There will not be any interstate comparison because the situation is totally different in different states, but states can plan for comparison of their own panchayats. And this is how the SDG India Index is prepared and how we will be preparing the PDI. So these are again theme-wise local indicators which are there in the Panchayat Development Index. Initially, the committee has suggested 577 indicators, and there are 646 data points. But at the request of the states, we have reduced the number of mandatory indicators which are to be filled mandatorily by the states. So this is how the indicators are divided among 9 different themes. So highest is the self-sufficient infrastructure, which is normal because most of the panchayats, they are working for infrastructure development. And this followed by good governance. Again, child-friendly panchayat, good governance. Women-friendly panchayat has 51 indicators. So main, like in the poverty free, it is income generation and poverty alleviation. Health is again health indicators. So clean and green. A lot of work is almost in every sector. Lot of work is being done by the state governments, by the union government through various schemes. So it is just, and almost all the data is being maintained by the panchayats. Though it is not integrated, it is not uniform, and it is not in the public domain. So this is also exercise to have this data in the public domain.
So how in good governance, how the online technology can be used for service delivery? Then this is for women friendly villages. And some of the examples of the indicators are like in poverty free and enhanced livelihood villages. Out of 37 indicators, like eligible households under Antyodaya Yojana and the priority households ration card. So this will be a negative indicator. Having more number of people, households under AAY and PHS will be a negative indicator for the village. Low number will be a positive indicator. It means village is doing, the panchayat is doing very well. And but the percentage of household benefited under MNREGS will be a negative indicator. But the 100 days employment given to people will be a positive indicator once application have been made. Similarly, birth attended by the institutional deliveries, tuberculosis, how many cases are there, presence of a public health, primary health center, health and wellness center, that will all add to the positive indicators. In the child-friendly villages, the transition rate from primary, how many children are dropping out and how many they are registered in Anganwadi centers. Water sufficient village will be the functional household tap connection to the households, and a lot of households have already been connected through JJM and also by the efforts of the state government through 15 Finance Commission and their own schemes. And how many the percentage of water sampling, sample testing used, the field testing kit which are being used in the panchayat, it will be a positive indicator. Clean and green village, availability of separate toilets, how the solid waste management is taking place. Then in the infrastructure, the buildings, the CSC if there is a citizen service center co-located, और ये जैसे आंगनवाड़ी में रैंप है कि नहीं है, स्कूल में रैंप है नहीं है, ये सारा हमारा सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. और जो सोशली जस्ट और सोशली सिक्योर्ड विलेजेस में अगेन पेंशन जो है, वृद्ध पेंशन, विडो पेंशन, ये सारा इसमें हमारा आएगा. और कितना जो वीकर सेक्शन है उसको कितना बेनिफिट्स डिफरेंट स्कीम्स में हम दे पा रहे हैं, और कितना विलेज विद गुड गवर्नेंस में कितना ऑनलाइन हमने सर्विसेज दी हैं, जियो टैगिंग कितनी करी है. विमेन फ्रेंडली पंचायत में अगेन देयर विल बी नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विच विल बी क्राइम रिलेटेड. एंड जो इस साल का हमारा पीडीआई तैयार होगा वो हमारा 31 मार्च 2023 में जो डेटा अवेलेबल था, क्योंकि ये पहला साल है, फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज हो रही है, उसके बेसिस पे हमारा इंडेक्स बनेगा. अगले साल से ये इंडेक्स जो है वो पिछले साल की परफॉर्मेंस से कितना अच्छा किया खराब किया उसके बेसिस पे उसकी स्कोरिंग होगी. और ये ग्रेडिंग जो है कितना स्कोर 90 के ऊपर है तो अचीवर है. इट इज सेम, ऑलमोस्ट सेम लाइक एसडीजी इंडिया इंडेक्स. और बिगनर, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर. ये जब पीडीआई बन जाएगा तो 9 थीम्स में, ये जो पायलट सर्वे हुआ है ये महाराष्ट्र के 30 पंचायत में हुआ है. तो उसमें से एक पंचायत है जो हरिपुर, उसका एक रिपोर्ट कार्ड है ये, जो आप देखेंगे कि किस तरह से हर थीम में उनका क्या स्कोर रहा, कंपैरेटिव स्कोर है, और किस रैंक पे वो लोग रहे, क्या ग्रेड उनको मिला. सेम स्कोर विल बी देयर फॉर ऑल द पंचायत्स, अपना सेपरेट उनको मिलेगा. एंड स्टेट्स कैन रैंक ऑल्सो. हमारा जो एक pdi.gov.in जो पोर्टल है उस पर डेटा एंट्री होगी, एनआईसी ने डेवलप किया है. और हमने जो मॉडिफिकेशन की हैं, जैसे राजस्थान ने कुछ सजेस्ट किए, उड़ीसा ने सजेस्ट किए, उत्तर प्रदेश ने सजेस्ट किया, हिमाचल ने किया, सब जो स्टेट्स ने जो सजेशन दिए हैं, जो भी उसमें से रीजनेबल सजेशंस थे, हमने सब मान के कुछ मॉडिफिकेशन लैंग्वेज में किया है, और कुछ इंडिकेटर्स को भी मैंडेटरी से हमने ऑप्शनल में किया है. क्योंकि इस साल हो सकता है वो डेटा अवेलेबल ना हो, बट नेक्स्ट ईयर से वो डेटा अवेलेबल होगा. दे विल बी मेड मैंडेटरी इंडिकेटर्स. और जो पीडीआई को रोल आउट करने के लिए भी हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है, सारे स्टेट्स को वो दिया है, उस पर काम चल रहा है. एंड मिस्टर विक्रम इज हेयर. तो हमने जयपुर में भी वर्कशॉप करा था करीब 2 हफ्ते पहले, और मुझे उम्मीद है कि सारे जो सीईओज हैं हमारे वो भी फैक्ट
जैसे उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो आप उनको इन्वॉल्व करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेटा वैलिडेशन। जो डेटा की जो सत्यापन है वो बहुत, हमने उसके लिए बड़ा रिगरस मैकेनिज्म रखा है। और डेटा जो है पंचायत लेवल पे उसका वैलिडेशन होगा, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। तो 4 जगह पर वैलिडेशन उसका होगा। और इसके साथ में जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की एक्सरसाइज है वो भी साथ साथ में चल रही है। और ये लास्ट स्लाइड है जिसमें इट्स अ सीपीआर। सीपीआर माने हम इसको एंकर कर रहे हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मगर हमारा इसमें ओनरशिप सबकी है। इट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी, इट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी सोर्स। जितने भी उन्नत भारत अभियान के लिए जो भी डेटा की जरूरत होगी, वट एवर डेटा इज नीडेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एनी HEI, वो आप उसको इसमें पब्लिक में जो डोमेन में वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा वी विल क्रिएट लॉगिन IDs फॉर यू टू सी डेटा विच इज़ नॉट अवेलेबल इन दी पब्लिक डोमेन। अगर कोई स्टेट चाहता है तो किसी भी एजेंसी को दे कैन ऑल्सो गिव राइट्स कि उस डेटा को यूज़ करके और प्लानिंग में उसको बेहतर प्लानिंग के लिए उसको यूज़ करें। और मुझे उम्मीद है कि जब हम इस पे आगे काम करेंगे आप सब लोगों के साथ मिलके, यहाँ पर IIT जोधपुर है, देन IIT दिल्ली, तो हम इस पूरी एक्सरसाइज से पंचायत के लिए बहुत अच्छा प्लानिंग में और उनके फॉर बेटर प्रोविजन ऑफ देयर सर्विसेज we will be very, it will be very helpful and we will be successful in doing lot of work through LSDG and PDI. Thank you so much. Thank you, Mr. Anand, for your informative talk and sharing several activities undertaken by Ministry of Panchayati Raj. Okay, so I would like to introduce. No, sir. Once, please. Introduction is done. I'll No, introduce myself. no. Please let me do this honor. मुझे भी ये honor है, अपने लिए करने के लिए. Thank you. Thank you. So, thank you, Professor Kirti. मैंने थोड़ा सा मिक्स प्रेजेंटेशन बनाया है because we have a lot of participating institutions, but at the same time we have representatives from UNICEF and the theme also was like leveraging Unnat Bharat Abhiyan for localization of sustainable development goals. So ये वाला. Okay. So, okay. So I hope that I will be able to catch the flight. Right. Okay. So I'll go through some of the things which already many of you know the process, but once again, I'll try to reiterate the process and then I'll try to talk about some of the recent initiatives and how we can make our program more effective. Okay. So I'll just start with vision and objectives. And the purpose is because one of the things which we have come, it has come to us from our experience, or whenever we meet people, outside the fraternity of HAIs, and when they try to evaluate Unnat Bharat Abhiyan, so we try to understand what are the expectations. For example, today we had Secretary Panchayati Raj, we had a lot of government officials, and then
we have community leaders. So what is the perception of Unnat Bharat Abhiyan in their minds? And what is the perception of Unnat Bharat Abhiyan in our own minds? So that is very, very important. So if we look at the mission and vision of Unnat Bharat Abhiyan, so I've just highlighted some of the key words with specific reason. So if I ask you what is the role of HEIs in making Bharat Unnat, or when we work with villages, when we say that we are working with 5 villages, what is our role? So most of the time, we feel that, I mean, I'm not saying that you feel like that, but most of our education institutions, we feel that we have owners to develop these villages. We are going to these villages for developing them because these villagers or these villages are not capable enough to develop themselves. So we start with defining development for them. Then it follows with defining processes for development for them, and so on. And that is the thing which, irritates the local people most. The moment you say that you are there for, you are representing Government of India, you are there for helping them, the next moment they ask, what are you giving to them in terms of funds, in terms of some scheme or something like that. So that is why I always start with this vision. So if development is not in our agenda, then what is there in our agenda? In our agenda, we talk about development, but we talk about the transformational change in the rural development process. And the ethos which I was talking about, participatory approach, knowledge sharing and convergence. So after a consultative process, consultation through local field groups, consultation through government officials, consultation through academic people, it was observed that there are 3 things missing when we talk about rural development in India. One is participatory approach, which was talked about by many speakers. Then knowledge sharing, knowledge-based process of development. And third, convergence. So everybody is doing its own bit independently. So that is how this UBA was conceptualized. And that is why we are talking about this transformational change and how educational institutions, higher educational institutions, because they have strength in terms of faculty members and students, how this strength can support in bringing this change by making the whole process of rural development participatory, knowledge-based and converging process. So this transformational change in rural development process. Then of course we talk about inclusive India and experiential learning. Since morning we are talking about that. So if we look at the mission statement, the first statement talks about the reorientation. First of all, we have to introspect our own curricula, whether it is appropriate for the local needs or not, whether it is fulfilling, whether it can fulfill the needs of. So reorientation of academic curricula is our first mission. Second, knowledge and S&T interventions. So why I have bracketed S&T? Because we are knowledge institutions. Many of us are science and technology institutions, and as in the morning it was also mentioned, we have other UGC institutions in different other disciplines. So knowledge interventions, so suited to local needs through efficient natural resource management in rural areas. So this covers
encompasses everything related to sustainable development. And third, convergence, right? If we look at the, so this I think already I've covered. So, okay. So this is the current presence. I mean, the number keeps on changing. So, but we have presence all across the country, and this is our structure. We have coordinating institution, national coordinating institution, IIT Delhi, then 45 regional coordinating institutions. So one of the regional coordinating institution in Rajasthan is IIT Jodhpur, then participating institution and subject expert group, which Vikas was also mentioning. I'll talk about this more. Right. Okay. This. And now we come to the process. So this is for participating institution. So how we start? So once we join Unnat Bharat Abhiyan, we do not get any entitlement. It is the starting of the journey. So the first step after joining is village Adhyan. And that is the first step of reorienting our curricula also. So the idea is that students along with the faculty members goes to these villages. And then for this village Adhyan process, we talk about so many things. We have survey, because it's already left, but we are trying to include all those things in our survey, those who have already completed. So we have village level survey and we have household level survey. But that survey is not the core of Unnat Bharat Abhiyan. This is just a tool for starting the work. That's all. Because we all, in academic fraternity, we always look for a reference point, right? If I ask any faculty member and any student go to the village and talk to the people, they'll always ask what to talk about. What is the starting point? So you consider that survey just as a starting point. And then I don't know whether we have any session on PRA. There are several tools, participatory rural appraisal or some other PLA, whatever. So during this village Adhyan, that is actually the key of the whole Unnat Bharat Abhiyan program. The success of any participating institutions in Unnat Bharat Abhiyan lies in village Adhyan. How effectively village study has taken place. Whether it is, so survey is just one part, PRA is another part, then continuously engaging with the community. Different ways of rapport building, starting from organizing a tournament to meeting with elders, discussing problems with the youth, or starting a coaching class. So many times we hear from participating institutions that as a UBA activity, we are running coaching classes. Our students are going and they are teaching maths and English, right? Because we always feel that the most important subjects in one's life is English and maths. But anyway, but that is only a rapport building exercise. So coaching is not our objective. Coaching is just to engage youth of the village, and that. So village Adhyan is the most important thing. And in the village Adhyan, the again critical factor is how well we have developed a rapport with the villages, how many students of your institution, how many faculty members of your institutions are engaged in this village Adhyan across disciplines, and then how many primary stakeholders, Panchayati Raj leaders, Panchayat secretary, elder of the villages, youth of the village, right? How many of they are engaged in this? And then again, need identification. Need identification is based on, again, participatory approach. So once we complete the Adhyan, based on Adhyan, we try to identify some of the challenges on which our students can work. Now, when I say challenges, remember, we are not talking about any welfare. So any habitat, whether it is a rural habitat, whether it is an urban habitat, or within this campus, if I talk about, if today we decide to roam around the campus,
we'll be able to find out 10 challenges. That does not mean that the administration is not working on those challenges every time. So there is always a scope of improvement. I am a student of chemical engineering, so I know. So we have this 20% thumb rule. So whenever you do any audit, you'll find a scope. So it's just like that. It is nothing like these people are under distress, they are waiting for us, we are not the savior. No, it's not like that. So it's a part of your academic curricula. It's a part of your academic exercise. And then we talk about the appropriate technology interventions. Many times solution can come from local people itself. And then technology development and customization. We have a vertical of subject expert group where participating institutions can go look for the fundings, small funding, of course. And then ultimately it should lead to GPDP and VDPs. Means that, because I talked about transformation of rural development process. So this VDP or GPDP, which is a village development plan, should have those components. And that is our goal. It has to be knowledge based. So normally, how the VDPs and GPDPs are made? We have some Panchayati, some Sarpanch here sitting here in this hall. So see, everyone cannot have capacity in every domain. For example, if someone asks me to go to a field and ask me to do some agriculture, I will not be able to do it, even if I have read 20 books on agriculture, because it requires a different set of skills, different set of training. So panchayats are not, they don't have that kind of capacity so that they can make a good GPDP or good VDP, which qualifies, certain criteria set by the. So most of the time what happens that they ultimately go to the contractors, and then so that is what we say, that GPDPs, VDPs are mostly contractor driven, and that nexus we have to break. And villagers also, the primary stakeholders, Sarpanch, they also want to break this. So here there is a role for HAIs. And then of course the implementation. All right. Now, if we talk about the key impact on curriculum part, as I mentioned in the morning also, already UGC has started this course as SEG. So when we started this program, we thought that this program is for technical institution, to be very honest, right? And we thought that, despite being so humble, still we felt that we are the people, those who can really make the change, right? So we started with IITs, NITs, and then some other technical institutions and so on. But later on we realized that development does not mean civil engineering, development does not mean mechanical engineering. It is beyond that. Or forget about development. Engaging with community is really a different ballgame. And really, if you look at this, so if I divide UBA institution in two verticals, technical and non-technical, see the success of non-technical institution. UGC has come up with a 2-credit course, and this is of course for UGC institutions. We have not been able to come up with any single course. So IIT Bombay, they designed a 3-credit development engineering course. They circulated with all RCIs. I do not know what is the progress in Jodhpur, but Delhi, there is zero progress. We are NCI. But anyway, we are working on that. But many technical institutions, they have started rural internship. So this is the, our progress as far as curricula is concerned. So those participating institutions, those who are present here, those who are UGC institution. So my request is that yesterday I was talking to UGC
So this year, 7,000 students have registered for this course. Earlier, UGC wanted to make this compulsory course, but now this is an optional. But they have, so last semester, it was 6,000 something. This semester, 7,000 students have registered for this course. They are now looking for more teachers, those who can teach this subject. It's not an easy subject because you have to organize field visits. You have to give a task to the students. So for example, a history student going to the field. Now you have to think what he is going to do in the field. We cannot ask a history student to prepare a geographical map. Of course, he'll do it, but that will not be his contribution. So every stream, every discipline has to design this course accordingly. So we need more people. That is what I was mentioning in the morning. If IIT Jodhpur can take a lead, be it teachers or trainers institute, okay, along with the RCI. So UGC, we are already engaging for this. So far, they have identified only 7 regional institutions. One of the regional center of UGC, that is Dayalbagh, Agra, they have started this MOOC course. Okay, so you can look at this MOOC course, which is available on SWAYAM portal. Okay, right, but still we, particularly technical institutions, they have to do a lot. This is just food for thought. Of course, I have made this slide. I'm also biased because it's always easy to make a slide which suits to our own strength. So just an example, a technical institution, what they can do. So faculty members, they can take action research projects. Students can go for rural internship. After going to rural internship or rural immersion, they can take up BTech projects. So this will be, so they will be given credit, because for us credit is very important. So this is another challenge. Every faculty member and student asks what we will get out of it, other than just, so sometimes students get fun going to village maybe 1 time, 2 times or 3 times, but ultimately they need credits. So we have to design this whole program in such a way that students get benefit. Till we are not able to start the course, we need to, weave this into our existing program. So this is one way, rural internship and BTP, BTech project. Then MTech students can also take. So we have, so from next semester, we are starting this in IIT Delhi. So we are inviting problems from our PIs, because IIT Delhi is a regional coordinating institutions also. We will be classifying them in different areas. And I have already spoken to head mechanical engineering department, head energy studies, and head chemical. At least 3 of them I have already talked about. So we'll be giving these problems to them. They will be floating it to their students. Interested students can take these as a MTech and BTech project. Okay. Then of course PhD scholar. But many times what happens that these problems are small ones. Anand is there or not? Sure that he is taking many PhD. Yes. Okay, this I just leave because this is for RCI. Right. I'll focus more on SEG, subject expert group. This is, the second ethos I was talking about is the knowledge sharing. And practically, this is the area where Unnat Bharat Abhiyan institutions are lacking. In the sense, we are not fully utilizing the potential of SEG. So far, what we are doing with SEGs, we are submitting projects and waiting for some funds. This is a very small fund, you all know. But role of SEG, which was envisaged, is more than that. If I come to the role of SEG, so it is not only, it is so our expectation was, when this was conceptualized, that these expert groups will act as a
So it was based on hub and spoke model. So there will be a hub of, let's say, rural energy or renewable energy. So it will have a group of experts across the country having expertise in different areas of renewable energy. Maybe few will have expertise in biogas, few will have expertise in solar, few will have expertise in wind. All kind of mentoring. So starting, what you understand is the evaluation of your project, supporting you in the implementation of your project, creating compendiums, creating policy documents, every kind of, but that will happen only if you poke them. Like for example, I am also coordinating one of the subject expert group, that is liquid waste management. And so far I have not received, only one query I received in 2021 from Haryana. They wanted to regenerate their pond. Except that, no institution. And when we evaluate these SEG proposals, we find that many of these SEG proposals, they lack technology component or the knowledge component. That means still there is a need for that, but probably our participating institutions, they are not aware of this. So my request to Professor Vivek Vijay will be that please coordinate with your participating institution. We have to make this program more effective, right? So the role which SEG can play is immense, right? Okay. These few slides just to show that how we have integrated. These are the 5 thematic areas under Unnat Bharat Abhiyan. And then we have 14 subject expert groups. So we have, created a synergy between our thematic area, our subject expert group, and 29 subjects of Panchayati Raj plus SDGs, 17 SDGs. So that is why we are talking about this localization of. So, for example, organic farming is our thematic area. Sustainable agriculture system is our one of the subject expert group. 3 subjects under Panchayati Raj are connected with that, including land improvement, land reforms, etc., and SDG goals. So this kind of mapping we have done for all 5 themes and all our subject expert groups. Okay. Like for example, basic amenity. This is one of our theme which covers many of our SEGs, many of the Panchayati Raj institution subjects, and 5 SDG goals. All right. Okay, this you all know. So this is the current status. This is again a kind of I'm trying to. So Professor Vivek, I do not know how many SEG proposals are currently being implemented in IT Jodhpur. IT Jodhpur in this is as RCI IT Jodhpur. How many SEG projects are being implemented? I do not know. But what I know is out of these 324, large number of projects are from Tamil Nadu and Maharashtra. So I'm sure that like other northern states, Rajasthan is also. So this is one area where we can improve. Many times we ask for money, funds. We don't have funds. These are the funds which should be utilized for capacity building of your students and demonstrating S&T intervention in the villages, right? Okay, very quickly, I'll go through some of the initiatives. One of the key initiatives is in the area of livelihood. This is, I'm again throwing to RCI IT Jodhpur. Tech for Seva. Initially, we thought that all our regional coordinating institutions will be organizing this one. We organized this, we did this exercise in IT Delhi. But then actually Corona also did a lot of, but probably you have planned Tech for Seva? You have already, no, that is different thing.
So this should be an independent exercise for RCI, right? So IIT Jodhpur should plan this, where all stakeholders, solution seeker means the primary stakeholder, maybe as Panchayati Raj leaders, they can, participate. Maybe NGOs can participate, field groups can participate. So primary stakeholder. Then technology provider like IIT Jodhpur or other participating institutions or CSIR laboratories within this region. You can make it a theme-based Tech for Seva, right? It is not necessary. And then facilitators, like if you have some industries, those who can take up. So for example, if Anand has got that filter, can we think of disseminating this filter through a small scale industry? So this whole Tech for Seva workshop, and I'm saying that it should be a multiple, it should be an annual exercise, right? Where all stakeholders are coming together. So a farmer, if I'm claiming that I have this technology, then let this technology be evaluated by a person who is going to use this technology. He should see it, he should understand this and say, no, this is not useful, or this is the problem. Please rectify this. So many times we talk about that technology dissemination is not taking place. Two reasons. One, we are not working on the real problems. Two, we are always talking about TRL level, but we are never talking about appropriateness. So TRL level is okay when we are talking about upscaling, that's fine. But when we are downscaling, we need appropriateness. If technology is not appropriate for me, then I will not use it, right? So this Tech for Seva, I think again is a exercise which IIT Jodhpur should go for. This is the convergence initiatives with CSIR, DST, TriFed, then Ministry of Drinking Water and Sanitation in form of Catch the Rain campaign. I think this is again one exercise which IIT Jodhpur can take up. I'll just show you because, right. So this is the initiative we took with CSIR. So I'm always a person who is technology neutral. In the sense, when you go to the village, don't only go with the technology developed by IIT Jodhpur. That's fine that you go along with your technology, but then you also make you fill your basket with other solutions. Maybe their solutions are more appropriate. Okay. So when we started working with CSIR, the problem of appropriateness we found. They actually told us initially that they have more than 800 technology which can be taken to the villages. And they talked about TRL level. But so this exercise was done by all RCIs. We gave that compendium to all our RCIs. They went to participating institutions and all. Finally, on the appropriateness scale, only 10% of the technology qualified. And then so I think this exercise, this template, you can use this template for your own technology. You can use it, participating institutions, they can use this template for their technology, right? I'm quickly going through this because these are some success stories. Catch the Rain campaign, Rajasthan can lead. Already IIT, Udaipur Agriculture University, they are planning to make a model water security plan for a village in Rajasthan. So maybe you can coordinate with them. Okay, so this is the last slide I would like to just highlight. Tech for Seva, we are trying to make a virtual portal. This physical exercise is important, it should go on. But we are thinking of a portal where all solution seekers and solution providers can interact. I just give one idea. Suppose
I'm a farmer. I have a problem. I'm looking for the solution. And many times it happens. Like, for example, last week, 2 farmers came to my office. Right? Of course, I'm not working in agriculture, but just by looking at the head CRDT board, they came to my office. Right? They told me a peculiar problem. I know some of the people in IIT Delhi are working on that problem, but I really do not know to whom I should connect these 2 farmers. So, okay, I asked them that, okay, just give me something in writing, I'll find out. So we are talking about convergence in Unnat Bharat Abhiyan, but the real convergence in terms of knowledge sharing is not happening. We have created subject expert group, but again, we really do not know where are the experts. So subject expert group we create based on our own knowledge. We do not have any knowledge on grassroots innovators. There are many people, many case studies, right? So what we are thinking, there will be a platform where there will be a repository of all case studies, all technologies, of course, whatever is available to us. So for example, all CSIR technologies will be there. RUTEC technologies will be there. IITs will be writing, NITs will be writing. Grassroots innovators will be taking from field agencies. And there will be a repository of that. So suppose I am a farmer, I have a problem. I'll just search. It's a simple search thing. For that problem, there will be 50 solutions. If I'm happy with that, and when I'm saying 50 solutions, it will also have information about the solution provider. If I'm happy with that, I'll be able to connect with these solution providers. That's fine. I'm out. But I'm not wise enough to choose which one is the most appropriate. I need further optimization. Then the second level, I will be asked about the constraints. What are the constraints? Environmental constraints, physical constraints, financial constraints. What are the constraints? Right? Then based on that, using AI and our level 1 expert group, those 50 solutions will be further zeroed down to, let's say, 5 or 6 appropriate solutions. That is the level 2. Again, he now has got optimum solutions, 5 optimum solutions, because for many problems, we have multiple solutions available in the market. So based on accessibility and everything, he can choose one. Third level, he is still not, so what he needs is the implementation. Then there is a role of our participating institution. So this kind of portal we are planning to create. Similarly, if there is no solution available, problem is there, then there will be interface, we'll create the scientific problem, and then we will be sending the scientific problem to the different domain experts, different lab, different R&D groups. So this will, will take opinions from our RCI, our participating institutions. We are still in the process. And the very encouraging thing is that Pan IIT Association, they have agreed to join hands for this development. So they have a wing foundation called Wheels Foundation. So they have agreed to take up this. And Vigyan Bharati, of course, is our partner in that. So this is the last thing I just wanted to talk to you. Just 2-3 slides on success stories, just to, give you an idea what can be done with these small projects. The first one is a BTP project of, I have not included any example from Jodhpur because already Jodhpur will be giving a lot of examples. A lot of work has been done by Jodhpur, right? So this is a example of Indo-Global College, a small college. Students went to the villages. They found that they need a hydraulic unit because there are street lights, but there is no provision. I mean, if the street light, there is some problem with the street light, they are complaining because this hydraulic lift is not available there. There is a small hydraulic lift. Students made this
around 75,000 or 80,000, I don't remember. But this project was funded by, and then they donated it to the Panchayat. Similarly, this load carrier trolley, either they have two-wheeler or they have tractor. There is nothing in between. You just want to carry 200 kg or 400 kg. So similar kind of interventions I have listed down here. Then participatory approach, since morning we are talking about some examples. This is a very good example how students can contribute. Raja Ram Bapu, students designed this road, student designed this underground drainage network, and this was part of their project curriculum. Faculty members, students, they designed it, and the whole funding came from the, of course. So that is what I was saying. Our role is transformation. Our role is not to construct road. Our role is to design it properly, right? And then district and so I think, if I remember correctly, 1.2 crore worth project were implemented based on the design of these students. And again, so students participating in the preparation of VDP. So I've taken all those examples where students are participating in Gram Sabha or VDP preparation and all. Right? This is our own example. I'll just skip that. Okay. So that's all from my side. I'm really sorry because I have to rush. I wanted to spend more time with you, but it was a constraint. So if you have any question and query, I'm happy to take it up. Professor Vivek, again, he can, and then very experienced Anand is there. So both of them can handle all queries and questions. But still, if you have anything related to process of UBA, because there are certain things which are in control of NCI. So I'll be happy to reply all of them. Thank you. Not now, over email. Thank you. Thank you, Professor Kumar, for your insightful talk about Unnat Bharat Abhiyan and informing us about the. Okay, sir, thank you. Yep. So I have an important. I have an important update. So it's not about lunch. So we are seeing these boards, Courage Unnat. इन बोर्ड्स पे आपके जो रजिस्ट्रेशन बैग है उसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। उन 3 प्रश्नों में है एक सतत विकास के लिए नवाचार के लिए सुझाव, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए सुझाव और उन्नत भारत अभियान में जो ग्राम पंचायतों के सामने चुनौतियां आती है उनके लिए सुझाव। तो आप इन बोर्ड्स पर अपने आंसर जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे लिख के शेयर कर दीजिए और यह काम आपको लंच तक ही करना है। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होगा और अभी हम लोग लंच के लिए जा सकते हैं। थैंक यू प्रोफेसर कुमार अगेन फॉर योर टॉक। हेलो प्लीज जो इंस्ट्रक्शन शीट है उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही आप आंसर करिएगा।
जल्दबाजी में मत करिएगा, क्योंकि ये आपके विलेज और आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ठीक है ना। सो वी हैव टू गिव आंसर्स आफ्टर डूइंग ए रिसर्च। तो 2 दिन रिसर्च स्टूडेंट्स तैयार हैं, यहाँ पे काम करेंगे। वो आपके आंसर्स को बहुत ही गहनता से अध्ययन करेंगे, उसके बाद वो आपको एक्शन प्लान के रूप में दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप टाइम लें, उसको बहुत गहनता से उसको पढ़ें। वो 3-4 शीट्स वो स्टिकी नोट्स हैं डिफरेंट कलर्स के, उसको आप पक्का देखिएगा, है ना। वो डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट चीज़ें डालनी हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा जरा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके अंदर लिखा है, आपके वो शीट में आप पढ़ के देखेंगे, उसमें क्लियरली लिखा है डू नॉट पुट योर नेम। आपका इंस्टीट्यूशन, आपका जो है जहां से आप आए हैं उसका ही नाम लिखिए, किसी का नाम किसी में भी नहीं डालना है। और आप एक दूसरे से डिस्कस मत करिएगा कि क्या मैं डाल रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी डन विदाउट anybody's help, right? Please do it without anybody's help, right? ये आप स्वयं सोच के स्वयं करिएगा, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सबसे दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैसे ही फॉलो करें।
Hello, good afternoon, everyone. And we will start our afternoon session now. So this session, we have distinguished speaker from various fields, including from academia, from implementation research, and they have worked widely in different parts of the country. So may I request Mr. Shafkat Hussain, Dr. Akanksha Chaudhury, Mr. Varun Sharma, Dr. Prasanjit, and Dr. Vivek to kindly come on stage, and then we will start this session. So this session is scheduled such a way that initially each speaker will speak for around say 10 minutes. And after that, we will have a group discussion or where we can take question from the audience. So with this, I think we are waiting for our one of the speaker. Yeah. Okay. So not to delay much, let's say our first. Yes. Okay. Okay, so it's my real privilege to introduce Mr. Shafkat Hussain, who is a development professional, and he has work experience from more than 2 decades, working in different parts of India, including Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Rajasthan. And he has worked in different parts of India, and he also holds post-graduation in economics and development studies. So he is currently working as a social policy specialist with UNICEF, Rajasthan. So please, I request Mr. Shafkat to kindly come and give their talk. Thank you. So good afternoon and a very warm welcome to this post-lunch session. I'll try my best to converse in Hindi. हमने सुबह से जितने भी speakers को सुना है,
तो इस सत्र में हम प्राइमरली थोड़ा सा और डीप डाइव करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ बेस्ट दीज टू मैकेनिज्म्स कैन वर्क टुगेदर, उन्नत भारत अभियान और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। सो टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, अगर हम उन्नत भारत अभियान को देखते हैं एंड द कोर फिलॉसफी जो हमने आज पूरा दिन समझा फर्स्ट हाफ में, तो प्राइमरली हम जो शायद करने की कोशिश कर रहे हैं वो कि वी आर गोइंग टू अ विलेज जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाइंग कि वहाँ पे चुनौतियाँ क्या हैं विकास को लेके, और उन चुनौतियों के आधार पे अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस इवॉल्व कर रहे हैं थ्रू नॉलेज इनपुट्स, विच इज़ लार्जली ब्रिंगिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस एंड विलेज कम्युनिटी टुगेदर। एंड आइडिया ये कि अल्टीमेटली दिस प्रोसेस, ये जो कार्य करे, ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में मदद करे और इस तरीके से करे कि वो सस्टेन कर सकती है। तो इफ़ दिस इज़ द फ्रेमवर्क, अगर इस फ्रेमवर्क में हम काम कर रहे हैं तो दो चीज़ें हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फर्स्ट इज कि ये जो पहला पार्ट है समस्याएं चिन्हित करने का और समाधान ढूंढने का, इसका जो एक नेचुरल प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है वो है पंचायत डेवलपमेंट प्लान, और वो भी एक टाइम बाउंड तरीके से होता है। हर वर्ष भारत सरकार के माध्यम से एक पीपल प्लान कैंपेन, जन योजना अभियान की शुरुआत की जाती है, जो 3 महीने की अवधि में कंप्लीट करना होता है। 2 अक्टूबर से शुरुआत होती है, 31 जनवरी तक ये कंप्लीट करना होता है, और बल्कि इस वर्ष से तो इसको सितंबर से स्टार्ट किया गया है। तो दैट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें अगर हम हमारा जो फ्रेमवर्क है विलेज अध्ययन से लेके समस्याओं के समाधान का, वो इसके साथ हम कैसे हार्मोनाइज कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें को टर्मिनस हों। तो दैट इज़ वन थिंग जो हम आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि जो समाधान ढूंढे जा रहे हैं एक ग्राम पंचायत के अंदर में, और वो समाधान स्थायी रहें, सस्टेन करें आगे जाके, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जब गांव में जा रहे हैं तो गांव की जो रिप्रेजेंटेशन है इन फॉर्म ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, उसके साथ काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो इफ वी सी, इन पंचायती राज सिस्टम टुक बर्थ थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के तहत पंचायती राज की संकल्पना की गई, और भारत के संविधान का जो 11th शेड्यूल है और जो 73rd अमेंडमेंट है, उसका जो आर्टिकल 243G है, वो उनको मैंडेट देता है, उनको पावर अथॉरिटी देता है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाएं, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, और उनके जुरिस्डिक्शन में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसका वो एक तरह से मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का कार्य करें, बेहतर क्रियान्वयन का कार्य करें। एंड दिस रिलेट्स टू जो कॉन्स्टिट्यूशन में 29 सब्जेक्ट्स पंचायती राज सिस्टम को डिवॉल्व किए गए। नाउ इफ आई वोंट गो डीपर इन दिस, लेकिन अगर आप उन्नत भारत अभियान के सेक्टर्स को भी देखें, दे हैव बीन अलाइन्ड विद ऑल दीज 29 सब्जेक्ट्स। तो हम जो भी कार्य करेंगे वो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही होगा। जस्ट टेक 2 मिनट्स। तो क्यों पंचायती राज अगर बात करें, तो द थिंग इज कि पंचायती राज इज नॉट जस्ट अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ वे ऑफ वर्किंग। तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का जो प्रक्रिया है, दैट डेट्स बैक इवन टू 600 BC इन इंडिया। तो राइट फ्रॉम द नॉर्थ जहाँ पे मौर्य किंगडम था, टू द साउथ जहाँ पे चोला किंगडम था, तो वहाँ पे सभाज, जनपद, विलेज काउंसिल, ये सारे मैकेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। देन इवन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा, जब ब्रिटिश रूल था, तो भी देयर हैव बीन लॉट ऑफ एफर्ट्स कि पंचायती राज जैसे मैकेनिज्म को बनाया जाए। और जब भारत के आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बना, तो 1950 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, उसका आर्टिकल 40 स्पोक अबाउट क्रिएशन ऑफ विलेज पंचायत्स, एंड देन द सेकेंड 5-year प्लान ऑल्सो रिटेरिएटेड कि सब पंचायती राज जैसी एक व्यवस्था स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। एंड बाय 1959 states had also started experimenting with पंचायती राज। तो राजस्थान was the first state जहाँ पे नागौर जिले से इसकी एक फाउंडेशन ले की गई, और वहाँ से काम की शुरुआत कुछ और राज्यों में भी हुई। बट इट वॉज ओनली इन 1993 जब पंचायती राज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त करता है, जहाँ पे 73rd अमेंडमेंट ब्रॉट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 9 टाइटल द पंचायत्स। एंड देन फ्रॉम देन इफ वी सी, इट टुक अनदर 20 years जब 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हुए फॉर ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी टू पंचायत्स, तो पंचायत की निधि बढ़ना स्टार्ट हुई। उसके बाद आज सुबह हम जो बात कर रहे थे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के इन 2018, जिसका पूरा फोकस था कि किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की क्षमता बढ़ाएं कि वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम कर सकें।
अपने स्थानीय निकाय में जो भी निर्णय करने हैं उनको ले सकें. And today we are talking about localization of SDGs, which I won't get deeper into because हमने सुबह सुना है विकास आनंद जी को. तो what we have is 17 sustainable development goals और इनसे aligned localization के 9 commitments हैं, संकल्प हैं कि किस प्रकार से सतत विकास लक्ष्यों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है. While Vikas ji had touched upon it, I'll just quickly go in little detail कि अगर हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को देखते हैं largely from the perspective of UBA, तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मगर there are 6 core components जो हमें देखने की जरूरत होगी. First, which is heart and soul, RGSA का, वो है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तो RGSA का मुझे लगता है लगभग 2/3 जो पूरा कंपोनेंट है वो क्षमता निर्माण के लिए, किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था की कैपेसिटीज बिल्ड हो कि वो इतने जटिल कार्य को आसानी से कर पाए. दूसरा है इस काम को करने में उनको मददगार साबित हो ऐसे इंस्टीट्यूशंस या स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना. तो जैसे आज हम बात करें तो इन दिस रूम वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स एंड डीपीएम्स फ्रॉम RGSA. तो वो एक व्यवस्था है जो स्टेट से लेके ब्लॉक तक की है. फिर स्टेट से लेके रीजन लेवल तक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर्स हैं. एंड सिमिलर व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की बात की जा रही है. So today, if RGSA and UBA comes together, I think this is where we will strongly fall in कि हम पंचायती राज को किस तरह से सतत करने के लिए एक रोल प्ले कर सकते हैं. जब RGSA को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया उस समय भी ये सोचा गया था कि कैपेसिटी बिल्डिंग कैन नॉट बी अ स्टैटिक सब्जेक्ट, मतलब एक स्थित सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ क्लासरूम बेस्ड नहीं हो सकता, इसको फील्ड पे भी ले जाने की जरूरत है और एक निरंतरता की जरूरत होगी. तो उसके लिए उस समय भी 2 चीजें सोची गई थी कि हाउ कैन वी यूज डिस्टेंस लर्निंग सैटकॉम के माध्यम से और पंचायत का डिजिटाइजेशन कैसे सुनिश्चित करें कि पंचायतों के साथ एक रेगुलर संवाद हो सके यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीन्स. बोथ दीज आर स्टिल अंडर एक्सप्लोर्ड एरियाज. एंड देन देयर आर 2 components. प्रोफेसर विवेक इन द मॉर्निंग स्पोक अबाउट कि UBA में हम किस तरह से फंड्स को लेके और काम कर सकते हैं. तो RGSA also provides similar funding opportunities. तो ये सपोर्ट फॉर इनोवेशन एंड सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये प्राइमरली अनटाइड एक्टिविटीज हैं जिसमें पंचायत अपनी प्रपोजल डेवलप करके और किसी भी प्रकार के विकास के कार्य ले सकते हैं. एंड देयर इज नो कैप टू इट, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल देयर. सो वी हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ पंचायत फ्रॉम राजस्थान जिन्होंने इको टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप करने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ के प्रपोजल्स पे भी काम कर रहे हैं. सो प्राइमरली व्हाट इज अ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. तो अगर पंचायती राज संस्थाओं को हम माने कि दे आर द ड्राइवर्स जिनके कंधों पे ये रूरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा सस्टेनेबल मैनर में, देन GPDP इज अ व्हीकल, क्योंकि GPDP उस पंचायत को पहले तो एक विजन स्टैब्लिश करने में मदद करता है कि वेयर डू वी वांट टू सी आवरसेल्व्स. उसके बाद इट गिव्स अ फ्रेमवर्क कि उस विजन को प्राप्त करने के लिए एक्शन प्लान बनाए. And it's not just an action plan as an ad hoc basis. It is an integrated action plan which is costed. और इसमें जितने भी पैरेलल प्लानिंग एक्सरसाइजेस हो रही हैं, चाहे विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान हो जो विलेज प्रॉस्पेरिटी रेजिलियंस प्लान के नाम से जाना जाता है, या जल जीवन मिशन का विलेज एक्शन प्लान हो, वाटर रिसोर्स प्लान हो, ये सारे ही एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसमें काम कर सकें. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्कोप जहाँ पे प्लानिंग की प्रोसेस से लेके उसके इम्प्लीमेंटेशन तक कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सकती है. तो देयर इज अ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी दैट कैन बी इंश्योर्ड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे एक अंडर रिप्रेजेंटेड एरिया है वो ये कि जब हम डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस और प्लानिंग की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इज द एंड पॉइंट. तो पंचायत का जो प्लान है दैट इज द बेसिस जिसके आधार पे ब्लॉक का प्लान बनेगा और डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनेगा. तो अगर डेवल्यूशन फॉर्मूला के तहत बात करें, so if there is 100 rupees that is coming to a district, then ideally 85 rupees should go to a panchayat, 10 rupees will go to a panchayat samiti, and 5 rupees goes to Zila Parishad. तो ये एक फॉर्मूला है जो आज नहीं तो कल आई थिंक हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में फॉलो होगा. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क विद पंचायत्स. These could be some of the avenues. जब पंचायत अपने प्लान बनाने जाएं तो उनके पास कुछ अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और कुछ रिसोर्सेस हैं जिनको उनको मोबिलाइज करने की जरूरत होगी. जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल फाइनेंस कमीशन
और स्टेट फाइनेंस कमीशन ये एक डेडिकेटेड पूल देते हैं पंचायत को, रिसोर्सेज देते हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। फिर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हैं जिसके तहत या तो फंड्स आते हैं या कुछ कार्य आते हैं जो पंचायत में होने हैं। एंड देन पंचायत्स हैव लिबर्टी टू जनरेट देयर ओन रेवेन्यू बाय वे ऑफ टैक्सेशन, तो टैक्स लगा सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई NGOs काम कर रहे हैं, CSO काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को, उनके फंड्स को डवटेल कर सकते हैं। CSR के साथ भी फंड्स लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं पंचायतों के जहाँ पे उन्होंने अपनी सोसाइटी रजिस्टर की एंड फंड्स मोबिलाइज किए गांव में काम करने के लिए। आई डोंट नो, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद हिवरे बाजार का नाम सुना होगा, पोपटराव पवार जी। तो उन्होंने भी अपने पंचायत के जो विकास के कार्य किए वाटरशेड को लेके, उसमें उन्होंने सोसाइटी के माध्यम से फंड्स अट्रैक्ट करके बियॉन्ड गवर्नमेंट फंड्स भी काम किए। And there is a coin which is blank, which I think is a most critical coin, जो Isabelle सुबह बात कर रही थी, which is about low cost and no cost intervention. हर चीज़ के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, खास तौर से महिलाओं बच्चों के लिए, इक्विटी के इश्यूज पे काम करने के लिए अवेयरनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो वो काम पंचायत कैसे कर सकते हैं अपने प्लान के माध्यम से। I'll quickly take you through stages just for our better understanding, हालांकि आप सब इसका ओरिएंट हो चुका है। प्लान बनाने का जो पंचायत का प्रक्रिया है उसमें देयर आर 8 ब्रॉड स्टेप्स। तो स्टेप 1 इज विच इज द वीकेस्ट, विच इज प्रॉब्ली समथिंग जो होना चाहिए बहुत स्ट्रांगली, वो है कि पंचायत में प्लानिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम का निर्माण करना है जो इस प्लान की प्रोसेस को शुरू से अंत तक सपोर्ट करेगी। नाउ इन पंचायत जहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, सो आई विल होप कि हम इन GPPFT का जो राजस्थान में वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसका हिस्सा बन सकें, सो दैट हम प्लानिंग प्रोसेस को बेहतर एंकर करने में मदद करें। दिस कमिटीज विल कंप्राइज ऑफ पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट के काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, देन इफ देयर आर NGOs, देयर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस प्रकार के एक इसका कॉन्स्टिट्यूशन सोचा गया है। सेकेंड इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि हमारे पंचायत में प्लान बनने वाला है, ये अगर जानकारी होगी ही नहीं तो देयर वोंट बी एनी पार्टिसिपेशन। सो जो विलेज अध्ययन वाला पूरा पार्ट है वो एक तरह से मोबिलाइजेशन का भी कार्य है, सो दैट कम्युनिटी स्टार्ट एंगेजिंग विथ द पंचायत प्लानिंग प्रोसेस, उनके नीड्स, उनके एस्पिरेशन सामने निकल के आए। एंड इट्स ऑल्सो अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहाँ पे पंचायत में देयर कुड एक्चुअली बी अ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्रोग्राम, स्कीम्स एंड बजट्स। लोगों को पता हो कि हमारे पंचायत में क्या योजनाएं इंप्लीमेंट होती हैं, किस प्रकार के फंड्स अवेलेबल होते हैं, किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। दिस ऑफ कोर्स इज द बेस्ट पॉसिबल एरिया जहाँ पे उन्नत भारत अभियान एंड RGSA कैन कम टुगेदर। नो प्लानिंग प्रोसेस इज कंप्लीट विदाउट डेटा एंड एविडेंस। तो बिना डेटा के, बिना एविडेंस के कार्य नहीं हो सकता है। दिस इज द आई थिंक एन एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या या चैलेंज है, बिकॉज 3 तरह की चीज़ें हैं डेटा के साथ में। तो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इटसेल्फ डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन एक बार डेटा आ गया, यू ऑल्सो नीड स्किल्स टू इंटरप्रेट डेटा, बिकॉज बिना इंटरप्रिटेशन के डेटा इज जस्ट नंबर। एंड एक बार हमने इंटरप्रिटेशन कर लिया, देन वी ऑल्सो नीड टू यूज दिस डेटा फॉर प्लानिंग पर्पस। ये जो 3 स्टेप्स हैं डेटा के साथ में, दैट इज वेयर मैक्सिमम सपोर्ट वुड बी नीडेड, जहाँ पे आप सब एक्सपर्ट्स का बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है पंचायत को। इवन इफ पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इज रोल्ड आउट, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप को पूरा करता है, वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा का टूल है। वो डेटा उपलब्ध करा देगा ऑन 600 पॉइंट्स या 600+ पॉइंट्स, लेकिन फिर भी उस डेटा को सेक्टोरल गैप्स आइडेंटिफाई करने का जो प्रक्रिया होगा, वो इंटरप्रिटेशन में पंचायत विल स्टिल नीड सपोर्ट। एंड एक बार आइडेंटिफाई किया तो देन आगे उसको ले जाने में मदद चाहिए होगी। फोर्थ इज वी हैव डेटा, वी अंडरस्टैंड हम आज कहाँ हैं, बट वेयर डू वांट टू टेक आवर विलेज, हम जाना कहाँ चाहते हैं। दैट इज द नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप कि हमारा विजन क्या है पंचायत डेवलपमेंट को लेके। जरूरी नहीं है कि वो विजन 1 साल के एनुअल प्लान में कंप्लीट होता हो, इट कुड बी अ 5-year विजन, अ 7-year विजन, लेकिन विजन के बिना प्लानिंग अपने आप में अधूरी है। तो विजनिंग एक्सरसाइज और जिसके साथ में एक विश लिस्ट का जनरेशन कि इस विजन को पूरा करने के लिए किस प्रकार के इंटरवेंशंस, एक्टिविटीज गांव में किए जा सकते हैं। देन लाइक वी सेड कि रिसोर्सेज का निर्धारण, जो हमने पहले बात किया, एंड देन यूजिंग दिस स्टेप 4 एंड स्टेप 5 टू एक्चुअली डेवलप अ प्लान कि हम अब हमारे पास 100 पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, इनमें से कौन से हम बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज इस वर्ष के प्लान में ले सकते हैं और कर सकते हैं।
अब जाहिर सी बात, अगर 100 में से हम लेट से 50 या 40 कर रहे हैं, तो जो 50 छूट रहे हैं, उन 50 को छोड़ने का कोई एक प्रोसेस चाहिए। वो 50 इस वजह से छूट रहे हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, या उन 50 में क्रिटिकलिटी ऑफ नीड को कंसिडर किया गया है। सो जो इक्विटी की बात हुई थी सुबह, दैट कम्स फ्रॉम हियर, कि वो सरपंच या वो पंचायत या पंचायत की जो प्रतिनिधि समिति है, वो केवल अपने हिसाब से वो प्लान प्रायोरिटाइज कर रही है, या दे आर एक्चुअली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नीड्स ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, जिनको उस प्लान में सच में मदद की आवश्यकता है। एंड हैविंग डन दैट, देन देयर इज अगेन अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, जहाँ पे इस प्लान को ग्राम सभा के माध्यम से अप्रूव कराना। इस पूरे प्रोसेस में देयर आर 2 ग्राम सभास एटलीस्ट दैट आर एक्सपेक्टेड। एक शुरुआत में जब स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस को नंबर 2 पे, और एक नंबर 7 पे जब फाइनली प्लान बनने के बाद Panchayat is not the authority to finalize the plan. It is the people of that Panchayat who will give their stamp and signature कि we agree with this plan, और एक resolution के माध्यम से plan आगे जाएगा, and there is a whole process thereafter. And finally, of course, this does not stop here. This number 8 is highly crucial, क्योंकि अगर हम across India GPDP plan को देखें, I think in last 3 years, एक तरफ हम जो बात कर रहे हैं कि पंचायत के पास फंड्स कम होते हैं या अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, दूसरी तरफ हमें ये देखने की ज़रूरी है जो फंड्स आ रहे हैं वो यूटिलाइज कैसे हो रहे हैं। तो आज से 3 साल पहले आर यूटिलाइजेशन रेट वाज 42% अक्रॉस इंडिया, और लास्ट ईयर आर यूटिलाइजेशन वाज मेरली 16%, केवल 16%, यानी 100 में से 16 रुपए ही खर्च कर पाए। सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट कि हमने अगर प्लान बनाया है तो इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, उसका क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है, और उसका इवैल्यूएशन इम्पैक्ट असेसमेंट भी उतना ज़रूरी है, सो दैट इट कैन फीड बैक टू स्टेप 1 कि हम वापस इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। एंड आई विल स्टॉप विथ माय लास्ट स्लाइड। दीज आर नॉट 5 एरियाज, दीज आर बेसिकली 3 एरियाज वेयर आई फील प्रॉब्ली हम आज से लेके कल तक में थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि हाउ वुड दीज 2 ग्रेट इनिशिएटिव्स कैन वर्क टुगेदर। तो पहला एरिया है विच इज, मतलब पहला और 5वां एरिया विच आर ब्रॉड एरियाज। तो फर्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि बिना कैपेसिटी इसके काम नहीं हो सकता है। एंड इसाबेल जी ने सुबह बड़ा अच्छे से इसको मेंशन किया था कि पंचायत आर नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप, एक बड़ा हेट्रोजीनियस ग्रुप है, अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग सामाजिक परिस्थिति से, शैक्षणिक परिस्थिति से, कोई पहली बार आ रहा है, कोई 3 बार चुन के आया है, तो बहुत वाइड रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये एक वर्ष में एक बार 3 दिन की ट्रेनिंग से पूरी नहीं होती हैं। सो व्हाट कुड बी अ रेगुलर मैकेनिज्म ये ट्रेनिंग करने का? अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकते हैं तो वो क्या हो सकते हैं? अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस होंगे तो वो अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करेंगे? एक बच्चा जैसे सीखता है, सर आपने जो किताब लिखी है, उसके हिसाब से पंचायतें कैसे सीख सकती हैं? क्योंकि जो पेडागोजी है मेरे ख्याल से जो बच्चे को सिखाने की है, वही यहाँ पंचायत को सिखाने के लिए हमें अप्लाई करनी होगी। तो दैट्स वेयर वी नीड दैट सपोर्ट। पॉइंट्स नंबर 2, 3, 4 रिलेट टू प्लानिंग प्रोसेस। डेटा कलेक्शन में हम क्या टूल्स एंड अप्रोचेस दे सकते हैं, जिसमें से वो तीनों चीज़ें जो हमने बात की स्टेजेस की डेटा की, उनको एड्रेस करने में पंचायत को मदद मिले। डेटा कलेक्शन हो सकता है पीडीआई से हो जाए, बट पीडीआई के बाहर भी बहुत सारे डेटा है जो पार्टिसिपेटरी तरीकों से निकालना होगा। हर चीज़ केवल डेटा से नहीं आ सकती, कुछ चीज़ें चर्चा से भी आएंगी, कुछ पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस से भी आएंगी, तो वो कैसे डेटा का काम करें, देन उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करें, प्लान में यूज़ करें। इंटरवेंशन जो प्लान किए जा रहे हैं, पंचायत ने अगर 50 इंटरवेंशन आइडेंटिफाई कर भी लिए, तो एक बड़ी चुनौती होती है कि इन इंटरवेंशन को कॉस्ट कैसे करें। उसका कोई मेथोडोलॉजी, कोई टूल आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है कि अगर हमें एक लेट से कि एक तालाब का पुनरुत्थान करना है, तो उसकी सिचुएशन को समझते हुए क्या पैसा वो बजट करें। तो कभी कभी अंडर बजटिंग होती है, कभी कभी सुपरली ओवर बजटिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से अन्य बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। एंड देन फाइनली लाइक आई सेड कि जब हम उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो क्या तरीका हो सकता है। एंड लास्ट इज व्हाट विकास जी ऑल्सो मेंशन, जहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड नॉलेज इंस्टीट्यूशंस कैन प्ले अ मेजर रोल, कि हाउ डू वी क्रिएट मॉडल्स, हाउ डू वी क्रिएट बीकन पंचायत्स जो रिपल इफेक्ट का काम करें, अन्य पंचायतें उनको देख के सीखें और उनके मॉडल को एमुलेट करके वो भी आगे प्रगति कर पाए, जिसके लिए आरजीएसए में डेडिकेटेड रिसोर्सेज भी हैं, आई थिंक उन्नत भारत अभियान में भी है। तो किस प्रकार की जो पंचायत की यूनिक प्रॉब्लम्स हैं उनको इसके माध्यम से एड्रेस किया जा सकता है। सो थैंक यू।
सो थैंक यू शफकत जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पंचायती राज का वर्णन किया और क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में बहुत अच्छे से आपने एक प्रकार से ओवरव्यू दिया। अब मेरे जो हम लोग के जो दूसरे स्पीकर हैं वो डॉक्टर आकांक्षा चौधरी हैं, जो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर आकांक्षा चौधरी ने पीएचडी आईआईटी बॉम्बे से की है और इनका जो रिसर्च एरिया है वो इनिक्विटीज़ पे है, मेनली इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड ऑल्सो इन बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में इनके काम प्रकाशित हो चुके हैं और यहाँ आईआईटी जोधपुर में फैकल्टी होने के पहले इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में भी काम कर चुकी हैं। सो प्रेजेंटली ऑल्सो बहुत सारे ग्रामीण एरिया में इनके प्रोजेक्ट में ये इन्वॉल्व हैं। सो वी आर रियली लकी टू हैव ए स्पीकर लाइक डॉक्टर आकांक्षा। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज कम एंड शेयर। Thank you so much, Alok. Thank you so much, Shafkat sir. It was wonderful to hear through the entire journey and the steps involved in the process, how we should be really approaching the development of our rural areas. So it's an absolute pleasure to be here to address this wonderful audience and on this occasion. So when we are talking about architects of our villages who can enhance or who can, be the leaders to develop the areas, we cannot undermine the role of women. So if you look at some statistic to put it in context, we have about 65% of our population living in rural areas. 48% of them are women. And when we're talking about what kind of jobs they are majorly involved in, so they are majorly involved in agricultural activities. They can be farmers or they can be agricultural laborers. Unfortunately, we have about 9 to 10% of women who are landowners. So this is one aspect which we can immediately start working on. I mean, just to, sir just mentioned that we need to do a stock of the situation, how the realities are at the ground level. So if you're looking at the situation, we need to understand the statistics, what is the current scenario, and then we look back, reflect what can be done to improve this. So I'll try to. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने रिसर्च में से कुछ ऐसे इंसाइट्स लेके आने की जो हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखा सकते हैं। मेरा जो फाइंडिंग्स है वो थोड़े सुनने में अच्छे ना लगे, पर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ हमारे फ्यूचर को लेके। हम जब जेंडर इक्विटी की बात कर रहे हैं तो, और अभी तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो बहुत अच्छा दिन है। हम एक वीक से वी आर सेलिब्रेटिंग the work of Professor Claudia Goldin, who has been awarded the Nobel Prize in Economic Science. And she has worked, उनका काम gender inequalities in labor force participation पे रहा है। तो ये एक बहुत बेहतर टाइम है इस बारे में बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने बिकॉज अभी ये पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रहा है इसलिए हमने ये एक टॉपिक रखा है डिस्कशन के लिए इस टॉक के। हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने ये कुछ 15-20 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन टुडेज कॉन्वर्सेशन। सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, मैं अभी तक देखते हुए आई हूँ, मैं देखती हूँ कोशिश करती हूँ जानने की कि हमारे इनइक्वालिटीज़ कितने हैं, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि अगर दो इंसान का हम लोग सक्सेस आउटकम्स देखें तो कितना proportion of their success outcome is actually coming from their own efforts, right? And some of this, so if I'm comparing two girls success outcomes कि वो दो लड़कियां कितना अचीव करती हैं अपनी करियर में, उसमें काफ़ी कुछ
रोल रहेगा उसके सर्कमस्टांसेस का, काफ़ी कुछ रोल रहेगा कितनी मेहनत उन्होंने की है, क्या डिसीजंस उन्होंने लिए। अब जो इनइक्वालिटीज़ अब उनकी मेहनत से या उनके डिसीजंस की वजह से आ रही है, हम उसको कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये फेयर इनइक्वालिटीज़ हैं, हमें इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बट कुछ इनइक्वालिटीज़ जो आ रही हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से, जो एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं एक स्टार्क इनइक्वालिटी शहरों के एजुकेशन सिस्टम और गांव के एजुकेशन सिस्टम में। तो अब कोई बच्चा या कोई बच्ची जब गांव से आ रही है तो उसके सक्सेस आउटकम्स कम है एक शहर के बच्चे से, just because they have not been exposed to those kind of opportunities. This is a concern for us and we need to compensate for that as a society. So this is what I look at. So I'll just bring in some statistics from my work. So अगर हम लोग देखते हैं कि अगर एक माँ नौकरी कर रही है तो कितने % चांसेस हैं कि बेटी नौकरी करेगी या उसका रोल है। ये सर्कमस्टांसेस में ये सब चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप देख रहे हैं, एक अगर लड़की का हम देख रहे हैं कि इस लड़की कितनी सक्सेसफुल है, उसमें उसके माँ का क्या रोल रहा है, उसके फादर का क्या रोल रहा है, उसके स्कूलिंग का क्या रोल रहा है, किस एरिया से वो आती है उसका क्या रोल रहा है, किस स्टेट से वो आती है उसका क्या रोल रहा है, किस कास्ट से वो आती है उसका क्या रोल रहा है। सो इन सब सर्कमस्टेंसेस का जो रोल है उसको मेजर करना, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो मदर्स होती हैं, दे आर द फर्स्ट केयर गिवर्स, they nurture the child and therefore their role is a lot pronounced in the development of the child. So if we look at, we have about 71% of women have exactly similar educational outcome as that of their mothers. तो बहुत ज़्यादा chances हैं कि daughters के educational outcomes उनकी ऑक्यूपेशनल आउटकम्स उनकी मदर्स के जैसे होंगे। अब जानने की बात इसमें ज़रूरी ये है कि मदर्स कैसा कर रही हैं। अगर मदर्स बहुत अच्छा कर रही हैं तो वी डू नॉट माइंड कि डॉटर्स भी वैसा ही कर रही हैं। बट अगर हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, एब्सोल्यूट स्टैटिस्टिक्स, तो हम देखते हैं कि हमारी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया अबाउट फीमेल्स, दे आर मोस्टली नॉट employed in any formal sector. They do not have financial independence. Now, if that is the case about mothers, if that gets transformed to, that travels to the daughter as well, then we have to look at that. I mean, daughters can be caught in a low occupational trap. Now, its occupational outcome is also a function of how they are doing as far as their educational attainments are concerned. तो अगर हम देखें तो कुछ 80% of females, 80% of mothers had no formal schooling. तो ये मैं कुछ जो मैंने empirical analysis किया है, ये एक data set है 2011-12, उसका snapshot analysis है जो मैं present कर रही हूँ। तो उसमें 80% हैं rural areas में जो mothers हैं, उनकी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं रही है। अब उन 80% मदर्स जिनकी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं रही है, उनमें से 50% of the daughters also end up having no formal schooling. So there is a certain rigidity for this particular category that we need to work on, and we need to get these women out of this trap. So we need some affirmative actions which can help to get these women out of. Now, it is not just about a concern for us to teach those daughters. Now we see that role of the mother is very pronounced. So we also need to look at if we can do something about educating those mothers also, right? So a lot of villages have come together. I mean, people in the villages have formed groups like just mentioned that we have SHGs. They are they're collectivizing the efforts, they're collectivizing the resources, and then वो channelize कर रहे हैं इस तरीके से कि डेवलपमेंट को एक अच्छी स्पीड मिल सके।
तो अगर हम अब ये तो कुछ बात हुई स्टैटिस्टिक्स और कुछ जो काम मैं करती हूँ, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एनेक्डोट्स मैं देना चाहूँगी मेरे फील्ड वर्क से। तो मैं पिछले 1 साल से वाटर सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही हूँ। तो इस दौरान में मुझे एहसास हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले मुझे ऐसा पता नहीं था, बट हमेशा से हमने पढ़ा है कि जो पानी की जो जिम्मेदारी रही है वो ज़्यादातर परिवार में औरतों के ऊपर रही है। और औरतों का अधिकतम समय जो गाँव में जहाँ पे टैप वाटर की फैसिलिटी नहीं है, तो अधिकतम समय सिर्फ पानी घर में अरेंज करने में जाता था। तो इस प्रोजेक्ट के दौरान जहाँ मैं इन वाटर सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही थी, तो मुझे कुछ गाँवों में जाके ये स्टार्टअप प्रमोटर्स से, स्टेक होल्डर्स से मिलने का मौका मिला। तो मैंने कुछ रायगढ़ के, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ 2-3 गांव हैं जिनका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, कुछ एनेक्डोट्स वहाँ से। तो जिन औरतों से मैं मिली, उनका कहना ये था कि उनकी शादी के बाद वो 20-30 सालों तक, डिपेंडिंग ऑन वो कितने पहले उनकी शादी हुई है, बट 20-30 सालों से वो अपने घर नहीं गई हैं, अपने पेरेंट्स को विजिट नहीं किया, अपने भाई की, बहन की, किसी की शादी में नहीं गई हैं, बिकॉज अगर वो चली जाएंगी तो घर पे पीछे पानी का कौन देखेगा। और पिछले कुछ 4 सालों से, सो आई वाज वर्किंग विद स्वदेश फाउंडेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पिछले 4-5 सालों से उन्होंने कुछ रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके, सम CSR फंड्स को मोबिलाइज करके, दे हैव अ टारगेट ऑफ हैविंग 100 ड्रीम विलेजेस with minimum funds, with a lot of awareness, with probably forming self-help groups and awareness campaigns. They are trying to develop these villages, and it is an absolute it's absolutely amazing to visit these villages and see how much potential we have with less resources and a lot of giving direction and channelizing what can be done. So abhi they have tap waters, and now these women who are relatively free, they have formed libraries in the villages where women are completely taking care of the libraries. Library is of basically the old books of their children, and they're completely managing it. Similarly, another village had a sports store where they have they have unused sports equipments of their children, and they issue it, and they also go to nearby businessmen and ask for funds and develop that sports equipments in that store, which is enabling the children of, but it's all purely managed by the women now. The women are getting empowered. They're also playing a huge significant role in the decision making of those villages. So it was absolutely heartening to see this kind of thing. So if we can work on solving the problem of water, especially when we're standing in a western western Rajasthan, and we're talking, this problem is a very significant problem, and we do need to look at, these are just few things I'm looking at. I'm sure we have so many. So this was one heartening experience which I thought I will be sharing. Also, I just had an opportunity to visit some villages around जोधपुर, और वहाँ पे मैंने देखा कि औरतें अपने पुराने कपड़ों से दरी बना रही हैं, लाइक दरी और बहुत सारी चीजें बना रही हैं। इन औरतों को हमने कभी सर्कुलर इकोनॉमी नहीं समझाया, नहीं सिखाया, बट दे आर एक्चुअली फॉलोइंग सर्कुलर fundas and fundamentals of circular economy in practical lives. So women actually hold great potential. It's just that we need certain direction. We need to form probably cooperatives at the village level, so that there can be channelizing of these resources, channelizing of knowledge, and there can be a significant knowledge sharing. And I think it is a wonderful experience. With some efforts, we can experience so much of transition. So if we are here with this group
and looking forward, aspiring for a significant change, and we will be fortunate to experience changes right in front of us with some direction, and like sir said, with some minimalistic resources. Sometimes you do not even need resources, right? So if in the beginning I just mentioned that we are celebrating that Professor Claudia Golden, she received Nobel Prize in Economic Science this year. So मैं उनकी एक टॉक सुन रही थी जिसमें था कि जब वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रही थी तो उन्हें लगता था कि सिर्फ किताबों से पढ़ने से आपको रियलिटीज का एक्सपोजर नहीं होता है, आपको उतना पता नहीं चलता है, तो यू शुड एक्चुअली गो इन द फील्ड एंड एक्सपीरियंस द रियल प्रॉब्लम्स आउट देयर, एंड वंस यू experience the problems or acknowledge the problems, then only you can come up the solutions for that. So she always followed the procedure, the principle of just going with people, traveling in their mode of transportation, staying with them, and actually then able to experience their problem and probably looking out for solutions for that. And I think we as academicians, scholars, if we want to really solve problems, I think we do need to expose ourselves to the areas where the problems exist, and then look out for solutions. So these were certain things which I was thinking I'll talk about. I mean, I can just go on and on. This is a topic which has been very close to my heart, and I've been working on, so I can just go on and on, but I'll just like to conclude it here, and I would look forward to interact with you, hear from you, and have some sort of interaction in the later part of this session. Thank you. Thank you so much, Dr. Akanksha. It was such a nice talk. So yes, this month Nobel Prize in Economics. Yes. So our next speaker is Mr. Varun Sharma. He's a program director at Association for Rural Advancement through Voluntary Action and Local Involvement, also known as Aravali, an autonomous institution by Government of Rajasthan. He has over 20 years of experience in development sectors, including responsible business behavior, community development, capacity building, fundraising, program planning, CSR project, design and implementation, and outreach and advocacy work. Dr. Varun Sharma is also founder of Rajasthan State's first multi-stakeholder forum on natural stone, known as Sustainability Forum on Natural Stone. He is also member of Stop Child Labor India country core group for addressing child labor issues in different sectors. He is also an executive member of the NGO Arpan Seva Sansthan. Mr. Sharma is an accomplished development professional and agriculture engineer with bachelor's degree in law and master's in business administration in human resource development. So you can see he has a wide training, wide work experience. So we are looking forward to hear Mr. Varun Sharma, please. तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। वैसे तो बड़ा मुश्किल समय है। ओके, शेयर भी करिए। जो लोग इंटरनेट पे सो रहे हैं उनको भी जगाने का समय है अभी। तो लेट्स सी।
आप लोग जगे हुए हैं कि खुली आंखों से सो रहे हैं? ओह, गुड गुड। तो पुनः आपका धन्यवाद। टॉपिक भी थोड़ा मुश्किल है और समय भी, और वैसे दुनिया भी मुश्किल में है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल समय है और हम सब मुश्किल चीजों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब मुश्किल चीजों को प्रयास करते हैं हल करने का, तो क्षमताओं का सवाल आता है, क्षमताएं क्या है हमारी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी एनहांसमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्लांट सॉल्यूशंस। वैसे मैं पर्सनल रूप से सस्टेनेबिलिटी नामक शब्द को एक धोखे के रूप में मानता हूँ। एक सस्टेनेबल क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं अगर आप अध्यात्म को देखें तो क्या सस्टेनेबल है? तो शरीर ही नश्वर है। ठीक है, पर फिर भी हम बात कर रहे हैं एक जो भी चीज हमने प्लान की है, तो यहाँ हम थोड़ा, चूंकि एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट में है, तो मैं E=mc² पे आ जाता हूँ। और ऊर्जा केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जाती है, तो ये ऊर्जा के स्वरूप का परिवर्तन जो है वही क्षमता वर्धन है। तो हम वहीं से शुरू करें तो पहले हम देखें आज की चुनौतियां क्या हैं। हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी बैठे हों, ये हमारा सौभाग्य कि हम आईआईटी में हैं। आईआईटी के पास बहुत अच्छे ट्रेंड फैकल्टीज हैं, सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी हम देखें तो ओवरऑल अगर इंजीनियरिंग का सिनेरियो देखें तो कॉलेजेस में जिस तरह का शिक्षा का स्तर है, उसमें हम कह रहे हैं कि काफी गिरावट आ रही। तो एक कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हैं, उनकी व्यापक स्तर पे उपलब्धता की कमी है। प्रशिक्षक तो हैं, पर काबिल प्रशिक्षक की जो बात है, और काबिल प्रशिक्षक कौन है? जो समय समय पे, जैसे आप लोग जो मोबाइल हाथ में लिए बैठे हैं, इसमें हर 15-20 दिन में एक अपग्रेडेशन का नोटिस आता है और आप तुरंत अपग्रेड कर लेते। हमारे प्रशिक्षक कितने अपग्रेड होते हैं? और मैं पंचायती राज के सबसे बड़े प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट में बैठता हूं, और बहुत मुश्किल है कि मैं पंचायती राज के इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या कमियां, उसी के बारे में बता रहा हूं आपको। हजारों की संख्या में लोग हमने ट्रेन किए। पिछले 2 सालों में 20,000 लोग करीब हमने ट्रेन कर दिए। एंड वी आर स्टिल फेसिंग सेवरल डिफिकल्टीज। ट्रेनर्स कई बना लिए, थाउजेंड्स ऑफ मास्टर ट्रेनर्स हमने क्रिएट किए, पर चुनौती वही है। फिर बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सब लोग ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक आपने देखा है, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लोगों के अप्रोप्रिएट कितना है? बात आई कि सब जगह एलईडी लगना चाहिए, तो एलसीडी सब जगह लग गए, पता लगा उनके पास कंटेंट ही नहीं है जो एलसीडी पे जाएगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो एनेबलर, अगर आपके पास में उस तरह के संसाधन है तो। वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप चार्ट, पुराने समय पे लोग चार्ट पे लिख लेते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, और तब बहुत महान साइंटिस्ट निकले देश से। तो हम क्या कर रहे हैं? देखा देखी में इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे लिए क्या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और ट्रेनिंग मटेरियल, एक और शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है। ट्रेनिंग मटेरियल की बात करें तो बड़े लोग अंग्रेजी समझ रहे हैं, छोटे लोग हिंदी समझ रहे हैं। अब कोई कागज मुझे पहले बड़े लोगों को समझाना है, क्योंकि मेरा करियर उनसे चलता है, तो मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। अंग्रेजी की किताबें ढेर हैं, हिंदी में कंटेंट ही नहीं है। जबकि मेरा जो कोर क्लाइंट है वो हिंदी भी नहीं समझता है, वो लोकल लैंग्वेज समझता है। तो भाषा यहाँ पे सहज नहीं होके एक ऐसा माध्यम है जो चैलेंज पैदा कर रहा है। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज जब भी हम करें तो हम ये नहीं माने कि आज आईआईटी में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं ये देखूं कि मेरे लोग किस इंफ्रास्ट्रक्चर में सहज फील करते हैं। जैसे बहुत सी बार हम ट्रेनिंग करते हैं जयपुर में,
गांव के लोग परेशान हो जाते हैं कि साहब यहाँ जरूरत से ज्यादा ठंड है। अब वो गर्मी से आया है, आप उसे 20 डिग्री में ले गए, उसका लर्निंग एबिलिटी कैपेसिटी तो हो गया डाउन। उसको ये डर है कि कहीं बीमार नहीं हो जाऊं, कल जाके वापस काम पे जाना है। व्हाट हैपेंड, हम हमारी सहूलियत के हिसाब से लोगों को किसी प्रक्रिया में ढालने का प्रयास करने लगे, और कुछ हद तक इस पे चर्चा भी हुई। एक जो चीज मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट सरकार के बहुत सारी कार्यप्रणाली में है कि लोग बहुत अच्छा काम करते हैं पर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। डेटा हम दिन रात कलेक्ट कर रहे हैं, पर इस डेटा का करेंगे क्या, वो एब्सेंट है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि परसेप्शन ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये सेना से समझना चाहिए हम, ठीक है। इसके अपोजिट एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग का मतलब है कि जो सबसे नकारा व्यक्ति है, जो किसी काम का नहीं है दफ्तर में, इसको ट्रेनिंगों पे भेजते रहो, क्योंकि काम के व्यक्ति को ट्रेनिंग में भेज दिया तो फिर रिसोर्स पर्सन बन के भी जाएगा वो, तो दुगना नुकसान हो जाएगा उससे, ठीक। तो ट्रेनिंग का परसेप्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि अगर हम किसी विभाग को चिट्ठी लिखते हैं तो कलेक्टर कहता है यार कौन कौन नकारे हैं, ये 5 लोग, इनको जयपुर रवाना करो ट्रेनिंग में। काम वाला आदमी तो हमेशा ऑफिस में ही चाहिए, तो मुझे कौन ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में। अब मेरी चुनौती यह है, मैंने 20,000 ट्रेंड कर दिए बॉस, पर किनको किया मैंने, हम जहां बैठे हैं यहाँ टॉप मोस्ट बच्चे आते हैं, पर मेरा तो क्लाइंट ही सबसे कमजोर है, तो इसलिए नो वन लेफ्ट बिहाइंड तो हम आईजीपीआरएस में वैसे अचीव कर रहे हैं, क्योंकि जिसको कोई मालिक नहीं है वो हमारे पास है बॉस, ठीक। अब वो बंदा आता है जयपुर, चूंकि वो काम का व्यक्ति नहीं है, तो उसको ये लगता है कि 5 बजे बाद मैं वो अल्बर्ट हॉल चला जाऊं। सर 4 बजे छोड़ दो, 4:30 बजे वो 5 बजे आमेर के टिकट खिड़की बंद हो जाती, तो अब मेरा जो बंदा है उसका फोकस क्या है, सर 5 दिन की ट्रेनिंग है, 1 दिन तो घुमा देते। अब इस माहौल में, इस परसेप्शन में ट्रेनिंग जो है मैं उसको कैसे मैनेज करूं। और ट्रेनिंग जो है एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम हमेशा ट्रेंड होते हैं। आज भी हमने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ नई चीजें सीखी होंगी, कल भी सीखेंगे, और हम सबसे सीख सकते हैं। वो सीखने के लिए जो जज्बा है वो आपके अंदर चाहिए, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एक और डिफिकल्ट काम ये है कि हमने ट्रेन कर दिया लोगों को, जिला परिषद पंचायत समिति को कहा भाई ये पैसे ले लो आप, अब आप ट्रेनिंग करो। हमने साहब 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के मॉड्यूल ट्रेंड सब करके दे दिया उनको। वहां गए तो उन्होंने कहा यार 5 दिन में 1 दिन तो दाल बाफले बनवाने हैं, तो 3 दिन का कर देते हैं इसको, ठीक। 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे ये हुआ कि डिग्निटरीज नहीं आए तो सब ऐसे ही बैठे, सेशन शुरू करेंगे। अंत में जाके 1.5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें जितने पीपीटी हमने बना के दिए वो भी नहीं चल पाए। और ट्रेनिंग के बीच में जिला स्तर की कोई महत्वपूर्ण बैठक आ गई तो वो मीटिंग हो गई पहले कि भाई ट्रेनिंग तो चलती रहेगी, ये कर लो। हमारा बहुत विचित्र अनुभव है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के अंदर भारत सरकार राज्य को 150 करोड़ रुपए इस काम के लिए देती है, और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जब हमने राज्य के 9 जिलों में लगभग 200-250 सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के पास गए तो उसमें से 2% ने भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, जबकि हमारे बजट खर्चा हो गया भैया पूरा। धौलपुर, ऐसे जो जिले हैं, जिन जिलों की बात करें, वहां पे हमने देखा कि जिस व्यक्ति का नाम पार्टिसिपेंट लिस्ट में है, उस महिला ने कहा था उस दिन तो मेरी डिलीवरी हुई थी। तो ये बताता है कि ट्रेनिंग को लेके इंस्टीट्यूशन के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो कितने गंभीर हैं, कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं ट्रेनिंग के बारे में। और देखिए, ये हम लोग अभी बहुत लग्जरी दौर में हैं, पर मैं आपको आगाह कर दूं कि हिंदुस्तान हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैंने बहुत सारे देश देखे हैं और मैं यूरोप बहुत जाता हूं, मैं उनका पतन देख रहा हूं अभी। आप अभी फॉर्चुनेट हैं और लग्जरी में हैं। ये ग्राफ जो ऊपर चढ़ रहा है, ये ग्राफ नीचे आएगा, और वो आएगा। और अगर हम आज नहीं संभलेंगे तो फिर आगे हमको पछताने की जरूरत पड़ सकती है। अब करें क्या इसमें?
करें क्या? इसके लिए हमको कहीं कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। वैसे भी आईआईटी वाले इसरो जान ही रहे हैं सर। कल ये बड़ा आर्टिकल आ गया है कि आईआईटी वाले इसरो के उसमें इंटरव्यू में नहीं बैठ रहे हैं आपके बच्चे, क्योंकि पैकेज बहुत कम है। तो ये प्रधानमंत्री को बताया गया इसरो प्रमुख द्वारा। अब प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे पैकेज कितना बढ़ाएं ताकि बच्चे जाएं वहां पे। पर ठीक है, मेरे हिसाब से बगैर आईआईटी के बच्चों के जाए भी अपन चांद पे जा रहे हैं तो फोर्स करने की जरूरत नहीं है सर। अभी कोई दूसरी गैलेक्सी में जाना होगा तब हमको, मुझे लगता है कि पैकेज बढ़ाने की जरूरत है। पर ये बेमानी आर्टिकल मैंने लिखा, उसमें मैंने कहा ये आपने समय खराब किया आर्टिकल लिख के, बगैर आईआईटी के जा ही रहे चांद पे तो फिर क्या जरूरत है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमको ट्रेन किनको करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या अचीव करना है। सो लेट्स थिंक अबाउट कि हमारी ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी क्या हो राजस्थान में, और वो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। राजस्थान अगर ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखें तो दो अलग अलग धरातलीय राज्य है। आधा राज्य डेजर्ट है, डेजर्ट वाले लोग बहुत रेजिलिएंट हैं, प्रतिरोध करते हैं, अपने आप को सर्वाइवल करा देते हैं। डेजर्ट रीजन शेखावटी आप देखें तो यहां से दुनिया के बेहतरीन बिजनेसमैन निकले, उन्होंने कहीं तो ट्रेनिंग ली होगी यार। तो इसका मतलब कुछ इनर मैकेनिज्म है जो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। हम यहाँ पे कुछ अपना ही क्या कहते हैं अध्ययन कर रहे हैं, वो उनका अपना ही तरीका है। वहीं से एलन मित्तल, बिरला, बजाज निकल रहे हैं और उनके नेक्स्ट लेवल के लोग भी उन इलाकों से जा रहे हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा और एक रणनीति तो जरूर बनानी पड़ेगी। आधा रीजन हमारा थोड़ा सरसब्ज है, कोटा, गंगानगर, ये जो इलाका है वहां एक अलग तरीका है ट्रेनिंग का। और वो मैंने महसूस किया जब हम लोग राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वहां बेनिफिशियरी सिलेक्शन के लिए भी वो एक बात करते हैं कि कुछ न कुछ आप थॉट प्रोसेस लेके आए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य में उतनी गंभीरता नहीं रही, इसको ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। देखिए मैंने मॉड्यूल बना लिया, अब वो मॉड्यूल मुझे बहुत अच्छा है, सबको अपने बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं, अब मैं उसी को ही धमाधम सबको पढ़ा रहा हूं, जबकि सामने वाले की जरूरत ही नहीं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे अलग अलग अगर पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, ये क्या समझना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं अगर वो हम इनको देंगे तो ये शायद उसको गंभीरता से लेंगे और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमको ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जैसा काम करना पड़ेगा। कंटेंट का कस्टमाइजेशन बिल्कुल एब्सेंट है। एक कंटेंट जयपुर में हमने बना लिया, इवन हमने अगर कोई बैनर बना लिया तो उसको भी एजीटीजी रिप्लिकेट कर देते हैं। तो कस्टमाइजेशन ऑफ कंटेंट जो है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डेडिकेटेड कैडर ऑफ ट्रेनर, जो ट्रेनर है सेना में सबसे बेस्ट आदमी होता है बॉस, और पंचायती राज में ये मेरी विडंबना है कि वहां वो व्यक्ति ट्रेनिंग में आता है जो आप देखिए मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग जो ट्रेनर है वो लोग हैं जो सेना के बेस्ट लोग। और मेरा ये पंचायती राज का काम भी उससे कम नहीं है। इस देश में जो भी अभी कल्पना हो रही है उस कल्पना तक पहुंचने का काम है। तो यहां कार्डर ऑफ ट्रेनर पे काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग क्वालिटी इज अनदर एरिया इंक्लूडिंग ट्रेनिंग मटेरियल्स। सब लोग रील बना रहे हैं पर पंचायती राज के क्रियाकलापों को लेकर कितनी रील में दिखती है हमको कभी जो ये बात करता हो कि गांव में तालाब का निर्माण कैसे करें, गांव में अच्छे स्कूल कैसे होते हैं, उसके कितने रील अभी अवेलेबल हैं हम अगर यूट्यूब पे जाएं तो, या एक अच्छे स्कूल का कैसा दिखता है इसका कोई रील नहीं दिखता हमको। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो खास तौर पे मैनेजमेंट में है, जो लोग हमारे जैसे लोग जो ट्रेनिंगों को प्रबंधन को देखते हैं, वो ट्रेनिंग का प्रबंधन अच्छे करें, समय अच्छा चुने। लोगों को ऐसा नहीं हो कि कल क्या कहते हैं मुझे नवरात्रा स्थापना में बिजी होना है और आज मैं ट्रेनिंग रख रहा हूं, ताकि उसका मन ही नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट टेक्नोलॉजी का इंटरफेस। टेक्नोलॉजी का इंटरफेस किस प्रकार से हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में हो, ये और महत्वपूर्ण है, जिससे हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक और हमारा क्राइटेरिया है कि अधिकारी वर्ग में से 4 आदमी आ जाएं प्रशिक्षण में। हमको थोड़ा सा रेंज को वाइड करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे लोकल लीडर हो सकते हैं जो बहुत अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं। हो सकता है कि एक महिला जो शायद उस तरह से उस एटमॉस्फेयर में नहीं है पर
कम्युनिकेशन उसका बहुत स्ट्रोंग हो सकता है। होता है ना, शादियों में गीत गाने के लिए महिलाएं आती हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर। अगर वो बेस्ट नहीं होती तो हम क्यों बुलाते उनको? तो हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम मैनेजमेंट तो हमारी शादी व्यवस्था से खुद ही सीख लें। हम बेस्ट मैनेज करते हैं अपनी शादियों में। सबसे सस्ती कहाँ सामान मिलेगा खरीद लाते हैं, सबसे बेस्ट फैसिलिटी कहाँ है ले लेते हैं। पर जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं किसी लार्जर प्रोग्राम को, तो वो जो मैनेजरियल स्किल्स हैं जो हर व्यक्ति में है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं, वो एब्सेंट है उस प्रोसेस में। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं, वैसे ही मैंने काफी समय ले लिया है और आशा है कि थोड़ा बुलंद आवाज बोल के जगाने की भी कोशिश रखी है मैंने, तो आप लोगों को कुछ न कुछ स्ट्राइक करेगा और यू कैन थैंक यू ऑल। Thank you so much, Mr. Varun. It was so nice. So अभी अपने जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो प्रोफेसर विवेक विजय हैं, जिनको मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आप सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। फिर भी वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। इन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशंस किए हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इंक्लूडिंग एजुकेशन, एंड इज ऑल्सो डायरेक्टर हैं एक स्टार्टअप में जो IIT में स्टार्ट किया गया है। सो आई रिक्वेस्ट हिम टू स्टार्ट हिज स्पीच। थैंक यू डॉक्टर आलोक। थोड़ा पंचायती राज से अलग हो जाते हैं, उन्नत भारत पे आ जाते हैं वापस। ये दो पार्ट ना ऐसे आपस में चल रहे हैं, एक पंचायती राज, एक उन्नत भारत, दोनों मिला करके करेंगे। कोशिश यही होगी। तो इसको कुछ कर दो ठीक, तो ये हो जाए। हाँ, एक एक्चुअली एक प्रेजेंटेशन जैसा ही है। प्रेजेंटेशन क्या कहें इसको, ये आप लोगों का काम है। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं उनने कुछ काम किया है उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत, और हम रीजनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हैं, तो हमारा ये काम है, जिम्मेदारी है कि उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो ये कुछ काम है जिनको इकट्ठा किया है, नॉट लिमिटेड टू दैट। हाँ, शेयर कर लो जो करना कर लो। तो बट ये बहुत थोड़ी सी स्लाइड्स हैं जो यहाँ पे हैं। कुछ लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, दाऊलाल जी बैठे हुए हैं, कि हम लोग जा करके देखें, और डॉक्टर मधु जी हैं, बहुत अच्छे से लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हम लोग जब इस उन्नत भारत अभियान की इस मीटिंग की चर्चा हुई थी, तब हम लोगों ने बैठ करके, जो मैं सुबह बात कर रहा था, हमने बैठ करके ये सोचा था कि हम वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं। सब लोगों को आजकल तो बहुत आसान हो गया ना, हमने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज कर लिया, पर वो वर्चुअल मीटिंग की कहानियां भी हमने बहुत सारी सुनी। हमारे एक प्रोफेसर सुना रहे थे, मैं वरुण जी को बता रहा था, हमारे एक प्रोफेसर सुना रहे थे, वो नांदेड़ में क्लास ले रहे थे, 8 बच्चों की क्लास थी और वो वर्चुअल क्लास थी। तो वो वर्चुअल क्लास में उन्होंने क्वेश्चन पूछा पहले बच्चे से, तो उसका जवाब नहीं आया, तो उन्होंने कहा ये नहीं होगा, दूसरे से पूछा, उसका भी नहीं आया। फाइनली वो तीसरे चौथे बच्चे पे पहुंचे, तो उसका जवाब तो किसी का भी नहीं आ रहा था, कोई था नहीं, पर वो एक का माइक ऑन करके उसकी मम्मी बोले वो तो अभी नहाने गया है, थोड़ी देर में आएगा। सो वो तो हमको लगा कि हम वर्चुअल अगर करेंगे सेशन तो हमारी स्थिति उन्नत भारत अभियान से पता नहीं हम कहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए, और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने सबने आकर के। और वरुण जी, एक बात तो तय है कि आपके ट्रेनर्स, आपके ट्रेनिंग लेने के लिए जैसे भी लोग आते होंगे, हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर रियली एक्सीलेंट पीपल, दे कम। हाँ, ये ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आए, इनफैक्ट ये तो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। शेयरिंग ऑफ नॉलेज सेशंस में हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, वो महत्वपूर्ण है। तीन टीयर की हमने उन्नत भारत अभियान में की योजना की बात की। एक है जो हमारा इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, जो गांव है, और गांव के भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए जिनके साथ में हम लोगों ने मिलकर के भी काम किया। वो जब तक हमको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देंगे,
हम कितना भी इनोवेशन कर ले बेकार हो जाएगा। एक कहानी बताता हूँ मैं अपनी खुद की। उन्नति करके एक ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी बॉम्बे में, हमने वहीं से शुरू किया। आकांक्षा, यू नो इट, इट्स देयर। सो मैं वहाँ स्टूडेंट था आईआईटी बॉम्बे में, और वहां पे हम लोगों ने पास का एक वो कल्याण करके एक जगह है बॉम्बे के पास में, वहां गए और बहुत एंथुजियास्टिक थे, करेंगे गांव के लिए कुछ तो करेंगे और उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो सब बहुत था। तो हम गए वहां पे और जाकर के देखा, उनको पूछा, बोले यार यहाँ दिक्कत क्या है। तो उस समय पे तो टॉयलेट्स हुआ ही नहीं करते थे, तो बहुत पहले की बात है, तो वहां पे नहीं थे। तो किसी को पूछा, बोले अच्छा सर्वे कर रहे थे हम अपना। पर सर्वे आप जब करते हैं तो सामने वाले का परसेप्शन नहीं जानते, आप अपने प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर मिलता है। प्रश्न किसने किया? मैंने। जब प्रश्न मैंने किया है तो उत्तर उसी का मिलेगा ना, उसका अपना नजरिया क्या है उसका, तो उसको जानने का कैसे मौका है। अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने पूछा कि भाई चाय पी कि नहीं पी, अब उसने कहा कि नहीं पी, उससे मैं कैसे मान लूं कि उसने चाय नहीं पी ये बोला, इसका मतलब ये है कि उसको भूख लगी है। ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है ना, प्रश्न तो मेरा था। तो जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो फिर उन्होंने भी वैसा उत्तर दिया। हमने पूछा अच्छा टॉयलेट वगैरह है, बोले नहीं है। तो हमारे साथ एक एनजीओ थी, हमने डिसाइड किया कि अच्छा आप लोग यूज करोगे, बोले बिल्कुल करेंगे। तो हमने जाकर के वहां पे 3-4 टॉयलेट्स बनवा दिए, एनजीओ वालों ने पैसा दे दिया और हो गया काम। वहां गए और बढ़िया से उसका इनॉग्रेशन भी हो गया, सब लोग गए, बहुत मजा आया। हमको लगा यार कुछ तो बढ़िया कर लिया जीवन में। तो ऐसे फिर 1 साल के बाद में वो लगा यार वहां जाकर के आते हैं, बीच में तो जाना आना हुआ नहीं। 1 साल के बाद में वहां पे गए तो देखा तो वो उनके 3 ऐसे हमने बनाए थे और उनके बाहर ताला लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। हमने कहा यार ये लॉक, हमको ऐसा लगा कि किसी ने किसी अपना बना लिया इसको, वो 3 लोग होंगे जो ऐसा अपना बना लिया। तो फिर वो उसके एक गांव के एक लड़के को पूछा कि यार ये क्या, इस ताला किसने लगाया हुआ है। बोले ये तो ताला वो ऐसे 3 लोगों के नाम बताए तो वही यूज करते हैं इसको। बोले नहीं वो यूज नहीं करते, हमारे यहाँ तो क्या है बारिश बहुत होती है ना, तो वो पशुओं के खाने वाला जो भूसा है वो गीला हो जाता है। अब उनके लिए कमरे नहीं है, करें क्या, ये तीनों कमरा बना लिया, उसमें भूसा भर लिया। ये बेसिक मुझे तब से समझ में आया उन्नति का मतलब क्या होता है। हमको ऐसा लगा कि अगर हम गांव में लोगों के पास नहीं जा करके बैठेंगे तो हम किसी भी कमरे में बैठ करके विकास की परिकल्पना कर ले, वो कल्पना से परे, वो कल्पना ही होगी। वो हमारे सिद्धांत हो सकते हैं पर वो वहां की न तो आवश्यकता को समझ पाएंगे और न उन लोगों के साथ वास्तव में काम कर पाएंगे। गांव वाले बैठे हुए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं वहां से, इसमें स्लाइड्स हैं थोड़ी सी, मैं बता दूंगा, पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, रियली बात करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग सब कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है वो निश्चित रूप से कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम दूसरे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स को भी अपने साथ जोड़े। हम कल विकास आनंद जी से बात कर रहे थे, जो आईएएस ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी सुबह प्रेजेंट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई आप 1 तक पहुंच गए, अब 1 की जिम्मेदारी है कि और आगे तक पहुंचे, क्योंकि गांवों को जोड़ने के लिए जो गांवों के विद्यार्थी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और वो तो हर कॉलेज में है, तो जहां जहां भी हम पहुंच सकते हैं वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ये सेटिस्फैक्टरी है, जितना सा टाइम हम लोग इसके लिए निकाल सकते हैं वो निश्चित रूप से हमको सेटिस्फेक्शन देगा। हम कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। और वो अगर उन लोगों के पास जाकर के बैठेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग, एक एग्जांपल देता हूं मैं, हम लोगों ने काम किया, सुबह में चर्चा भी कर रहा था, ये धिंगाना गांव है, उस समय गांव था, पंचायत नहीं थी। ये इन सब लोगों के साथ में हम जाकर के और काम करना शुरू किए। तब आईआईटी का टेम्पररी कैंपस सिटी में हुआ करता था, कुछ विद्यार्थियों की ऐसे टीम और हम लोग सब जाते थे जाकर के। और जब वहां गए तो 6 महीने के बाद में ये बीरबल जी वगैरह बैठे हुए, मैं मतलब कहीं कोई एग्जीगरेशन वाली बात नहीं कर रहा, और इन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूँ, अब तो अंग्रेजी भी नहीं है, जो समझ में भी आ जाएगी। तो वहां पे गए तो 6 महीने के बाद में इनके साथ में हम लोगों ने ये सुना कि उन लोगों ने कहा कि हाँ ये आईआईटी वाले आए पर सावधान रहना, जमीन वमीन नहीं हड़पने, पढ़े लिखे लोग हैं ना। ये गांव के अंदर 6 महीने के बाद का परसेप्शन था। तब तो हमको ऐसा लगा कि अगर मान लो हम 6 महीने या 1 साल तक जाते हैं और लोगों को हम फिर ये कहते हैं कि हमको डेटा एक्चुअल नहीं मिल रहे, तो हम गलत फहमी में कि हमको पहले दिन जाकर के मिल जाएंगे। बहुत बड़ी गलत फहमी। हमको लोगों के साथ में जाकर के बैठना पड़ेगा, हमको लोगों के साथ में जाकर के खाना खाना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी, तब जाकर के शायद वो हमारी बात को समझ सके। अब होगा क्या, हम तो जा नहीं सकते। अगर मान लो 6 महीने मुझे केवल डेटा कलेक्शन में लग गया तो फिर मुझे तो आईआईटी ने हायर ही मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए किया है, मैं तो फिर डेटा कलेक्शन में लग जाऊंगा, तो हो गया मेरा काम। फिर शफकत जी के साथ में और वरुण जी के साथ में जब हम बैठे तो ये डिसाइड किया कि नहीं, हम उस वाले प्रोसेस को और थोड़ा सा इजी बनाए। और इजी बनाने के लिए अब हम लोगों ने इसको 3 टियर बनाए
एक तो हम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए जिसमें हम लोग सब फैकल्टी मेंबर्स हैं, और दूसरा चैनल है जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके साथ में जुड़े हुए, जो ग्राम पंचायत में बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ में हम वहां जाकर के किससे बात करें, तो वो जिससे बात करनी है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो ग्राम पंचायत के लोग हैं, और वो फिर गांव के लोगों के साथ में हमको कनेक्ट करेंगे। तो ये हम लोग कुल मिला करके योजना बना रहे हैं। और वेस्टर्न राजस्थान में अभी तक का जो काम हुआ है मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरीके का प्लान है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ में भी यहाँ पे मिलेंगे। शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोगों के साथ में भी हमारा चैनल अच्छा बने, तो हम हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। क्योंकि ये हमेशा से मैंने इनको क्वेश्चन वही पूछा था कि मैं एज ए फैकल्टी मेंबर किसी गांव में जाना चाहता हूं, मेरे अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा है, पर मैं जाके वहां किससे बात करूं, मुझे क्या पता कौन आदमी बात करे, और वो जो पहला आदमी पहली बार मिला वो तो दूसरी बार मिलेगा ही नहीं, तो फिर दूसरी बार में नया आदमी आ गया, उसको नए को समझाओ। तो फिर इनने उसको और ईज कर दिया हम लोगों के लिए कि वहां पे जो बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, वहां पे जो बैठे हुए बीडीओज हैं या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर वो आसान हो जाएगा। कुछ एक काम ये मैं बात नहीं करूंगा, ये सुबह प्रोफेसर विवेक कुमार ने समझा दिया हमको किस तरीके से उन्नत भारत अभियान की ये संरचना है, पूरा स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना हुआ है। हम आईआईटी जोधपुर रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन है, राजस्थान को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक 11 जिलों का ये जो एक क्लस्टर है वेस्टर्न राजस्थान के नाम से, ये आईआईटी जोधपुर के पास में है। इसी तरीके से एमएनआईटी जयपुर के पास में 11 जिलों का एक क्लस्टर है, और इसी प्रकार से एमपी यूएटी उदयपुर के पास में है। तो हम रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट हैं। उन्नत भारत अभियान की जो भी कुछ गतिविधियां होती है उसमें किस प्रकार से हम 1 माइल आगे जा सकते हैं, किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को, देखिए जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मुझे लगता है मैं जब यहाँ आया था, हम लोग 2010 की बात करें तो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर थे, उनको पूछा, मैंने कहा सर आप कैसे डिफाइन करते हो टेक्नोलॉजी को, तो ये सिंपली सेड कि मैंने कहा सर रिलेवेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को क्या किया जा सकता है, लास्ट पर्सन कनेक्टिविटी के लिए बात करते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का मीनिंग है किसी की लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई योजना अगर आपकी काम कर रही है तो उसको टेक्नोलॉजी बोल दो। तो हमने कहा एग्जांपल दे करके बताओ, तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि बोले वो जो झाड़ू होता था ना ऐसे, तो वो महिला झाड़ू लगाती थी तो उसके लिए बैठती थी, किसी एक आदमी के दिमाग में आया और उसने उसके ऊपर डंडा फिट कर दिया, तो बोले वो जो टेक्नोलॉजी हुई ना वो उसकी लाइफ को आसान कर दिया। दिस व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो वो हमारे सबके दिमाग में हो सकती है, उसमें आईआईटी की जरूरत ही है ऐसा थोड़ी है। बड़े कुछ काम होंगे तो हो सकता है कुछ अच्छे स्टूडेंट यहाँ के जो लोग उसके एक ग्रुप के रूप में काम करेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अदरवाइज छोटे छोटे स्तर पे हम चाहे एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोगों ने यहाँ पे एक टेलीमेडिसिन का काम किया, डॉक्टर सुमित कालरा बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको टेक्नोलॉजिकली कनेक्ट करने का काम किया। हमने बहुत सिंप्लीफाई किया उसको कि हमने 40 गांवों के एक क्लस्टर में कुछ डॉक्टर्स करना चाहते थे कोविड के टाइम पे काम, पर उनको भी एक्सपोज होने का डर था, वो भी मरीजों से नहीं मिलना चाहते थे। उधर मरीज गांव में बैठा हुआ है, वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा। एक डेटा जरूर आपको देता हूं, ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति इलाज के लिए केवल ट्रेवल करने के लिए 100 रुपीज खर्च करता है हिंदुस्तान में, दवाइयों के लिए तो दूर की बात है। तो उसको गांव वाले आदमी को आने के लिए भी 1 दिन लगता है, पैसा भी उसका लगता है। तो वो कैसे आए, तो हम लोगों ने कोशिश करके और गांव के जितने प्रतिनिधि उनके साथ में मिलकर के सिंपल काम किया। डॉक्टर्स को बोला कि भाई आपके पास में आप अपना टाइम दे दो, टाइम शीट दे दी, और उस टाइम के अकॉर्डिंग उनको वहां हमारा प्रतिनिधि कॉल कर लेता था, वो व्हाट्सएप के थ्रू सीधा कनेक्ट कर देता था उनको। शील्ड वगैरह के हिसाब किताब से हमने वो पूरा काम किया, सेफ्टी का बहुत सिंपल काम हो गया। डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, वहां पे वो मरीज बैठा हुआ है, उसको अगर एक पेशेंट को अगर डॉक्टर देख ले तो पेशेंट का आधी तसल्ली तो वैसे ही हो जाती है, वो तो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, और बाकी का काम फिर भी दवाइयां कर देती है। तो ये छोटे छोटे से काम हम लोग कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत। ये जो मैंने बताया, ये 11 जिले हैं, इस समय पे 45 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बट इसको ग्रो करना है, इस नंबर को ग्रो करना है, केवल नंबर की टर्म में नहीं, वास्तव में क्वालिटी की टर्म में, कि हम लोग आगे बढ़ सकें। 205 विलेजेस तक अभी तक हम लोग पहुंचे हैं, आप सब लोगों के माध्यम से। आप सब लोगों ने जो काम किया वो उसका रिफ्लेक्शन ये है। ये एरिया है टोटल प्रपोजल्स की सुबह बात कर रहे थे विवेक सर, वो 21 प्रपोजल्स इनफैक्ट यहाँ से सबमिट। हाँ, अगर एरिया में देखेंगे तो आधा राजस्थान है, बिल्कुल।
मुझे पता है वरुण जी क्या सोच रहे होंगे। ये हमारे वो फैकल्टी मेंबर्स जिनकी बात मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इन सब लोगों ने मिलकर के अलग अलग जगह पे जाकर के कोशिश की है। खास करके पिछले समय में जो कुछ वर्क हम लोग कर पाए हैं उसमें डेफिनेटली आप सब लोग भी परिचित हैं, जो लोग पुराने जुड़े हुए उन्नत भारत अभियान से। आनंद, डॉक्टर आनंद प्लापल्ली ने अपना बहुत सारा समय उसके लिए दिया है। निर्मल बैठा हुआ है, वो सब लोगों को कोऑर्डिनेट करने का काम उसने किया है। बट बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो मेंटरिंग करते आए हैं, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं। और अभी ये लिस्ट को हमने, ये पुरानी चूंकि चली आ रही लिस्ट है और वही मैं यहाँ पे रखना चाहता था, अभी की लिस्ट एक स्लाइड में आएगी नहीं, बहुत सारे लोग हो गए हैं। सो वी हैव अबाउट 34 फैकल्टी मेंबर्स हु आर रेडी टू मेंटर इंस्टीट्यूशन, 34 फैकल्टी मेंबर, 82 स्टाफ मेंबर्स जो आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। IIT से स्टूडेंट्स तो हैं ही, उनके साथ में जुड़े हुए, और वो सब सारा काम कर लेंगे। ये कुछ एक एक्टिविटीज हैं। ये एक्टिविटी ये झुंझुनू से है, डॉक्टर मधु जिनका मैं नाम ले रहा था, उनकी गाइडेंस में वहां पर हम लोगों ने वाटर फिल्टर वगैरह इंस्टॉल किए हैं स्कूल्स में, विलेजेस में, कुछ काम जो वहाँ। ये सुल्ताना से हमारे चंदन सिंह जी यहाँ पे बैठे हुए, वहाँ पे हम लोग गए थे, कुछ रिलेटेड टू लाइवलीहुड, जो रोप मेकिंग मशीन लेकर के गए थे वहाँ पे। बहुत एंजॉयमेंट, हम लोगों को भी बहुत आनंद आया। और SSPV का जो छोटा सा मॉडल है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। ये वहीं का पीतेवाला का, ये मैथमेटिक्स लैब, इसके बारे में मैं अगले सेशन में बात करूंगा, जो हम लोगों ने एजुकेशन में एक इनोवेशन किया है टीचर्स के साथ में मिलकर के। ये लंपी के समय पे वैसे तो ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत थोड़ी सी वो स्लाइड्स हैं जिनका हम लोग ऐसे ही वो कर पाए, कंपाइल। अदरवाइज वर्क बहुत सारा हुआ है, बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं। कितने लोगों को उसका लाभ मिला होगा पता नहीं, पर मतलब प्रयास हम लोगों ने पूरे किए। ये इधर की तरफ डॉक्टर दाऊलाल जी आप हैं, आपके ही वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया था। घर घर बागवानी के लिए ये हर आंगन खेती, ये इनिशिएटिव IIT जोधपुर का, जिसके माध्यम से ये फोटोग्राफ, ये नांदिया कला के हैं मेरी, हाँ नांदिया कला, हाँ वहाँ पे ये किचन गार्डन शुरू किया है। ये टेक फॉर सेवा समिट जिसके बारे में सुबह बात कर रहे थे प्रोफेसर विवेक, ये भी ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने ऑनलाइन ही इसको, इनफैक्ट कोविड के इमीडिएट बाद में, बट ऑनलाइन ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें फिर उनको अवार्ड दिए, टेक फॉर सेवा, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट। ये उन्नति एक्सपो में RCI के माध्यम से कुछ जो काम हुए हैं वेस्टर्न राजस्थान में, उन्हें बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आपके माध्यम से आई थी उसको हमने दिल्ली भेजा था, उन्होंने उसको वेट करके और कुछ को वहां डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बुलाया था। तो ये दो छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यस, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ, आप लोगों में से भी कुछ थे उसमें, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ UGC सेंटर है MGNRC का, उसमें उस प्रोग्राम के अंदर हमने जो फोकस किया था वो रूरल डेवलपमेंट में ही किया था। इनफैक्ट उसकी एक टीम ने नादिया कला विजिट भी किया था, यहाँ से 35 किलोमीटर से वहां पे जाकर के, और ये फोटोग्राफ वहीं का ही है, ये जो फर्स्ट फोटोग्राफ है। इनफैक्ट ये सरमन साहब आपको खुशी होगी देख करके क्या, हाँ ये RCI सेशन एट IIT जोधपुर, यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना हाउसकीपिंग स्टाफ है प्लस आसपास जो लोग रहते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे बुला करके रोप मेकिंग की डिफरेंट लाइवलीहुड के लिए। इनफैक्ट आप लोगों को ये जान करके खुशी भी होगी, और कल ये हम लोग देंगे भी सही, ये जो पोर्ट रखा हुआ है सामने, हाँ ये यहीं का बना हुआ है और इन्हीं लोगों ने बनाया है, ये आसपास के जो लोग हैं उन्हीं ने, और ये सब लोगों के लिए बनाया है, सब लोगों को ये दिया भी जाएगा यहाँ से। तो वो उस तरीके की ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं। ये रूडिया कला में ये वही रोप मेकिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ प्रोजेक्ट है प्रोफेसर आनंद का, उसके अंतर्गत ही काम चल रहा है। ये भी वही पास में गांव जो है नांदिया कला। सरपंच साहब आपके फोटोग्राफ ज्यादा आ गए इसमें। ये मथानिया विलेज, मथानिया में रोप मेकिंग एक्टिविटी, और ये जो प्रोडक्ट है ये उनने ही बनाया, जो वहां पे जिनको हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग का ही असर है पूरे तरीके से, उन लोगों को भी, हम लोगों का एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ सुल्ताना में जब हम गए थे वहां पे पीथेवाला के पास, तो वो वहाँ रोप मेकिंग सिखा रहे थे, तो एक इनके गाँव के बुजुर्ग आए और वो शायद पहले से बनाते थे, हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत लोग बनाते हैं उसको, तो बोले मैं इसको बना सकता हूँ इमीडिएटली, तो उन्होंने
थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल लिया और उसको बना दिया फटाफट से, और वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी। तो उनको मैंने ऐसे ही पूछा कि आपको लग रहा है कि हमारी मशीन से फायदा होगा? बोले हाँ, आपकी मशीन से ये अब बहुत जल्दी बन जाएगी। हमको ऐसा लगा कि एक व्यक्ति जो वहां है, ऐसा नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ में कमी है, पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये शायद उसको अपलिफ्ट करने का काम कर सकती है। तो लगा कि नहीं, वास्तव में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल है। हम लोगों को भी पता नहीं होता जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बट वो उसका मीनिंग आगे जाकर के निकलता है। ये भी रिसेंट डेवलपमेंट है। ये डॉक्टर राजकुमार है, यहीं से पीएचडी स्टूडेंट है, पीएचडी पूरी हो गई। डॉक्टर राजकुमार पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर है, और अभी थोड़े दिन पहले जीत इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पे जी फिल्टर की जो बात सुबह कर रहे थे, वो जी फिल्टर बनाने की ट्रेनिंग इन सब लोगों को दी गई। केवल फिल्टर इंस्टॉलेशन नहीं, बनाने की ट्रेनिंग भी लोगों ने दी। ये बहुत सारे अलग अलग काम हैं। डॉक्टर सुमित कालरा यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये फैकल्टी मेंबर हैं कंप्यूटर साइंस में। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से कोविड के टाइम पे लोगों से कनेक्ट करने का काम इन्होंने किया है, वो रियली कमेंडेबल जॉब है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनने बहुत अच्छा काम किया कोविड के टाइम पे भी, अदरवाइज भी, पहले भी और बाद में भी। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे रखा नहीं है, पर आप लोग फोटोग्राफ्स भेजेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रख लेंगे। और ऐसा मत सोचिएगा कि जो फोटो नहीं है वो यहाँ पे नहीं है। वो सब लोग आप जो कर रहे हैं वो बहुत मीनिंगफुल है। हम लोग उसको आगे के लिए और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे। ये 3 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए गए थे वो सब लोगों ने लिख लिए हैं, और इससे हम लोग रोड मैप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। Thank you, Dr. Vivek. So now almost we have completed all the speakers, and now we also have with us Dr. Prasanjit Tribhuwan, जो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इनका जो काम है वो मेनली हिमालयन स्टडीज़ में है, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है उत्तराखंड एंड अदर एरियाज। ये पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन एडवांस स्टडीज़ शिमला के फेलो भी रह चुके हैं। सो एनीवे, अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट जा रहे हैं, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट में, ये फ्लोर सबके लिए खुला है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, और आप इंडिकेट भी कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन किससे है, आवर पैनल में किससे वो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सो वी विल टेक 4-5 क्वेश्चन एट लीस्ट। सो एनी कोई पूछना चाहेगा? हेलो सर, मैं ये चाहता था कि आप लोगों ने जो पीपीटीज बना रखी हैं वो प्लीज हमारी जो मेल आईडीज आप लोगों के पास हैं उन पे सेंड करवा दी जाए, ताकि हम उन पे आगे काम कर सकें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे से सारे प्रेजेंटेशन दिखाए, विवेक सर, और आपसे पहले जो वरुण सर है, बहुत एंटरटेनिंग तरीके से और सत्य चीज़ों को सामने रखा। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ विवेक सर से कि आपके अभी प्रेजेंटेशन में कुछ कॉलेजेस के नाम थे, तो हमारे कुछ कॉलेजेस हैं, उनको किस तरह से आपकी इस योजना से जोड़ा जाए, इसका मार्गदर्शन आप करें प्लीज। इसमें इनफैक्ट जो कॉलेजेज यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहूँगा अभी मैं उनको, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके नाम इसमें नहीं है लिस्ट में, या यूबीए की लिस्ट में नहीं, उन सब कॉलेजेज को हमको जोड़ना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। यूबीए की वेबसाइट है, फिर भी हम लोग बता देंगे एक बार। यूबीए की वेबसाइट पे जाकर के आपको एनरोल करना है, केवल वो अपने आप सूचना हमारे पास आ जाएगी, हम लोग उसको यहाँ से रिकमेंड कर देंगे, तो वो सूचना दिल्ली चली जाएगी उन्नत भारत अभियान के पास में, और वो जैसे ही वो सूचना जाएगी तो आप एनरोल्ड हैं। मतलब उसमें एनरोलमेंट में बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। वो जैसे ही आप एनरोल हो जाते हैं तो पहला जो टास्क है वो सर्वे का है। सर्वे का नहीं है, मतलब वो विवेक कुमार जी ने सुबह बता दिया था, सर्वे ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो केवल गांव के साथ में कनेक्ट होने का है। तो ये अपेक्षा की जाती है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो एनरोल हो वो अपने आसपास के 5 विलेजेज को आइडेंटिफाई कर ले, 5 गांवों को,
और उन 5 गांवों के नाम उसके ऊपर फिर वो दे दे। फिर उसके हिसाब से सबसे पहले एक इनिशिएटिव के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे मान सकते हैं उसको, 50,000 रुपीज का फंड वो कॉलेज को ट्रांसफर कर देते हैं, जस्ट वही फैसिलिटेट करने के लिए कि आपको, ताकि गांव में अगर जाना है तो डिफिकल्टी नहीं है। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, वो पे एक बार प्रेजेंट कर। मैं ये कहना चाह रहा था सर, जैसे बीकानेर जैसा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और संभाग स्तरीय भी है, वहाँ पे भी कुछ कनेक्टिविटी मुझे नहीं लगी, क्योंकि मैं भी पहली बार आपके से कनेक्ट हुआ हूँ। तो हमारा विश्वविद्यालय भी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, तो आप उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं ये भी बताइए, ताकि आपका काम आसान हो जाए और हम लोगों को भी थोड़ा आपसे जुड़ने का फायदा मिले। मैं चाहता हूँ बीकानेर विश्वविद्यालय जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, उसको भी आप किसी तरीके से जोड़िए। मुझे लगता है हम लोग इनसे वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट शवकत जी का एक वो भी था सजेशन की, हम अलग अलग जगह में इसको कर सकते हैं इस तरीके का, क्योंकि सब लोगों को एक जगह पे बुलाना संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ किसी को नॉमिनेट करते हैं तो वो एक अच्छी बात हो जाएगी और हमारा कार्य भी बहुत सरल हो जाएगा। ये मैं आपको इसका जवाब दूं, बीकानेर का जवाब मेरे पास उपलब्ध है इसलिए दे देता हूं। तो बीकानेर संभाग में हम बहुत जल्दी एक बैठक करने वाले हैं और उसके पहले हम सर को इन्फॉर्म कर देंगे और मैं सर को भी लेके जाऊंगा और हम आपके लिए तैयार हैं। तो आप उसके पहले जो अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन और जो भी व्यक्ति है जिसको हमको बुलाना है वहां पे, क्योंकि ये हम पंचायती राज विभाग के तहत और आईआईटी के साथ मिलकर करेंगे, आप विजय सर को ये डिटेल दे दें, ताकि जब बीकानेर संभाग की दे दें आप पूरी, क्योंकि हम संभाग वाइज करेंगे उसको। विश्वविद्यालय बीकानेर संभाग में कार्य। बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं इसके लिए। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, हाँ सर, मेरा उन्नत भारत स्कीम है सर, पहली बार सुनने में पता लगा, अभी 1-2 दिन पहले पता लगा, आई एम नॉट अवेयर। मेरा सवाल यही था, जो एक्सटेंशन था पहले जो पूछा गया था कि पार्टिसिपेटिंग, हाँ मैं डॉक्टर पूनिया, एसोसिएट प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एम्स जोधपुर, बस ये जानना चाह रहा था पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का स्पेसिफिक रोल क्या है। आपने बताया कैसे पार्टिसिपेट एनरोल कैसे करना, दैट मेक सेंस, बट क्या एग्जैक्टली रोल है? एंड फर्स्ट एंड सेकंड, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर कोई बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या? हाउ वन कैन डू? जी सर, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल, जैसा मैंने कहा कि अभी 5 विलेजेस को कनेक्ट करने की बात है, कनेक्ट करना है, फिर उनमें से हो सकता है कोई एक विलेज में हम ज्यादा अच्छा काम कर सकें। वरुण जी जो कह रहे थे कस्टमाइज्ड करना पड़े, हर जगह के अपने अपने इंडिविजुअल का रोल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर पाल हुआ करते थे कम्युनिटी मेडिसिन के, और वो उनको हम कई बार साथ में दिघाना लेकर के गए, डॉक्टर पाल मेडिकल कैंप वगैरह जो हमने लगाए, तो बहुत सारे विलेजेस जो हैं वहां पे हम इंडिविजुअल और एज ए डॉक्टर तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे तो डायरेक्टली हमारा कोई इंटरवेंशन विलेज में होगा सीधा सीधा, ऐसा मुश्किल है, पर डॉक्टर का तो सीधा सीधा हो सकता है। वो तो वो वहां हो तो बहुत सारी लाइन। यहाँ हम भोपालगढ़ में भी हम लोगों ने उन्नत भारत अभियान के माध्यम से कैंप लगाया था। एक ये जो प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं ना, छोटे छोटे SDGs की बात करें, उसमें जैसे हमने एक प्रोजेक्ट लिखा बहुत छोटा सा कि आसपास के गांवों में हम कनेक्ट करेंगे हेल्थ के लिए। उसमें यहाँ पास का एक गांव है भोपालगढ़ तहसील में, वहां हमने रुड़िया कला, वहां पे कैंप लगाया, तो कुछ डॉक्टर्स की जो टीम थी वो चली गई वहां। डॉक्टर्स अगर वहां चले जाते तो अपने आप लोगों को विश्वास होता है, वो लोग आ जाते। तो उस माध्यम से हम इंडिविजुअली तो हम अपनी कैपेसिटी में बहुत सारा ऐसा वो कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपके स्टूडेंट्स के माध्यम से। तो डॉक्टर पाल जब थे तो हम लोगों ने बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी इसमें, कम्युनिटी मेडिसिन तो आपका है ही पार्ट। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, मैं एक संस्था से का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मंजरी संस्थान। हम लोग पंचायतों के साथ काम करते हैं। आज सुबह से जो चर्चा हो रही है, खासकर 3 दायरे हमने बात की। एक तो उन्नत भारत अभियान, लोकलाइजेशन ऑफ SDGs, और फिर अभी थोड़ी सी चर्चा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की भी हुई। तीनों में महत्व इसका है कि कैसे हम ग्रास रूट प्लानिंग को मजबूत कर सकते हैं। डॉक्टर चौधरी ने बहुत अच्छे से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की, पर जो एक प्रैक्टिशनर के रूप में चुनौती हमारे सामने है कि हम इंक्लूसिव कैसे बनाएं।
जेंडर तो एक डायमेंशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग है, और भी बहुत सारे बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, बहुत सारे लेयर्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब डेटा कलेक्शन है या जो सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं, या मे बी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कुछ ढूंढ रहे हैं इस असमानता को कम करने के, उस समय हमारा जेंडर एंगल होता है क्या? मतलब हम किस तरीके से हम समझेंगे इस चीज को कि ये किस हद तक समाज की असमानता को दूर करेगा ये सोल्यूशन? तो वो यदि प्लानिंग में आए, या हमारे डेटा कलेक्शन में आए, या एटलीस्ट साइंटिफिक थिंकिंग में आए, जब हम सोच रहे हैं, तो शायद विल हैव बेटर आंसर्स एंड विल रीच टू अ बेटर आउटकम। थैंक यू। इफ यू हैव समथिंग देन प्लीज शेयर। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? सॉरी। मनीष सिंह। मनीष जी, अच्छा, तो मैं आपको हमारे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। एक तो हम जो ये आर्टिफिशियल जो डिवीजन बनाते हैं ना, साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, इंजीनियर, सोशल साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको मीनिंगफुल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना है तो सारों की टीम एक साथ होनी चाहिए, तभी जाके आपकी टेक्नोलॉजी इफेक्टिव हो सकती है। और दूसरी बात, आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी वहां पे यूज कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेनिंग एक सोशल साइंटिस्ट लाता है फील्ड पे, वो आप कितना भी सोचिए एक इंजीनियर या सोशल या साइंटिस्ट नहीं ला सकता। और दूसरी बात, एक ट्रेनिंग जो टेक्नोलॉजी वाले जो बैकग्राउंड के जो लाते हैं वो फील्ड पे, वो सोशल साइंटिस्ट सोच नहीं सकते। तो हमें जरूरत है एक टीम बनाने की, और उससे मैंने देखा है आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, एनी अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग क्लास डिस्क्रिमिनेशन, वो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और आप, जितना मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, और आपका जो सॉल्यूशंस है वो काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। तो हमको टीमें बनानी है, और ऐसी टीमें बनानी है जो एक इंटरडिसिप्लिनरी, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम लोग आजकल बहुत एक फैशन सा हो गया है मल्टी इंटर वगैरह, पर वो काम करता है अगर हम प्रैक्टिस लेवल पे ये करें ना, तो वो काम करता है। और दूसरी बात, एज फार एज पेडागोजी इज कंसर्न, मेरे को बहुत लगता है कि जैसे पहले इंजीनियर जो है वो एमबीए करते थे, मुझे लगता है कि अगर अभी इंजीनियरिंग के बाद सोशल साइंस करे ना, अगर मास्टर सोशल साइंसेज में करे, तो हमें एक ऐसा इंडिविजुअल मिलेगा जो ऐसी इंटरवेंशन कर सकता है जो शायद से हमारे जो उन्नत भारत अभियान जैसे जो प्रोग्राम है इनको बहुत आगे लेके जा सकता है। सो दैट इज द थिंग कि हमको एक टीम बनानी पड़ेगी, और हमारे बीच में जो भी है, जब हम जो भी डिफरेंसेस है, कि जब हम बोलते हैं इसको तो सिर्फ टेक्नोलॉजी मालूम है, टेक्नोलॉजी वाले बोलते हैं इनको तो कुछ नहीं मालूम है, ऐसी जाके बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सारे, ऑल ऑफ अस हैव इक्वल ट्रेनिंग, ऑल ऑफ अस हैव वेरी गुड ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग को हमको फील्ड पे जाके अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत इफेक्ट होता है, और ये मैंने देखा भी अपने हाथों। थैंक यू। तो जब हम बात कर रहे हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हमें किस लेवल पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि एटलीस्ट हमें जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक्चुअल सिचुएशन हम जान गए, एक्नॉलेज कर लिया, उसके बाद हम इंटरवेंशंस प्लान कर सकते हैं। जब हम इंटरवेंशंस प्लान कर सकते हैं, जैसा मेरे कलीग प्रसन्नजीत ने कहा, हमें हर स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसे इंटरवेंशंस प्लान करें जिससे जो महिलाएं हैं गांव की, जो ऑलरेडी वो महिलाएं देखा जाए तो जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, पुराना जो इंडिजिनस नॉलेज है, उसको बढ़ावा देने का उनका हमेशा से काम रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया इन अ वेरी फॉर्मल वे, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट दैट्स नॉट द केस। सो वी नीड टू एक्नॉलेज एंड देन वी नीड टू स्टार्ट प्लानिंग द इंटरवेंशंस। अब जब हम इंटरवेंशंस प्लान कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो लोग हैं जिनके लिए हम इंटरवेंशंस प्लान करें, हम उनको उसका पार्ट बनाएं, एंड देन वी प्लान द इंटरवेंशंस एट अ वेरी लोकल लेवल। एंड जो इंटरवेंशंस होंगे वो भी बहुत कस्टमाइज्ड होंगे। जैसे अगर आप देखें तो जोधपुर के एक गांव होगा, उसमें आपको क्या इंटरवेंशंस चाहिए, थोड़ा सा जेंडर एम्पावरमेंट के लिए, या फिर आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए, वो कुछ अलग हो सकता है। आप जो जैसलमेर के लेटेस्ट से कुछ विलेजेस हैं जहाँ पे पॉपुलेशन थिनिंग हो रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उस माइग्रेशन को रोके, तो उनके प्रॉब्लम्स अलग होंगे। उनके प्रॉब्लम्स हो सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, कि वहाँ पे पानी नहीं है, और
ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वाज एग्रीकल्चर, अब वो नहीं है तो वो जा रहे हैं। और बिकॉज गांव के आदमी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही है। अब जब आदमी शहर में आ गए तो आदमियों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है, पर औरतों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो लेबर फोर्स है उससे बाहर आती गई है। अब हम देखें तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के फिगर्स हैं, दे आर नॉट वेरी एनकरेजिंग ओवर द ईयर्स। हमारी औरतें पढ़ रही हैं, धीरे धीरे पढ़ने के अंदर एनरोलमेंट रेट बढ़ रहा है, बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है माइग्रेशन भी। तो जैसा कि विवेक सर ने कहा, प्रसन्नजीत ने कहा कि हमें हर स्टेक होल्डर के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है जब हम इंटरवेंशंस प्लान करें। उसमें कास्ट रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्लान कर सकते हैं। जिनके लिए हम प्लान कर रहे हैं उनका सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसा मुझे लगता है। आई जस्ट रिक्वेस्ट, सॉरी, मैं जस्ट एक ऐड करना चाहता हूँ कि मैं जब ट्रेनिंग बोला, इट इज नॉट ऑलवेज लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दो हमारे यहाँ पे, एक प्रोफेसर विवेक विजय जी है और एक प्रोफेसर आनंद प्लापल्ली जी है। जो मैं देखता हूँ उनका इंटरवेंशन एक सोशल साइंटिस्ट टाइप का ही इंटरवेंशन रहता है। तो तो इट इज नॉट ऑलवेज दैट प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, बट जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, जो यूबीए के साथ जो है बहुत टाइम से, और इवन हमारे यहाँ पे जो सीटीएसजी है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ भी होता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम है और मैं इंडीड फाउंडेशन नाम की संस्था से रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हम लोग अभी 4 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा काम स्कूल्स के साथ रहता है। तो हम सारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके साथ काम करते हैं। हम बहुत माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट है उसमें। एडुमेसी के साथ भी हमने काम किया है, विवेक साहू जो है उनसे कॉन्टेक्ट है हमारा। सर हम ज़्यादातर वॉलेंटियर्स को उस काम में लगाते हैं और उनके साथ से ही काम आगे बढ़ाते हैं। मेरा सिर्फ सवाल नहीं, थोड़ा सा सजेशन आपसे भी चाहिए। जैसे विवेक सर ने बहुत ही बोल्ड अंदाज में बताया था, जब हम इतना अच्छा है और जब हम ऑफिशियल्स के पास जाते हैं इस काम को बताने के लिए, क्योंकि हमें हमारे डोनर मिल जाते हैं, हम काम करते हैं तो हमारा डोनर मतलब हमें पैसा भी दे देता है, हमारा काम भी चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिलता है कि हम जो एप्रिसिएशन के लिए जा रहे हैं, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया उनको वो मिल नहीं पाता है। तो उसका कुछ सॉल्यूशन या फिर ऐसा कुछ कोई प्रोटोकॉल या कुछ बना हुआ है जैसे बच्चों को थोड़ा एप्रिसिएशन मिले, ताकि आगे फिर हम किसी को और लेके जाए तो उनको ऐसे डिसरेस्पेक्ट ना हो और आगे वो हमसे जुड़ते रहें। इसलिए थैंक यू। जी, आई थिंक देखिए सोल्यूशन तो इमीडिएटली हमारे पास नहीं है, बट आई थिंक व्हाट वी कैन प्रपोज इज कि इस तरह का इंटरफेस, जैसे आज यहाँ कोशिश किया गया कि वी गॉट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टुगेदर। सरकार के लोग थे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, यूएन एजेंसीज हैं। इन प्लेटफॉर्म को हम थोड़ा और कोशिश करें कि इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो इंटरफेस मुझे लगता है ग्रेजुअली आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ाने में मदद करेगा। एंड देन आई थिंक दूसरा जो क्रिटिकल चीज होगा कि उन्नत भारत अभियान के तहत जब आप मिलके काम कर रहे हैं तो इस काम को हाउ डू बी डॉक्यूमेंट बेटर, जिससे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा पाए। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं किसी चीज को, केस स्टडी के फॉर्म में करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिकग्निशन यहाँ स्टैब्लिश नहीं करेगा बट नेशनली भी करेगा, क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम है। तो ये 2 चीज़ों पे फोकस करें। अगर हम इंटरफेस बढ़ाएं अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ में फोरम्स क्रिएट करके, और दूसरा काम को डॉक्यूमेंट करके शेयर करें, तो नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होगा इसका। थैंक यू। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, पर अभी जब मैं आज सेक्रेटरी साहब को लेके उधर गया, आईआईटी का ही प्रोजेक्ट है और मैं तो 3-4 बार चला गया वहां पे, तो अभी तो इवन हार्दिक थे भी नहीं यहाँ पे, तो मैंने एक्सप्लेन किया। देन सेक्रेटरी साहब को लगा कि मैं आईआईटी का ही व्यक्ति हूँ, मैं इतना कैसे समझ रहा हूँ टेक्नोलॉजी भाई। मैंने कहा सर मैं तो अरावली का डायरेक्टर हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या रोल है इसको बनाने में। फिर तो एक्चुअली क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को वैसे काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, पर आप क्या अलग कर रहे हैं थोड़ा सा। अभी 2 अक्टूबर को मैं आईआईटी में ही था, तब डायरेक्टर साहब ने ही एक बात कही कि
आधा एक घंटा रिफ्लेक्शन भी कर लें कि हम कर क्या रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी काफी इंप्रूव हो जाएंगी। और कुछ भी काम कर रहे हो आप, चाहे वो सफाई वाला सफाई कर रहा है, वो ये देखे कि उसने 7 दिन जो सफाई की उसमें 1 घंटा सोचे कि सफाई में तकलीफ क्या रही, क्या चीजें मैं इंप्रूव कर सकता, तो वहीं से आप चेंज कर लो। और जहां तक जुड़ने की बात है, आप सबसे पहले तो एक काम करें कि aravali.org.in पे जाएं और हमसे जुड़ें। हम राजस्थान में कैबिनेट डिसीजन के हिसाब से संस्था जगत की नोडल एजेंसी हैं हम, और कोविड के बाद में नीति आयोग ने भी हमको इमरजेंसी रेस्पॉन्स की नोडल एजेंसी बनाया है। तो अब आप हमसे जुड़े, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में कहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो हम अलग से एक सजग पहल डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं पिछले 3-4 साल से। उसका पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को हम विकास के काम में जोड़ पाए। जो बात डॉक्टर साहब ने भी कही कि बहुत सी बार इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इंडिविजुअल काम आ जाता है, तो हम ऐसा नहीं है कि एक कैटेगराइज कर लें कि हमारा तो काम ये एडवोकेसी सब तरह का काम है, तो उन्नत भारत में कैसे होगा। उन्नत भारत अपना बेसिकली एक ऑरा और एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप उन्नत भारत के साथ हो सकता है फिट नहीं होते हो, देयर आर सेवरल अदर प्रोग्राम्स आल्सो। जैसे आईआईटी जो व्यक्ति नहीं समझता, वो आईआईटी में सिर्फ कोचिंग करके ग्रेजुएशन में आना चाहता है, और आईआईटी में तो आप वेबसाइट देखोगे तो आपको पता चलेगा आईआईटी क्या क्या कर रहा है। तो इवन जिसको सब लोग जानते हैं उसको भी कोई नहीं जानता, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। तो वो मैं वहीं खत्म करूंगा कि माया है, बाकी सब ये ठीक है। हेलो, नमस्ते। दिस इज शांतनु फ्रॉम लोहिया कॉलेज चूरू। सर, जैसे अभी सुबह प्रेजेंटेशंस हुए, काफ़ी लोगों ने कुछ एग्जांपल्स बताए, जैसे एक जीपीडीपी ग्राम जो विकास डेवलपमेंट प्लान था, उसमें हमने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट ने रोड डिज़ाइन किया, पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। आईआईटीज़ में भी जी फिल्टर बना है, रोप मेकिंग मशीन्स बनाई गई हैं, टेक्नोलॉजी पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो बीइंग इन एकेडमिक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, मैंने जैसे भी बात कही कि आपने कि आप अदर्स को जोड़ो, तो मैं 5 साल से यूबी के साथ जुड़ा हूँ। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में बात की जहाँ मेरे साथी हैं। उनको जब समअप करना रहता है कि क्या करते हो, जनरली उनकी भाषा में क्या उखाड़ते हो, ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं कि ठीक है, गांव में जाते हैं और उनमें सर्वे करते हैं, आगे क्या करोगे। फिर जनरली मोटिवेटिंग, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए होता है कि नहीं, आपको फंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अदरवाइज उनको प्रिंसिपल से बार बार सेंक्शन लेना पड़ेगा। तो उनको कहा कि नहीं, 10,000 रुपये ही गाँव के मिलते भी हैं। तो मोटा मोटा जो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, जो मुझे भी लगता है ये चीज़ कि फ्रॉम ए नॉर्मल साइंस में, ये आपके आर्ट्स कॉलेज के, हमारे बच्चों के पास उतनी टेक्निकलिटी नहीं है कि वो डिज़ाइन कर सकें, वो जी फिल्टर बना सकें। तो उन बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं एज ए पीआई? इसके बारे में वैसे प्रसन्न जी ने एक अच्छी बात कह दी कि हम केवल टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा ऐसा ही नहीं है, लोग अब से सोच सकते हैं। अभी हम लोग आपके पास में बैठे हुए हैं दाऊलाल जी, इनका एग्जांपल देता हूँ। इनके यहाँ हम लोग गए थे और इन्होंने 11th-12th के स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर के बहुत अच्छा साइंस एग्जीबिशन प्लान किया। उसमें बाकी लोगों को बुलाया और उसमें से हम लोगों का सजेशन ये था कि ये जो लोग कर सकते हैं, अब 1-2 फैकल्टी मेंबर्स मिलकर के क्या इनके बनाए हुए मॉडल को इस तरीके से थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकते हैं कि उसको किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन माना जा सके। उन्होंने फाइंड आउट किए बहुत सॉल्यूशन, क्योंकि आसपास देखते हैं तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, पर वो सॉल्यूशन हो सकता है कि वो उतना फिजिबल नहीं हो उनके हिसाब से जो बना रहे। इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा और कर लिया, पर उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दी कि अगर उसको थोड़ी सी मेंटरिंग मिल जाए ना ऐसे स्टूडेंट्स को, तो वो फिर अपने आप एक प्रोजेक्ट के रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं कि उसको, चाहे जैसे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि ग्राम पंचायत से सपोर्ट लेकर के या किसी एजेंसी से सपोर्ट नहीं भी मिला तो हम लोग मिलकर के आपस में करेंगे। तो इस तरीके की छोटी छोटी मीटिंग्स जब तक हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एक बात तो है जो शायद हमारा अनुभव रहा हो, आप लोगों का रहा कि नहीं रहा मुझे पता नहीं, एक बात तो तय है कि अगर हम अपने फैकल्टी कलीग से बात करने लगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स के साथ बात करने लगे तो मोटिवेशन पक्का मिलेगा। क्योंकि हम लोग, वो तो फिर वही पूछेगा क्या उखाड़ा अभी तक 2 साल में, तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया, है ना। तो वो वाला जो प्रश्न है वो स्वाभाविक है, बट स्टूडेंट्स के साथ जब काम करते हैं लगता है कि नहीं यार, उनके चेहरे पे खुशी है, सेटिस्फेक्शन है, वो लोग, और वो
इनोवेशन जो शब्द है ना, वो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन से ज्यादा हमारी अगली वाली जनरेशन से आएगा। वो जब इनोवेटिव थिंकिंग और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स से हम लोगों को अच्छा लगा वो देख करके। मुझे लगता है वैसे अगर हम थोड़ा सा सोच सकें तो बढ़िया हो सकता है। थैंक यू। एक पहले मैं आपका जवाब दे दूं कि जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो उनके लिए करने के लिए इतना काम है कि सारे बच्चे चाहिए हमको। राज्य में हजारों स्कीम्स हैं जिनका अभी सेचुरेशन कवरेज नहीं है। आपकी ग्राम आजू बाजू गांव है, वहां कोई विधवा महिला है, विधवा पेंशन से जोड़ दें, फॉर्म तो भर ही सकता है वो। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अगर कोई श्रमिक है तो भारत सरकार की ई श्रमिक की योजना का फॉर्म भर दे उसका। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अपन को कोई चांद पे नहीं जाना। हमको तो उस गांव के जितने परिवार, अति गरीब परिवार या जो आखिरी व्यक्ति है, उसको संबंधित स्कीम जिससे वो जुड़ सकता है उसे जोड़ना है। मेरे आधार से फोन नंबर लिंक नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, जब भी मेरे आधार कोई स्कीम के लिए अप्लाई करता हूं तो मैसेज कहां जाता है मुझे पता नहीं। ये गांव वाले को इतना जोड़। मेरा खाता डोरमेंट हो गया, प्रधानमंत्री योजना में खुला था, मैंने कभी बैंक नहीं गया, केवाईसी नहीं हुई, खाता डोरमेंट हो गया, उसका खाता वापस ओके करवा दिया। मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की, मैं बहुत छोटे इनिशिएटिव की बात कर रहा हूं, पर इसका जो लाइफ में चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे चांद से ज्यादा पहुंचने से ज्यादा भारी होगा उस परिवार के दृष्टिकोण से। तो हम अभी पूरा एम्पल स्कोप इस पूरे प्रोसेस में है और इन बच्चों की ही जरूरत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी वाला तो व्यस्त बच्चा है, उसको तो माँ बाप का भी प्रेशर है कि झटपट कैंपस इंटरव्यू हो के भैया बढ़िया नौकरी लो और जाओ। और ये बच्चा तो मेरा गांव में अवेलेबल है। तो ये हमारा अलग से प्रोग्राम भी है अरावली का, जिसमें हम प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऐसे ही जो लोकल आर्ट्स कॉलेजेस हैं उनके बच्चों को तैयार करते हैं एज ए सोशल साइंटिस्ट। तो ये कर सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा सर आपसे। बहुत सारी चीज़ें हुई सुबह से। सर झुंझुनू से आता हूँ, वैसे हूँ बीकानेर से, और लेकिन झुंझुनू से आता हूँ। लेकिन मैं वरुण जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके 2 पीपीटी में से, फर्स्ट और लास्ट में से नहीं, 2 पीपीटी में से। आपने इंटरवेंशन की बात करी और आपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात करी कि एक्चुअली में सही बात है कि ट्रेनिंग में वो लोग आते हैं जो नाकारा होते हैं, और नाकारों को ट्रेनिंग देकर और उसको समाज को बनाने के लिए उसकी जिम्मेदारी देना शायद वो बहुत बड़ी एक चुनौती आपके साथ में होती है। लेकिन मैं उस पॉइंट में एक अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब अपन बैठे यहाँ पर थे, डिस्कशन कर रहे थे, आपने किसी वाटर बॉडीज की बात करी थी। आई डोंट नो, आप जरूर बताएंगे इसके बारे में बाद में। मैं उसकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ। शायद आपको इस चीज़ के बारे में नहीं डाउट होगा। मैं ढींगरा गांव के जो सरपंच साहब थे उनसे डिस्कस कर रहा था, एंड नाउ आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट कि गुड्डा से 3 किलोमीटर दूर है, गुड्डा बिश्नोई से, एंड फ्रॉम द सैटेलाइट सेंसिंग फ्रॉम द डोमिसाइल ट्रेन माइग्रेशन फ्रॉम द मंगोलिया एंड रशिया, अराउंड 17 birds are received from last 3 years. So आपने जो काम किया था वो शायद आपने करके छोड़ दिया। भाप के पास में, फलोदी के पास में, जो आपने छोटे छोटे वाटर बॉडीज बनाए थे, बट आपने लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं था। न तो पंचायती राज का होगा, न फिर किसी जो सैचुरेटिंग बॉडीज होगी उनका होगा, बट एज एनवायरमेंटल स्ट्रेस टेक्नोलॉजी के फॉर्म के अंदर इसका इतना इम्पैक्ट है कि जिस समय लगभग आज से 8 या 10 साल पहले जो पॉपुलेशन अराउंड 5 से 10 हज़ार के करीब में आती थी, सो नाउ वी हैव कीप्ट अराउंड 55% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज योर इंटरवेंशन। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हम वर्ल्ड की 57% पॉपुलेशन को होल्ड कर रहे हैं इन हमारे नॉर्थ राजस्थान के ऊपर। वर्ल्ड की 40-50 जिसके ऊपर IUCN एंड CMS सारा जो है फोकस कर रहा है। सो और हमारे जो राजस्थान ये सूखा सूखा दिखाई देता है, वो सूखा है नहीं, हम बहुत ग्रीन है सर हमारे नेचर के हिसाब से। दूसरा नंबर पॉइंट बताना चाहूँगा सर, ये विवेक सर के लिए क्वेश्चन था। सर एक SCG ग्रुप के बारे में विवेक जी ने मॉर्निंग के अंदर NCI के अंदर बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास में पिछले 3 सालों में केवल एक क्वेरी आई है। डेफिनेटली वो एक क्वेरी इसलिए है क्योंकि किसी को भी कोई हेल्प लेनी होती है गूगल पे डालिए, गूगल के पास में सारे आंसर्स हैं। सो वी आर नॉट नीड एनीथिंग ऑफ हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, क्यों परेशान करे किसी को। लेकिन सर जो पंचायती राज के पास में
जो प्लान बनाते हैं, क्या वो गवर्नमेंट के रिसेंट प्रोग्राम से कंसर्न करते हैं? लाइक इको टूरिज्म, अभी इको टूरिज्म का कंसर्न हमारे इसमें है ही नहीं। हम फंडिंग लेने के लिए सोचेंगे, हम जैसे इन्होंने वो आपने सर एक ब्लैंक पॉइंट बनाया था, आपने स्पेशली बोला भी था वो ब्लैंक पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते। ये नहीं कि फंडिंग लेना है उससे, हमको गांव वालों को स्वरोजगार देना है, स्वावलंबन देना है। और स्वावलंबन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो खुद का अर्न करे, और वो खुद का अर्न करने के लिए गवर्नमेंट तो उसको ऑलरेडी कर रही है कि भी आप बढ़ो 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 बढ़ो। तो एससीजी ग्रुप्स को रिक्वायरमेंट एक ब्लैंक पॉइंट भी रखना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू चेंजेस गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि हम उसको एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है उनको फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं, और गवर्नमेंट की जो जो प्रोग्राम्स, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आते हैं उनको हम लोग उसको ऐड जरूर करें। तो हम लोग जरूर अपने यूबीए प्रोग्राम के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। एक सर और सबसे इम्पोर्टेंट है वो साइंस फेयर का है, मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। जिस माई आपके उस सजेशन के बाद में, आप तो बस आकर चले गए थे, मैं भी 1 घंटा 2 घंटा बच्चों के पास में रुके थे, बट मैं सबके सामने शेयर जरूर करूँगा। इनके हम लोगों ने एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया था, ये हमारी 5th साइंस फेयर था, हमारे लिए नया नहीं है, हम बच्चों को बुलाते हैं। और सर इसका मेन रोल ये था कि किसी फैकल्टी मेंबर ने यहाँ पर ये कहा था कि हमारे पास में बच्चे ही ऐसे आते, रुझान खत्म हो रहा है इंजीनियरिंग के अंदर, बीच में ऐसा एक डार्क जोन आ गया था। तो हमारे ये था कि बच्चों में साइंस के प्रति रुझान बना रहे, इसलिए हम लोग को साइंस फेयर कराते थे। और यूबीए ने हमारे को इसमें इस साल हेल्प भी करी उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए, बच्चों को साइंटिफिक एप्टीट्यूड देने के लिए। लेकिन इसका केवल एक रोल ये नहीं है कि हमारे 395 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका रोल ये था कि लगभग 4,500 बच्चों ने जो 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं, वो ये सोचते हैं कि हम लोग खुद कॉलेज में आकर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर साइंस के वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कॉलेज में या फिर आईआईटी लेवल में बने होंगे। सो excuse me, I think because of the Yes, time please. we have to. So we'll Thank take one last question because it's already 4:20. Yes. So it's not about the question. I'm just. Please be brief and directed. Yeah. हाँ, तो एक्चुअली विजय जी ने बहुत अच्छी बात करी थी। एक तो वहां खड़े होकर बोली थी और एक यहाँ पे बैठ करके बोली थी आपने। एक तो वो बोली थी जहाँ पर 3 इडियट्स देखी थी हमने, तो उनने भी बताया था कि टेक्नोलॉजी कैसे फायदा करती है। तो आपने बताया टेक्नोलॉजी वही है जो हमारे जीवन को थोड़ा सा आसान कर दे, काम को आसान कर दे। और दूसरा इधर से कुछ प्रश्न आ रहे थे कि साहब बीइंग एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, या हम लोग झुंझुनू से और बीकानेर से आते हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये बात हमेशा उठी है सर कि जितने भी हम लोग कैडर खड़े कर रहे हैं, हम चाहे टीचर बने, चाहे लेक्चरर बने, चाहे आईएएस बने, तहसीलदार बने, आरएएस बने, लेकिन हम लोग 2-2 3-3 6-6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद फील्ड में काम करने के लिए उतरते हैं। बदकिस्मती से हमारे पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव सीधे चुनाव में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, और सीधे फील्ड में उतार दिए जाते हैं। पंचायती राज की नियमावली बहुत कठोर है, बड़ी कड़क है, बड़ी लंबी है। पंचायती राज का एक्ट इतना मोटा है सर, जिन जिन टेबलों पर जाकर रखा हुआ है मैं देख रहा हूँ उसको। और कहीं पर भी ट्रेनिंग के चैलेंजेस वरुण जी ने बहुत अच्छे से बता दिए, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं, और हमारे हिंदी भाषी राज्यों के अंदर ट्रेनिंग को कभी तवज्जो भी नहीं देती, क्योंकि सबसे फालतू काम क्या होने वाला है कि ट्रेनिंग होने वाली है, वहां चले जाओ। तो वो ये है मेरा इसके अंदर केवल इनपुट यही है कि इस पूरे टेक्निकल, क्योंकि आपने दूसरी जो अच्छी बात कही थी वो आपने ये कहा था कि यहाँ पर केवल टेक्निकल चीजें ही बनने का काम नहीं होगा पंचायतों के अंदर, इन प्रक्रियाओं में। तो उस प्रक्रियाओं में उनकी जिंदगी को आसान करने में जो शफकत जी के प्रेजेंटेशन में था कि सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना, जो हमने अपने जीवन में कभी ना कभी टाइम टेबल जरूर बनाए, दरवाजे में, विंडो में कहीं ना कहीं चिपकाए हैं, काम नहीं किया उस पर वैसे, लेकिन जीपीटीपी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई है जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, जिसके अपन पार नहीं जा सकते। अगर हमने इस प्रक्रिया में उन्नत भारत अभियान के अंदर उन पंचायतों के साथ बैठ करके उनकी ग्राम पंचायत विकास योजना को बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की भी कोई तकनीक उनके साथ बैठ करके कर ली कि चलो समस्याओं को पहचानना हम नहीं सीख पा रहे, चलो मिलकर देखते हैं, ऐसे निकल जाएगी समस्या, ऐसे विश लिस्ट बन जाएगी, ऐसे प्रायोरिटाइज कर सकेंगे। ये तो रहे पैसे, ये हमारे सपने और ये हमारी प्राथमिकता है, ये टूल है। उसके बीच में जितनी भी टेक्निकल चीजें उन्नत भारत अभियान में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अपना दे सकते हैं कि नहीं यार पानी आपकी बड़ी समस्या थी, तो पानी पे हमारे इंटरवेंशन ये हैं, हम ये कर लेते हैं। तो मेरा केवल इतना सही था कि हम इस तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं।
Okay, so thank you so much. Can I answer? Actually, we'll have this discussion more. Actually, yeah, these are indeed very important points. But the thing is, like, we are running half an hour late with the next session, so we'll catch up during the break time. So thank you everyone for the wonderful presentation and thought-provoking ideas. So अभी मैं request करूँगा Professor Meenu Chhabra to come on stage and kindly give the mementos to our esteemed guests. So may I request Mr. Shafkat, please. Dr. Akanksha. Dr. Prasanjit, please. Dr. Vivek. So thank you everyone, and please join us for the tea. We'll get back in how much time? After 20 minutes. Yeah.
एग्जाम्पल, वो आपके लिए लाभकारी नहीं हो सकती क्योंकि मैं आपकी असल समस्या को समझती ही नहीं हूँ। तो कई बार हमको आदान प्रदान करना होता है, जैसा कि प्रोफेसर विवेक कुमार फ्रॉम IIT दिल्ली ने भी, उन्होंने भी जैसे जिक्र किया कि हमें बार बार लैब में जा कर के टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होता है और उसकी अप्रोप्रिएटनेस, उसकी लाभकारिता को समझ कर उसका प्रयोग करना होता है। एज यू कैन सी इन द साइड पैनल ऑल्सो, CETST comprises of a group of faculty members. So you can see that faculty members from computer engineering, electrical engineering, chemical engineering, mechanical engineering, and as well as basic sciences like biosciences, physics and chemistry. यहाँ पे सभी फैकल्टी मेंबर्स इस सेंटर का पार्ट है और जब प्रॉब्लम को मल्टीपल डायमेंशन से, मल्टीपल एंगल से देखा जाता है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से निकल कर आता है। Research at CETST is guided by, as I said, local problems, and we can primarily categorize it on the basis of water problems. हम सभी राजस्थान में रहते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पर पानी कितनी बड़ी समस्या है। पानी अगर ग्राउंड वाटर में है तो उसका TDS बहुत ज़्यादा है, it's saline and it's not suitable for drinking. So therefore, water harvesting and treatment constitutes one of the very, very important objectives on which CETST is working on. कैसे पानी और एनर्जी का आपस में जुड़ाव है। पानी को साफ करने में, एक गिलास पानी को साफ करने में कई सारी पैसे का खर्च होता है। जैसा कि एक बैनर भी हम एडवर्टाइजमेंट में देखते थे दिल्ली में कि एक पानी का गिलास जो आप पी रहे हैं उस पर 300 रुपये खर्च किए गए हैं। तो किस प्रकार से वो एनर्जी उस पानी को साफ करने में लगती है। पानी जितना गंदा होता है उतनी एनर्जी लगती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनर्जी भी बचाए और पानी भी साफ करे, जैसे प्रोफेसर पलापली जी के जी फिल्टर्स हैं, ये टेक्नोलॉजीज़, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो सस्टेनेबल है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में काम हो रहा है। इसी प्रकार से सॉइल, हमारी सॉइल अगेन हम जानते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसमें भी नमक की मात्रा बहुत अधिक है, बंजर है, वो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को नहीं सपोर्ट करती। किंतु थोड़ी सी इंटरवेंशन से, साइंटिफिक इंटरवेंशन से इस बंजर भूमि को बहुत सुंदर रूप दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। हमारे जो किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, वो बहुत बेहतर जानते हैं कैसे मिट्टी का प्रयोग करना है और उनसे ज्ञान लेकर के हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं जिससे उसको फर्दर बढ़ावा मिले, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले और एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलने से certainly food as well as livelihood increases. So these are all regional problems and these are not just the problems of Rajasthan, but now the global problems. Clean air, जैसे कि सिलिकॉसिस की प्रॉब्लम बहुत गंभीर है राजस्थान में और फैकल्टी मेंबर्स एट CETST आर लुकिंग एट दीज प्रॉब्लम्स कि कैसे सिलिकॉसिस का समाधान किया जा सकता है, कैसे साफ हवा को ही में सांस लिया जा सकता है, उसके लिए कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं। एनर्जी जनरेशन, सोलर पावर, जोधपुर में रहने की वजह से हमारे पास बहुत अधिक सोलर एनर्जी स्ट्राइक करती है इस धरती पर और इसको भी हार्वेस्ट करके सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ा जा सकता है, जिसमें CETST सेंटर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, देने का प्रयास कर रहा है। सो इफ यू लुक एट सस्टेनेबिलिटी, हम सतत विकास की सुबह से बात कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और सतत विकास के 3 मापदंड होते हैं। एक तो पर्यावरण, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर मैं खरीद नहीं सकती जो मेरी जेब पर भारी पड़ रही है वह भी सतत नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। और कोई भी टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर लागू ही नहीं होती, जिसकी यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, वो भी सस्टेनेबल नहीं है। तो इन तीनों मापदंडों पे हर टेक्नोलॉजी को परखा जाता है, इसको समझा जाता है और CETST इस कार्य में, faculty members at CETST are fully equipped to do a sustainability analysis of the process. Also, how it affects us. So we know the environment lies in the apex. Environment is a part of sustainability. Environment also affect our health. किस तरह से ग्लोबल पेंडेमिक्स, एपिडेमिक्स पैदा हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट से एसोसिएटेड है, एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है। हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, हमारे पर्यावरण से एसोसिएटेड है। हम कितने हेल्दी हैं, ये भी हमारे पर्यावरण से एसोसिएटेड है। पर्यावरण पर बहुत अधिक मात्रा में CETST के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। हमारे जो विलेजेस हैं, जैसा कि अभी आपसे पहले भी बात हुआ कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ वन इशू, saline soils is another issue, air pollution particularly silicosis is another issue, saline groundwater,
रिमोट लोकेशंस राजस्थान में गांव, एक गांव दूसरे गांव से बहुत दूर है, जैसे कि नदिया कलां ही यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, तो कहीं भी जाने के लिए कभी कभी अच्छी सड़कें भी नहीं मिलती। तो जब उनको किसी तरह की हेल्थ की समस्या है या क्या है, तो कैसे वो परामर्श लें, इस पर भी CETSD के फैकल्टी मेंबर्स हेल्थ केयर में भी, रिमोट हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन जैसी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। आपने इसके बारे में पहले भी सुना। सैनिटेशन इन टॉयलेट्स, सैनिटेशन इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पानी की समस्या की वजह से ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे जर्म्स जो बहुत हानिकारक हैं हमारी हेल्थ के लिए, वह पनपते हैं। कैसे उन्हें मारा जा सकता है, किस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से और कम पानी से एक सैनिटाइज्ड और साफ जगह पर साफ सॉलिड ट्रीटमेंट मेथड का उपयोग हो सकता है, इस पर भी काम है। और लाइवलीहुड, क्या कमा रहे हैं हम, कैसे हमारी जीविका चल रही है, इसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और जैसा कि आपने पहले भी सुना कि STI हब के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ रोप मेकिंग एंड अदर things are being taught so that the people can earn livelihood. हमारा जो भारतीय कल्चर है ये बहुत ही रिच है in terms of their cultural knowledge, and in order to increase that, in order for the people to get the real value of their knowledge, the technology can be very very helpful. फॉर एग्जाम्पल G फिल्टर्स, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुम्हार G फिल्टर्स बना रहा है और G फिल्टर्स को बेच रहा है। इसी तरह से खंबा कंपोस्टर्स भी इन्हीं कुम्हारों द्वारा बनाए गए हैं। STI प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस, जिसके ऊपर डॉक्टर विवेक विजय जी ने बहुत सुंदर रूप से बात की। मैं उन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी जिस पर अभी फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं। डॉक्टर चंदना यहाँ पर बैठी हैं, शी इज़ वर्किंग ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो रूरल सैनिटेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। किसी भी प्रकार का सॉलिड वेस्ट, पर्टिकुलरली अगर वो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से कंटामिनेटेड है, बहुत ही प्रभावी और बहुत ही हानिकारक बीमारियों का कारण हो सकता है। और इस वजह से देश की अधिकतर जनता, खासकर छोटे बच्चे जब डायरिया का शिकार होते हैं तो उनमें बहुत हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, मानसिकता भी उनकी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हेल्थ उनकी कमज़ोर होती है। तो हाउ डू वी डील विद दिस काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट, द वेस्ट विच आर कंटामिनेटेड विद फीसेस? देर आर मेथड्स, देर आर टेक्नोलॉजीज, बायो टॉयलेट्स जो हमारे भारतीय रेलवे में लगे हैं, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, किस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल कंसोर्शिया वो टाइनी बैक्टीरिया जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिसाइकलिंग एवरी सिंगल एलिमेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड दो सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड to deal with these feces to convert them to harmless organic matter. Similarly, I work on algae air purifiers. How do we use algae to clean the air that we have around us? हमने एक कहावत पढ़ी होगी, सुनी होगी कि धरती पर जो 21% ऑक्सीजन है, हमारी हवा में जो 21% ऑक्सीजन है, उसकी 70% algae से आती है, बट पेड़ पौधों को सारा क्रेडिट मिल जाता है. So these algae are tiny green organisms which we see growing on the ponds. They can be cultivated artificially to provide us with cleaner airs, to curb the indoor air pollution. We are working on microbial fuel cells, which are the systems that can convert wastewater to electricity. And we are trying to look at them in different type of ecosystems. For example, in agricultural soils, when these systems are used as sediment microbial fuel cells, they increases the productivity of the crop, they increases the productivity of the plant because of the activity of microorganisms in the soil. Similarly, हमने sensors बनाए हैं जिसमें आप पानी में बैक्टीरिया की मात्रा को केवल पेपर का कलर देखकर माप सकते हैं. ये सेंसर पानी में डिप किए जाते हैं और कलर चेंज होता है जैसा कि पीएच पेपर, और इन सेंसर्स के माध्यम से आप पानी में बैक्टीरिया है या नहीं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आई वॉज टॉकिंग अबाउट सिलिकॉसिस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में सिलिकॉसिस के केसेस हैं. सिलिकॉसिस सिलिका की इनहेलेशन से एक ऐसी फेफड़ों की बीमारी है जो खासकर यहाँ के वर्कर्स जो रॉक्स और उस पर काम करते हैं उनको अफेक्ट करती है. सो वी हैव अ फैकल्टी मेंबर डॉक्टर राजलक्ष्मी गारागा जो खासकर सिलिकॉसिस पर
काम कर रही है, वो जाकर के एयर सैंपल्स लेती हैं और उसकी डेटा को एनालाइज कर कर ये पता लगाने के प्रयास कर रही हैं कि किस वजह से सिलिकोसिस राजस्थान में इतना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उसका समाधान क्या है. Then there's another very important work that is happening in CETSD that is related to the removal of uranium from water. So as you can see, Rajasthan is the only state in the country where the concentration of uranium in groundwater is dangerous, is extremely high. यूरेनियम एक तरह का रेडियो एक्टिव मेटल है जो पाया जाता है पानी में, वो डिप्लीटेड होता है, किंतु फिर भी उस पानी को पीने से बहुत हेल्थ रिलेटेड समस्याएं होती हैं. और डॉक्टर कीर्ति सांखला, जिनको अभी आप पिछले सेशन में सुन भी रहे थे, वह एक टेक्नोलॉजी ऐसी बना रही हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, जिससे यूरेनियम जैसी पोल्यूटेंट्स को पानी से हटाया जा सकता है. और ये सारी जो जितनी भी प्रोसेसेस की मैं बात कर रही हूँ, हम ये यहाँ की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं. और सस्टेनेबिलिटी, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक तो नहीं है, वो यहाँ के लोगों की जेब पर भारी तो नहीं पड़ेंगी, और कितनी सोशली रेलेवेंट है, उन सब पर भी एनालिसिस किया जाता है. Similarly, this is for the sustainable habitats. So we have a new faculty member who has joined CETSD, Dr. Shri Banerjee, who is trying to look at how do we develop sustainable houses. हालांकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के घर पहले से ही बहुत सुंदर रूप से बनाए होते हैं. तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, किस प्रकार से इतनी ड्राई एरिया में, इतनी एरिड रीजन में वहाँ की घास फूस का प्रयोग करके जो घर बनाए जाते हैं, अंदर से इतने ठंडे होते हैं. तो आई थिंक this is where we have to learn from you, and this is where Dr. Shri Banerjee is trying to look at how these things, how the materials and other things can help us with urban planning, with better indoor air, with better sustainable housing, which is not very heavy on the environment. Geospatial technologies for sustainable development पे डॉक्टर अनुज्ञा शर्मा काम कर रही हैं, जो जियो सैटेलाइट इमेजिंग से ये पता लगाती हैं कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर बंजर भूमि है, कहाँ पर उपजाऊ भूमि है, और कैसे उसका प्रयोग किया जा सकता है, कैसे उस पूरे सैटेलाइट इमेजरी के प्रयोग से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो डेटा हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकता है. So with that, there are several other things. Professor Anand would have done it in a much better way because he was heading Center for Emerging Technologies and Sustainable Development. I took the headship just the last month. So I may have missed a lot of points, which maybe I'll request Professor Anand to add. With that, I'll thank you and I'll be happy to take any questions at the end. Thank you. Thank you, Professor Meenu Chabra, for providing us insightful projects which are held at CETSD. So yeah, before I invite the next speaker, I would like to bring to your remembrance the famous quote by Mark Twain, that is, behind every successful man, there is a woman. But I'm very glad to mention here that we at CETSD are completely powered by all women faculty in different verticals. The man behind the shaping of this women-led center is Professor Anand Klapali. And now I would like to invite Professor Anand to head this session. I don't know. Thank you. Presentation hai? Yes, of course. Yeah, it is there. So thank you for the great words, and I believe that I believe that it is not me. It is actually my team. So I had very close colleagues sitting. One is Meenu, Professor Vivek, Professor Sandeep Yadav, Professor Arun Kumar Singh, Professor Sumit sitting there. And I don't know, I can take many names, many names. So, we have outside IIT Jodhpur great collaborators, and I met Dr. Varun
and we have several NGO participations, which makes us. And as Professor Meenu said, we are not these 5 areas, we are 10 areas, right? And we exactly every year change our ways to work for different SDG goals, and we prioritize there at the starting of the financial year. So that's how we have been working. And that's how we have been, strategizing every 5 years in the last 5 years. That is how. And I am very happy that, at any aspect or any point of time, if I'm asking a help, all my colleagues were with me. So that's where my strength comes from. And that's what I believe. And they have never turned me back. Thank you for that. So as I said, technology from them to them. That is what Professor Meenu also said. That had been my core thought process. While I started working at IIT Jodhpur, earlier I was elsewhere. So, I do collaborate. I wander here and there with communities, sometimes for some days, sometimes for smaller time. And that has been, and I do go out to see what is there on the ground. Then only I take a decision whether to go into this area or that area. I especially change the areas every 3 years. That's another problem that I have, but my colleagues are there to help me at the end of the day. So going further, I may not take much time. So our technological innovations embedded within traditional devices, practices, materials of daily use in rural India. Yes, perfectly. It's a question actually written by my PhD student, Kumar Satankar, the first PhD student who came in, and he is now a professor in Jaipur. Right. So Western Rajasthan, not here. Western Rajasthan is an arid society, and they had been adapted to this particular place with for a long time. So they have the knowledge. We don't have the knowledge. We have to go to them. We have to come to your places in order to learn what you are, how you had been living. हम तो कहीं और से आए. We have to understand the wealth that you all carry when you live in the Thar Desert. We don't have that wealth. We want to gain that wealth. We want to come and learn from you. Then only we can do some changes. So I will just go to some of the Meghwal communities which live by Balesa, and I learned plant fiber thought processes from them. And so we have the STI project, right? I started off in 2012. In December 2020, when Professor Prem Kalra initiated the coach workshop, that is the Center for Art, Culture and Heritage workshop. So then I came into people who do this. So there are local fibers, saniya, khimp and akra. It's very common. आप सब जानते हैं. सनिया, खीप और आकड़ा कौन नहीं जानता? सब जानते हो? जानते हैं. So इनसे क्या क्या बन सकता है? ये और बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो खारी मिट्टी में पनपते हैं. Salty, salt tolerant species are there everywhere, right? So you can do what all? You can do many things. You can serve your society with वो खारी मिट्टी में पनपने वाला कोई भी एक वृक्ष खराब नहीं हो सकता. उसमें ऐसी कोई ना कोई क्षमता अवश्य होगी जिससे वो वहां पे खड़ा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना. हम उसको ऐसे ही नहीं हटा के साइड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्लांट हैज अडेप्टेड टू सॉल्ट
salty soils, and it knows how to survive there. And we have to learn that. So I went in there, started learning rope making, I didn't know rope making before I came to IIT Jodhpur. I didn't know that. So I went there, I started studying. Then suddenly I thought, okay, I have devices. I can devise small devices which can equip them. Then I went to CoCoordinator to learn. There also I went to learn. They had many technologies. What I did is that I came back. I changed the size and shape of the technologies according to the fibers that are required over here. क्योंकि same fiber और same strength वो match नहीं करता है, तो उसका size कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, right? तो मैंने उसको modify करना start किया और मैंने पहला DST का project लिखा. कितने सालों के बाद? 6 सालों के बाद. 6 साल तक पढ़ाई में लग गए, right? So then I started working on several of these fibers, and after 10 years, right? After 10 years, I have brought in to Center for Emerging Technologies for Sustainable Development this project on Science and Technology Innovation Hub. This took 10 years, okay? It's not 1 or 2 days, 10 years. Why? There was plastic pollution which came for help to me. Do you know, better than plastic, there is something? There is something which is there in Rajasthan. So you will come to know. So we started making geotextiles out of the Anugraha loom which CoCoordinator has. हमारे पास नहीं था. CoCoordinator has. उसमें थोड़ा सा tweaking किया तो ये सनिया के लिए भी काम करेगा, आंकड़े के लिए भी काम करेगा, सबके लिए काम करेगा. So हमने उसमें से नर्सरी पाउचेस बनाए जो आप देख रहे हैं. यहाँ पे नर्सरी पाउचेस ही रखे गए हैं. ये कोयर से बने हुए हैं, कोई आंकड़े से बना हुआ है, कोई जूट से बना हुआ है. ये पाउच, ये एक्चुअली ये वो पौधा है जो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहीं पे लगाया था, वो यहाँ पे मौजूद है. ये प्लांट अभी जो है काफी ऊंचा हो गया, वो हमारे कैंपस में है. So that's the greatness. So that's what I am telling, that I have my strength here. So that's how. So you will find that the Sania fiber is having the most high tensile strength, and it can be utilized for making nursery pouches very easily with the simplest technology, and the technology we developed inside. So any person within 5 minutes can be taught that technology, and any person can start earning 300 to 400 rupees per week on that technology. That's the thought process. Simple. So those people who are designing, as well as the technique that will be showcased there. So everybody is invited to go and visit that particular stall, and you will learn that. So the other funny fact, very important fact, is that the akda, you all know, akda sab jante hain. So ये एक ऐसा पौधा है जो it's in wild, right? जंगल पाया जाता है. उसका जो रस्सी होता है वो पहले पुरातन काल में thieves को बांधने के लिए किया करते थे. Thieves, it is highly stiff. If you are seeing the stiffness of Sania fiber, it is the highest, right? So once you water it, once you tie it, it is just tied, right? I learned it from the ethnographic traditional knowledge systems that India has. We go to the people, understand how it is, and you will learn. And when you do your experiment, actually it showcases, right, the stiffness coefficients. The stiffness say सिकुड़ जाता है, जैसे ही पानी डाल देते हैं वो सिकुड़ जाता है और stiff हो जाता है, right? So, we have many products now. You will see all these products over here. आप देख सकते हैं. So, उसके बाद, clay filters के पास चलते हैं. इस बार मैडम ने कहा था, मीनू मैडम ने कहा था कि yes, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है. In our water cycle, घर ऐसा एक स्थान है जहाँ पे where you intensively utilize energy on water. That is around 72%. For water filtration, you use the best technology that is available, right? It consumes the most amount of energy.
So we should reduce that, right? That's my first intention. Because I wrote this this paper, and it is one of some of the most cited papers on earth right now. So people started doing that, right? So I don't write like these papers again because I started learning from that. I wrote it, but now I start learning from that and try to reduce the energy in homes. So how can I do that? By reducing the power consumption or powers that are there. So motivation comes from there are, United Nations, WHO, UNICEF, and various other organizations are very much pertinent about child mortality rates, right? Child death rates under the age of 5, maximum diarrhea. Diarrhea is the problem, right? You want to take away diarrhea means that you want to take away E. coli, bacteria होता है, उसको हमें निकाल के फेंकना बहुत जरूरी है. दूसरा एक चीज है, घर में मटका भर के तो हमारी माताएं बहनें घर में पानी तो लेके आ जाती हैं, उसके बाद डर लगता है वो पानी साफ है या खराब है मुझे मालूम नहीं है, मेरा बेटा पिएगा तो क्या होगा. उसके लिए क्या कोई मेरे पास बहुत ही चीप सॉल्यूशन मेरे पास है क्या? है, हो सकता है आपका कुम्हार आपके लिए कुछ बना सकता है इसी राह पे. So when we see this, you can actually calculate the energy of walking 1 hour. It's the human biological energy taken by a person is around 0.1364 kilowatt hours. And अगर है तो अगर हम इंडिया के लिए कैलकुलेट करें, एवरी सेकेंड वुमन इन रूरल इंडिया में कंज्यूम 360 किलोवाट आवर्स ऑफ फॉर एवरी cubic meter or 1,000 liters of water transported per year. This is a figure. It was just published in a simple conference. Simple conference. But this is the fact. 54% of the rural women travel between 200 to 5 kilometers to get daily drinking water from nearby surface sources, and they walk 20 minutes a day and they spend another 15 minutes at the source. So it's a wastage of time. At that time, the girl child might have gone to school. उस टाइम पे वो लड़की बच्ची वो वहां पे जा सकती थी, कहां पे? स्कूल में पढ़ने जा सकती थी, अगर उसके पास साधन होता तो. So हमने सर्वे किया पॉटर्स के साथ, क्योंकि पॉटर्स से सीखना ही पड़ेगा, हमें कुछ आता नहीं है वैसे. हमने देखा स्लिमिट एंड ऑफिस काइजन जो जापानीज थॉट प्रोसेस है, इफ यू मैच इट विद द हाउसहोल्ड पॉटर्स थॉट प्रोसेस, it is the same. Why? He has been the most sustainable manufacturing resource, most sustainable technology, manufacturing skill set, which has never died down for millions of years, not millions of years, thousands of years, right? Starting of any archaeological survey is a pot. It has never died down. Because, why do you know? It was transferred by within the family. Within the family, it was transferred. The knowledge gets transferred within the family. So the cost of education is not there. People have to understand this. Then if you office Kaizen में 20 key points हैं, same 20 key points मेरे Potter household में हैं क्या? मैं वो लेके आ सकता हूँ क्या? हाँ, लेके आ सकता हूँ, वो है, इसीलिए वो sustain कर गया. हमने देखा नहीं इसको पहले. So मोयला पॉटर हो या प्रजापत पॉटर हो, उनके जो ढंग हैं उनमें ज़्यादा जो चेंजेस हैं उनके चेंजेस सिर्फ टूल्स में हैं, राइट? Similarly, women are there are different people and people from South India to the North India. If you go to a potter's family, she is the person who decides on the टाइप, कौन सी मिट्टी, कितनी मिट्टी और कितना बुरादा इस्तेमाल करना है, वही करके आती है, वही बताती है. अगर आपको मटका बनाना है तो इतने से इतना मिलाना है, राइट? अब अगर आपको गणेश जी बनाने हैं तो इतने से इतना बनाना है. अगर आपको छोटा सा दिया बनाना है तो उसमें कुछ नहीं मिलाना है. ये वो बता के देती है.
The male person does not know that. So women is a scientist, material scientist, which we have in our communities, the South Asian communities as such, right? All the potter communities across South Asia may have this trait, right? So you want to understand all of these. Then going further, we started off with making different types of, containers for the G filter. These receptacles which are kept on the right-hand side, they are the G filters. On the left-hand side, you can see the receptacles are kept inside some of the steel, plastic and clay containers. Okay. So ये gravity से काम करते हैं. Just उसके इन receptacles के अंदर पानी भर दीजिए, वो trickle होके वो नीचे जाएगा, है ना. ये पहले मैंने थोड़ा सा काम नाइजीरिया में और घाना में और तंजानिया में किया हुआ है. तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, 6-5 साल लग गया फिर भी. So उसका so then we have household manufacturing. We don't go for factory make. So household manufacturing, we have this indigenously prepared. One of my PhD students, Sandeep Gupta, designed it, and then we first of all make the ball of clay. Then we press it with this machine designed by him. Then once it is pressed, we have this, we take it out and then dry it and then burn it in a potter's kiln in Barnard. Barnard is the, it's my actual outside experimental site or location. So I basically perform experiments on the field such that I don't mistake at the end of the day doing a lab experiment later. I will have a real value outside and then it comes inside. So G filter sintering techniques are like this. So we learn about from them only how to, bake it and all. So then our main problem is about E. coli. So water quality testing is a very important parameter. People will ask that ये filter करेगा क्या नहीं करेगा. इसलिए हर 2-2 साल में हम सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं. मेरे स्टूडेंट्स कभी कर देते हैं, कभी मैं कर देता हूँ, नहीं तो पकड़ लेंगे, राइट. आपका सर्टिफाइड नहीं है, आपने टेस्टिंग नहीं करवाया, तो हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक बार टेस्टिंग NABL accredited लैब से करवाते हैं. दिल्ली से कराते हैं या जयपुर से कराते हैं या कहीं ना कहीं से करा के रखते हैं. Such that every time any issue comes, we have to give a clear answer because it's a water filtration thought process. It's a health initiative. So we have to equip the NGOs which are also working there, and we need to have them to have water quality testing kits such that they are able to, test them every monthly, weekly basis or something like that. So filtration efficiency बहुत अच्छा होगा तभी. So पॉटर्स के साथ हमने सीखा, उनका नोहाव लिया और उनके साथ जाके जैसे हमने वार्तालाप किया, उससे पता चला कि बाउंड्री ऑफ दी ये जो पॉटर है पहले से ही उनके पास एक ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट कॉस्ट के ऊपर मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं. वो टेक्निक उनके पास है बिकॉज दे हैव ए ट्रस्ट जोन from where people will buy from that Prajapat ya Moila potter. So what we did, we understood some things. What is that? There are 8-pronged decisive measures which are there. एक गांव में अगर जाएंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से दिख जाएंगी. क्या? बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है. एक सामान लिया तो दूसरा सामान वो दे देता है, राइट? ठीक है, उसके बदले में. दूसरे में हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग अभी भी होता है. लो कॉस्ट सोल्यूशन पे ही निर्भर करते हैं, जुगाड़ पे निर्भर करते हैं लोग, है ना. पॉटरी ऑलरेडी है, उसके अंदर इंटरनल नॉलेज डिसेमिनेशन थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर इंटरडिपेंडेंस है और कल्चरल एस्पेक्ट्स के साथ मिला हुआ है. तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता. उसमें हमें थोड़ा सा ट्रिक ही लगाना है, उसको कैसे बेक करना है, उसको कैसे प्रेस करना है सिखाना है, और कुछ नहीं मुझे सिखाना. I don't want to teach them extra. They know their knowledge better than me. So like that, so we have some of the filters, and so everybody will ask what is the WHO standard, water testing quality standard and all. So I am presenting it here. These are real live situation WHO standard के साथ जो calculation किया गया है.
So after this, you have to throw it away after 4 months. So we want to rethink, reuse, refuse to throw it away, and you can help something like composting you can do with the help of used G filters. Yes? Yeah. Yes. So the circular economy comes in here. So we can dual purpose the G filters for desalting the soil after its use, because it is having highest flow rate. Okay. So what all the subsurface porous vessels, now it becomes the subsurface porous vessels with increase in carbon content within the ceramic vessel. So what it can do conservation agriculture, it can do root zone optimization, it can do desalting of soils, it can do horticulture, it can help in application of medicines to the roots, it can help in better yields, good for tubers, potato grow कर सकते हैं, tapioca grow कर सकते हैं, composting कर सकते हैं, water conservation कर सकते हैं, homestead farming कर सकते हैं, और घर के आंगन में organic जो vegetables है उसको उगा सकते हैं, right? Missions Make in India, Poshan Abhiyan, Jal Jeevan Mission, Skill India, MSME, cottage industries, livelihood, National Agriculture Mission, जो चाहिए वो करिए, है ना? So this is how the desalination happened. This was a combined project with Sehgal Foundation in Luni Block in Gelabas. So this happened in 2017-18 or something like that. So here the G filters, used G filters were used. Okay. So desalinate the soil of a farmer in Rohat. So after that, then the desalting studies comes in. You can see that the electrical conductivity, जो value है 1.36 है, उसको subsurface porous vessel लगाने के बाद जो है वो जो है आपका 0.33 में पहुंच गया, right? So उसके बाद आप horticulture कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं जो saline soil है उसमें कोई भी पौधा उगता नहीं है, पर बाकी सब में जो है सब्जियां उग जाती हैं, राइट? इसमें क्या हो रहा है कि पानी के साथ साथ जो है सॉल्ट भी चला जा रहा है, वो साइड में जा रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह आप ये देख सकते हैं. ये एक्चुअली डॉक्टर वरुण शर्मा जी देखने के लिए आए थे. So water wheels are another problem, but actually this is outside Rajasthan. मैं थोड़ा बाहर भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ. तो water wheels are used for irrigation pumping. So this is a water wheel pumping in Odisha, near Kalahandi, Odisha, in Kelia Gaon. So there is a canal 6 which comes out from a river, and it flows with a high speed. This particular this water wheel was developed inside and in home, and we took this water wheel from here all the way to Odisha in order to fit it. So it was done under a United Nations volunteer thing, and the Syngenta Corporation gave 2 lakhs for this. Towards this Kelia village. So they gave the village, and the village funded this particular project, and now still they are using it for water pumping and irrigation, right? Irrigation. Then we have a similar setup in Lalitpur district, River Sajnam. So that is again a United Nations volunteer has helped in the financial thing of this. Here the water is behind, and the water pushes off this wheel, and it in turn takes out the water. It helps the pump to run. There is a gearbox, there is a pump, and the pump can push off the water to the fields. And this is there in Lalitpur, Uttar Pradesh, right? Lalitpur, Uttar Pradesh. And then we get the thank you letter after the installation from. Then there was this COVID-19 which struck, right? So we had this small project which came in from the Unnat Bharat Abhiyan, which is a SCG project. It is a COVID-19 mask. So we made our own ceramic mask, and developed another set of pandanus masks for Kerala, and these masks were. So these are for rural people who were not able to afford N95. So what is the better solution for N95? N95, you want to use it and throw. I don't want anything to be thrown. You just fire them back and wash them out, right? Fire them back and wash them out. Here, Ruparam Prajapat was the person behind.
So I am not the person behind. He only, helped me to do this. And this particular masks were done by Ruparam Prajapat, Rajak Khan, Farooq ji, from different villages in Salawas, Sar, and Rudia, Bhopalgarh. So all of these, and Ruparam Prajapat was actually awarded the best COVID fighter award by the district because what he did is that he made these masks and went around whole place and he started giving it for free, right? So amazing person. Thank you. That's it from my side. Thank you so much. So I want to thank all my team here. There are a lot of names which I don't know. I don't know. There are a lot of names. I should thank everybody, but yeah. All my CETSD team, all my STI team, all my UBA team, all my old members of my team. Thank you so much. It's so overwhelming, and then it's a great opportunity to witness what Professor Anand has contributed to the livelihood, and then to the grassroots level communities, how he could bring a meaningful change in their lives. So shall we have a big round of applause to Professor Anand's achievements once again? And we look forward to carry his legacy, as said by our director also, that CTSD is committed to bring change. So moving on, our third speaker, Professor Sandeep Kumar Yadav, who is an associate professor at IIT Jodhpur. He holds a PhD in electrical engineering from IIT Kanpur, and his expertise spans across signal processing, artificial neural networks, and machine learning. And also his research work focused on topics of health concerns, particularly in improving the well-being of elderly individuals. So with this, I invite Professor Yadav to share his insights on health. थैंक यू राजश्री। पता नहीं आनंद जी के आप आनंद जी को सुनने के बाद मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बिकॉज ही इज अ ग्रेट पर्सन एंड ही हैज डेडिकेटेड हिज होल दिस लास्ट 10-20 years वर्किंग टुवर्ड्स सोसाइटी। हमने बहुत छोटा सा काम किया है। तो अगेन नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा छोटा सा काम रूरल एरिया के लिए हम लोगों ने किया था विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ सपोर्टेड अ लॉट ऑन दिस। बेसिकली ये वर्क एक कहानी से स्टार्ट होता है। ये कहानी ये है कि मैं और विवेक एक बार हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट के लिए हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची रो रही थी 5 साल की, और वो बहुत रो रही थी। हम लोगों ने पूछा ये क्यों रो रही है, तो किसी ने बोला इसकी मदर एक्सपायर कर गई। हम लोगों ने इंक्वायर किया मदर क्यों एक्सपायर कर गई है। पता लगा इसकी मदर प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना चल रहा था, और फीटस ने मूवमेंट करना बंद कर दिया, उसको पता भी नहीं लगा। एंड जब तक पता लगता तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी, तब तक हॉस्पिटल लाते। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करें, कुछ तो करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं। अब इनोवेशन करने के लिए कोई तो चाहिए, डेटा चाहिए, कोई एजेंसी चाहिए, बिकॉज वी कैन डेवलप ओनली द एप्लीकेशन। तो 1 साल हो गया हम लोग ढूंढते ढूंढते, फिर यूनिसेफ पिक्चर में आया और यूनिसेफ ने हमें सपोर्ट किया। तो फ्रॉम यूनिसेफ डॉक्टर अनिल अग्रवाल सपोर्टेड। तो हम लोगों ने पता किया PHC में जाके कि क्या रीज़न है इसके पीछे। वहाँ जब हम लोग PHC में गए तो पता लगा कि जो आशा नर्सेज होती हैं वो गांव में तो जाती हैं और उनका रजिस्टर भी मेंटेन होता है और उनको पेमेंट भी मिलता है, बट रियलिटी में कोई नहीं जाता गाँव में। वो एक फेक डेटा होता है। वो नर्स को भी पता होता है उसको 50% मिलना है और 50% उसको मिलना है जो हमारे रजिस्टर में एंट्री मेंटेन करना। तो हमने फिर पता किया किसके लिए क्या करना चाहिए। तो यूनिसेफ के लोगों ने बोला कि डॉक्टर से हेल्प से हम आप लोगों को इनपुट देंगे, हम आपको डेवलपमेंट के पैसे देंगे, बट आप लोगों को एक एप्लीकेशन बनानी है। So this is the data. This data I will not present. Yeah. So we tried to find out the bottlenecks. हम लोगों ने उसकी bottleneck देखी कि bottlenecks क्या क्या है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इन डेथ्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि
तो उनमें ये था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही थी। ये जो आशा नर्सेज जा रही थी वो तो जा ही नहीं रही थी वहाँ पे, तो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद जो डेंजर साइंस होते हैं, मतलब जब कंडीशन ऐसी है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, वो भी वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे गाँव पे। देन लोगों की याददाश्त बहुत वीक होती है, कब दवा खाई थी, कब नहीं दवा खाई थी, दवा दी थी कि नहीं दी थी। डेटा कलेक्शन के लिए बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, एक आशा नर्स गई दूसरे रजिस्टर में कर लाई, दूसरी आशा नर्स गई दूसरे रजिस्टर में कर लाई, इस तरीके से बहुत सारे डेटा एंट्री के रजिस्टर। डेटा का कोई कंप्यूटराइज नहीं था, कोई क्वालिटी ऑफ डेटा नहीं था वहाँ पर। So what philosophy? We believe in people and their potential as human beings, irrespective of their gender, caste, socio-economic group, or literacy status. So what we decided, what we thought with the UNICEF that, can we train a villager lady, जो विलेज की महिला है, क्या हम उसको ट्रेन कर सकते हैं क्या? क्योंकि आजकल सारी विलेज की महिलाएं मोबाइल तो ऑपरेट कर लेती हैं, दे जनरली यूज स्मार्टफोन्स। उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि हम लोग रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। सपोज प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। तो व्हाट वी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गांव में आशा नर्स को भेजना, और उसको टैब देते हैं, टैब में एक एप्लीकेशन देते हैं बना के, और उस एप्लीकेशन में सबसे पहले वहाँ पे जाके वो गाँव में आशा नर्स पता करेगी किस किस की नई नई शादियाँ हुई हैं, वो डेटा लेगी, और उसके बाद जब वो नई शादियाँ होंगी तो उसके बाद रेगुलरली विजिट करेगी, और उसके बाद उनसे पूछेगी कि वो लोग बच्चा कब चाहते हैं, मतलब एलिजिबल कपल सर्वे, दैट इज कॉल्ड एलिजिबल कपल सर्वे। अगर उनमें से जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम बच्चा अभी चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ में चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो उनका हम डेटा एंट्री उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं। और उस डेटा एंट्री के बाद कि उनका नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद वीकली वो आशा नर्स जाती थी और लेडी से मिलती थी, उसका स्टेटस देखती थी। तो फ्रॉम फर्स्ट डे of conceiving a baby, ASHA nurse starts monitoring the parameters. ASHA nurse इसके लिए हमने एक सिंपल सा टूल बनाया जिसमें रिस्पांस ड्रिवन एप्रोप्रिएट काउंसलिंग का था, बाकी चीज़ें थी। तो उसमें क्या था कि rather than going a presentation, let me tell you the story. तो उसमें क्या था कि कुछ पैरामीटर हैं, आयरन, ब्लड शुगर, ECG, ब्लड प्रेशर, दिस काइंड ऑफ पैरामीटर्स जनरली आशा नर्स यूज टू टेक। वो जाती है गांव में अपने इक्विपमेंट के साथ, मेडिकल किट के साथ में, और ये सारे पैरामीटर्स लेती है। पर प्रॉब्लम क्या, वो उसकी एंट्री कहीं नहीं होती। तो हमने क्या किया कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई, आशा नर्स जाएगी चेकअप करने के लिए, वो सारे पैरामीटर्स उसमें एंट्री करेगी, और भी कई सारे पैरामीटर्स थे। अगर वो पैरामीटर्स ओके हैं तो देयर विल बी अ ग्रीन सिग्नल, नथिंग हैज़ टू बी डन। अगर वो पैरामीटर्स ओके नहीं है तो मतलब लिटिल बिट डेविएशन इज देयर, एंड वो उनको हम किसी एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, तो येलो लाइट विल बी देयर, एंड बेस्ड ऑन द पैरामीटर वेरिएशन, जिस पैरामीटर का ज़्यादा वेरिएशन होगा उसके हिसाब से एक डॉक्टर का काउंसलिंग वीडियो पॉपअप हो जाएगा वहीं पे डिवाइस पे, और वो डॉक्टर उसको काउंसिल कर देगी कि आपको आयरन टेबलेट लेनी है, कि आपको खाना कैसा खाना है, कि आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, वो वहाँ तक वो काउंसलिंग कर देगी। उसके बाद आशा नर्स वापस आ जाएगी। अगर उनके पैरामीटर्स डेंजर जोन में है तो रेड सिग्नल विल अपीयर, एंड उसके बाद फिर एक SMS चला जाएगा PHC को, PHC में एक SMS जाएगा कंसर्न डॉक्टर को, एंड दैट डॉक्टर विल सेंड द एम्बुलेंस एट दैट मोमेंट इटसेल्फ, सो दैट एम्बुलेंस कैन टेक दैट लेडी टू PHC। अगर PHC में वो रिकवर हो सकती तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली गो टू सिटी टू सम हॉस्पिटल, राइट। तो वो हमने ये पूरा एक पैकेज बनाया था। उसके बाद फिर हमने बनाया था कि आफ्टर डिलीवरी टिल 5 years फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ द किड। तो ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड बेस्ड थी सबसे पहले, एंड्रॉयड, क्योंकि उस टाइम पे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म सबसे फेमस प्लेटफॉर्म था, तो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन थी। इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल किया सबके मोबाइल फ़ोन में, एंड इस एप्लीकेशन को हमने पैलेटाइज किया बालोतरा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर और सूरत, 5 जगह पे हमने इसको पैलेटाइज किया।
or it was working very well. Then we thought to upgrade it. So this is the process implementation. There is a client, then asanas. Then asanas is collecting the data, and the data is automatically coming to our web server. Web server is sitting in IIT Jodhpur. Then there are follow-up details through SMS we are giving to the client. This is Android software. This is a form. आशा का मोबाइल नंबर, आशा का नाम, आंगनवाड़ी का नाम, गांव का नाम, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक, जिला. This kind of data of ASHA nurses and users were there. So these are the parameters. जैसे लिखा हुआ है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, this kind of data log is there. The server like Balotra, Pali. Now, after that, we try to integrate health-related sensors to the device. Like after the delivery, right? Once this neonatal, a lot of problems are there for pneumonia. So we try to project the camera on the chest of on the stomach of the baby, or to count how many times the stomach goes up and down, so that we can directly diagnose pneumonia through that device rather than bringing that baby to the hospital. So that we try to then sensors like temperature, pressure, fetal Doppler, etc. So results were there, right? ASAs are using this technology and quality of counseling improved. Real-time data is now feasible and server logs and feedbacks are also there. Focus was there for the promotion of utilization of quality NC services, promotion of quality institutional delivery, promotion of timely referral linkage, and promotion of maternal audit. After that, after seeing this work, ये काम देखने के बाद में IBM has came into picture because UNICEF this package we developed, हमने पैकेज डेवलप किया, उसके बाद पैकेज हमने यूनिसेफ को दे दिया. आफ्टर पायलट करने के बाद 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, बट वहाँ से कुछ आगे नहीं हो पा रहा. देन IBM केम इनटू पिक्चर. IBM ने इस काम को कहीं पे देखा तो उन्होंने एक अवार्ड दिया करीब 17 lakhs का, जिसको बोलते हैं IBM शेयर रिसर्च यूनिवर्सिटी अवार्ड. और फिर हम उस अवार्ड मनी से ही इसको हमने 2013 से लेकर 2018 तक आगे बढ़ाया. और इसको क्योंकि ये एंड्रॉयड बेस्ड था तो बाकी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकता था, तो हमने फिर इसको हर प्लेटफॉर्म के लिए बनाया यूजिंग IBM लाइट. दिस इज वर्किंग ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, वेदर iOS इज देयर, एंड्रॉयड इज देयर, आर एनी प्लेटफॉर्म. हमने उसको उसके आगे किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया ईआसा को. Then what are the future scope? In future scope, what can we do? We can add communities of gynecologists and pediatricians to this act. And adding we can also add the video materials to the app for ASA, more video materials for the ASA. So thank you. This was a small piece of work which I did with the help of UNICEF. Video नहीं, video website पे. Thank you, Professor Sandeep, for the thoughtful presentation on leveraging technologies for rural public health. Moving forward, I now take this opportunity to invite the man behind this whole stage show of UBA, who needs no formal introduction, but then being so instrumental in connecting all the stakeholders of UBA, Professor Vivek Vijay, representing IIT Jodhpur in proactively addressing the local needs. So I'll not take more than 5 minutes in this. We are already running out of time. और सुबह से लेकर के सुनना लोगों को, और वो भी टीचर होकर के सुनना बड़ा मुश्किल काम है. और बड़ा आप लोगों ने पेशेंटली नहीं इसको छोड़ दो, बंद कर दो, कोई बात नहीं. विल जस्ट सो वी आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज. इस पूरे सेशन का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम अलग अलग प्रकार की जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसको आप लोगों के साथ में शेयर कर सके, ताकि ऐसा लगे कि हम लोग अपने अपने यहाँ पे भी इन कामों को कर सकते हैं. बहुत आसानी से किया जा सकता है.
एक काम जो हम लोगों ने किया है, एक तो ये जो संदीप ने बताया था आपको आशा नर्सेज के साथ में, दूसरा काम हम लोगों ने एक और किया है। हमको ऐसा लग रहा है कि ओल्ड एज पीपल बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की इस समय पॉपुलेशन यंग है, बट वो 2030 के बाद से ओल्ड एज होना शुरू हो जाएंगे, और उस डायरेक्शन में हम लोगों ने एक काम किया, हमने एक चेयर बनाई है। दिस चेयर इज, सो आई एम नॉट प्रेजेंटिंग दैट, बट वो चेयर जो है वो दैट्स इंटरेस्टिंग, सेंसर बेस्ड चेयर है जो फंक्शनल स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू बुढ़ापा मेजर कर सकती। बुढ़ापे में क्या होता है, आदमी गिर जाता है, चलते चलते गिर जाता है। अब वो गिर गया तो उसका क्या करोगे, पर वो गिरने के को प्रिडिक्ट करना, वो उस चेयर का काम हम लोगों ने, उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो एक बार वो टेस्टिंग हो जाएगी तो सब लोगों के बीच में वो लेकर के आएंगे। उस पर ऑलरेडी एक बार एक पीएचडी तो हो चुकी है, एक और चल रही है। तो वो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के हम उसको जीरियाट्रिक सेंटर के साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो है ये एक दूसरा वाला वर्क है जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया। ये कोविड के टाइम पे सुबह सुबह शौकत जी ने, वरुण जी ने किसी ने कहा था कि 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा, हाँ मेरे ख्याल से विवेक जी ने बोला था कि 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जो कठिन है वो अंग्रेजी और गणित है। तो अब हम लोगों ने सोचा कि गणित को कैसे, और समस्या जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है। मैं थोड़े से स्टेटिस्टिक्स आप लोगों को दिखाता हूँ। ड्रॉप आउट रेट की बात कर लें, या हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात कर लें, टीचर्स के पास में इलेक्शन चल रहे हैं, सब लोग जानते हैं। हमारे अगले अब जो 9th-10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा वो तो पता नहीं, अभी तो इलेक्शन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये। इन 2 सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने ये पाया, कोविड के टाइम पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई कुछ ऐसे वो पढ़ने की। हम लोगों ने ये पाया कि इन 2 सब्जेक्ट्स में अगर टीचर कंटिन्यू नहीं करता क्लास को, अगर मेरे गणित का अध्यापक 2 दिन पहले मेरी क्लास में आया था और वो 2 दिन बाद आ रहा है क्लास में, उसका 2 दिन का गैप हो गया, तो 2 दिन पहले उसने क्या पढ़ाया था वो मेरे दिमाग में हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट में क्या ये पॉसिबल है कि हम एक लैब डिजाइन कर सकें कि मैथ्स को बिना चौक एंड बोर्ड के पढ़ाया जा सके। तो वैसा इनोवेशन हम लोग करना चाहते थे, और हमको कोविड का टाइम ऐसा अपॉर्चुनिटी की तरह मिल गया। 1 साल तक हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर काम किया, और उसको खेल खेल की तरह नहीं करना चाहते थे। हमारा उद्देश्य ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि एनसीईआरटी का 6ठी से लेकर के 10वीं तक का जो करिकुलम है उसमें 63 चैप्टर्स हैं। उन 63 चैप्टर्स में अगर टॉपिक्स, फंडामेंटल टॉपिक्स की बात करेंगे तो ऐसे 210 टॉपिक्स हम लोगों ने बाहर निकाले, जो जिसमें अलजेब्रा भी है, मेंशुरेशन भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, स्टैटिस्टिक्स भी, सब कुछ है। उनको हमने एक्सपेरिमेंट्स में कन्वर्ट किया, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक हम अंतिम टॉपिक तक नहीं पहुंच गए। उनको एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करने के बाद में कुछ ऐसे वो बोर्ड बनाए जिनके ऊपर हम, तो मैं सीधा उसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। ये बाकी स्टैटिस्टिक्स तो ठीक है, सब लोगों को पता है क्या स्थिति है गाँव की। खतरनाक है कि असर की रिपोर्ट में शौकत जी के साथ शेयर कर रहा था। वो ये कहते हैं कि 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ हम जब बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको 1st स्टैंडर्ड की भी नॉलेज नहीं है, तो वही तीसरी वाला चौथी में जाएगा। तो हमको ऐसा लगा कि प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ये लर्निंग में गैप है। मैथमेटिक्स लर्निंग जो है वो खतरनाक इसलिए लगती है क्योंकि वो हमारी चाइनीज लैंग्वेज की तरह दिखाई देती है। तो वो XYZ जैसे ही आता है तो फिर घबरा जाते हैं। डॉक्टर राम के साथ हम लंबी वार्ता कर रहे थे इसके ऊपर, तो वो यही कह रहे थे कि नहीं गणित बड़ा कठिन सब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने कोशिश करके, और ये कुछ एक्सपेरिमेंट, मैं सीधा इसके ऊपर आता हूँ, कहा था 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा। ये लैब है, ये टेक्नोलॉजी है हमारी, जो ये लैब है, और ये लैब पूरा इस तरीके से है कि ये 6ठी से 10वीं तक के सारे सिलेबस को कवर करती है। एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर है। और जब हमने इसको यूज किया डिफरेंट स्कूल्स में, इसको इस तरीके से बनाया है कि इसमें किसी पावर की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमको मालूम है कि रूरल एरियाज की जब बात करेंगे तो पावर नहीं है। दूसरा ऐसा बनाया कि इसको अगर कोई ऊपर से गिरा दे तो कोई फर्क नहीं पड़े, वो आयरन के बोर्ड से। तीसरा उसको कोशिश की कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो उसमें मैग्नेट्स लगाने की कोशिश की। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं हो, उन सब बातों का ध्यान रखा, और ध्यान रख करके, और फिर साथ में ये भी कि अगर मान लो हमने कहीं पे लैब दे दी तो वो लैब देने के बाद में होगा क्या। तो हम लोगों ने, खैर वो मैं बोर्ड्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, ये ठीक है, मैथमेटिक्स की मतलब ये अगर आप देखेंगे जो मैथ्स वाले लोग हैं जो कनेक्टेड हैं वो अगर इसको देखेंगे तो सारे टॉपिक्स इन 6 में कवर हो जाते हैं। एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर्किल, फ्रैक्शन एंड मेंशुरेशन, इन सब चीजों के अंदर हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर किया। ये 3D शेप्स बच्चों को कोशिश करते हैं टीचर सिखाने की, ये सिलेंडर है पर ये एक्चुअली है नहीं, तो एग्जैक्टली क्या होता है वो हम लोग देने की कोशिश करते। तो फिर हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो मैंने टीचर को ये दे दिया तो वो करेगा कैसे आगे उसको। तो हर एक चीज का एक स्टडी मटेरियल इस तरीके से डिजाइन किया जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, स्टेप बाय स्टेप गाइड, उसको ये बता दिया। अब ये
उठा के इधर रखो, अगली स्टेप में इसको उठा करके इधर रख लो, और फिर उससे कंसेप्ट क्या निकल करके आएगा वो स्टेप बाय स्टेप गाइड हम लोगों ने प्रिपेयर की। ये जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये 6th स्टैंडर्ड की स्टेप बाय स्टेप गाइड है, 10th स्टैंडर्ड की एज पर एनसीईआरटी करिकुलम। ये बहुत सारे स्कूल्स में हम लोगों ने, अच्छा उसका फिर स्कूल से ये डिमांड आई हमको कि हम लैब तो मैं तो कर लेंगे, बच्चे कैसे करेंगे उसको, तो उसी को मिनिएचराइज किया, उसी का एक छोटा सा स्वरूप हम लोगों ने बना दिया। वो हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ काम करके, और एग्जैक्टली सेम कि अगर बच्चा जैसे टीचर क्लास में जिस बुक से पढ़ा रहा है, बच्चा घर पे वही बुक जाकर के पढ़ेगा, तो वैसे ही ये किया कि लैब जो है उसी लैब का मिनिएचर वर्जन उसको घर पे मिल जाए और अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। तो हमारा टारगेट ये था कि ऑक्सफोर्ड की बुक की जो प्राइस है, एनसीईआरटी की बुक की प्राइस तो हम नहीं रख सकते थे, ऑक्सफोर्ड की जिस स्टैंडर्ड की बुक की जो प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस हमारे इस किट की नहीं होनी चाहिए। उस टारगेट के साथ में वर्क किया और हम अचीव कर पाए। तो सो फार द जर्नी इज लाइक it was selected by Unnat Bharat Abhiyan also as a good technology, but अच्छी बात ये रही कि we could sign an MOU with government of Rajasthan immediately when they saw this। तो उनके साथ में, और उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में 11 स्कूल्स में हम लोगों ने लिया कि हम वहां पे करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएंगे, और वो रिजल्ट बहुत अच्छे हम लोगों को मिले। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट किया, पीपल अप्रिशिएटेड। देन वी, ये जो बच्चे हमारे थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, दे ओपनड अप ए स्टार्टअप कि ये सस्टेनेबल नहीं होगी, अगर ऐसे ही हम देते रहेंगे तो इसमें बहुत सारा पैसा लगना है। सो दे ओपनड अप ए स्टार्टअप, बट इट इज इन विलेजेस, इफ इट इज सस्टेनेबल, इट इज सस्टेनेबल थ्रू CSR एक्टिविटीज। बहुत सारे ऐसी वो CSR एक्टिविटीज के थ्रू हम लोगों ने, क्योंकि ठीक है वो प्राइवेट स्कूल्स वाले क्या कर रहे हैं, बड़े स्कूल्स वाले क्या कर रहे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पीपल रियली अप्रिशिएटेड इट। So all these photographs are mostly from this was one of the projects that IIT Jodhpur has, Project Umang, and it's an initiative of JSW Cement and Orange Tree Foundation along with IIT Jodhpur. We just last week we installed this, and these are different schools in which this lab is running, and people are students are really enjoying. These are all fine. I mean, we got certificates and all. So thank you very much. Thank you so much, Professor Vivek Vijay, for your thoughtful presentation on leveraging technologies for rural education. So heading towards felicitating our eminent speakers on the dais, I would like to now request Professor Rohan Irande, please come up onto the stage to felicitate our eminent speakers. I request Professor Meenu Chabra come forward to take this memento. Professor Anand Plapli also to please come up. Professor Sandeep Yadav, please come up. Thank you. नहीं, थैंक यू वेरी मच। अनाउंसमेंट इतना ही है कि बाहर हम लोगों को डिनर होगा, अभी डिनर के पहले छोटा मोटा सा वो कल्चरल इवेंट है। आप लोगों ने सुबह से बहुत देर तक सुना है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि कैंपस घूम लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बट देन वी थॉट विल नॉट use this time for any formal activity, but it will be informal. We have with us some good poets also. So बाहर वो एक वैसा इनफॉर्मल सा इंटरेक्शन भी हो जाएगा, हम लोगों के बीच में आपस में चर्चा भी हो जाएगी, और देन विल हैव डिनर ऑल टुगेदर एंड देन वी कैन लीव। कुछ भी अगर माइंड में आता है आपके कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, ये टेक्नोलॉजी का जो डेमोन्स्ट्रेशन था ये इसी पर्पज के लिए था कि हम लोगों के दिमाग में कुछ भी आता है उसको हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और आपके साथ आपके दिमाग में अगर कुछ भी है तो हम यहाँ पे हो सकता है कि उसको एक शेप दे दें, और उस शेप को फिर टेस्ट करेंगे। अगर आगे बढ़ा तो भी ठीक है, और नहीं बढ़ा तो भी वो रास्ता गलत है ऐसा करके आगे उसको लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस। और चूंकि इसके बाद में हम लोग फॉर्मली नहीं मिलेंगे,
तो अगेन विल कम बैक इन द मॉर्निंग। अभी तो इनफॉर्मल ही होगा जो भी होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन चलता रहेगा। कल मॉर्निंग में जब हम आएंगे तब फिर बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन भी करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर विल स्टार्ट द सेशन। थैंक यू वेरी मच।